kicking off here on map 1. Crashes get that first bit of contact, but it's all in, baby. It's bursting. I think अब सही हो गया. Towards the site, and OPTIC better be ready. एक बार check करके बता दो. हाँ, एक second. Live stream. Yep, working. बढ़िया. अब जाके watch party start भाई. Let's go भाई. OPTIC versus Loud. Oh, ये जेट पे है आज. Let's go. अभी पिछले मैच भी जेट पे ही तो खेला था हम. क्या अच्छा? हाँ, वो क्या आसपास की बात कर रहे हैं फिर? ये की. हाँ, ये पिछले मैच भी जेट खेला था उसके साथ. हाँ, लास्ट टाइम भी एसेंट पे जेट ही खेला था ना. DRX के साथ हाँ. ओ भाई. NTFNS. Converted here for Loud, and such a concise, dominant start there. No mincing their words at all. A statement made in round 1. They stacked. भाई मैंने कल एक क्लिप हिट करी, दिखाऊंगा आज. दिखाइए. Curious actually if बहुत ही बड़े जेट क्लिप भाई. 2 नाइफ 2 वैंडल शॉट. The stakes raised, but this is comfort zones. The Loud try and toy with that a little bit. They're one of the most proactive teams in terms of the early round. But if that converts into aggression here and finding entries, it can be very, very concerning for OPTIC early on in this half. It's just such a, you know, a dangerous concept for both sides as well, because you don't often see such familiar foes in games this early on, and it truly changes the dynamic here. They should be so hyper aware of each other, but again, the fact that Loud did win their last meeting truly changes the narrative. Truly changes how we have to look at Loud in this, give them credit. चलो भाई, अब मैंने सब वेरीफाई कर लिया, अब सब सही है. एक्चुअली दो जो लास्ट टीम हारे था ना ऑप्टिक वाले इनसे, लाइक 2-0, वो एक्चुअली लाइक दिमाग में होगा सबके अभी भी कि लास्ट हमारा मैचअप हम हार गए थे और लाउड के लिए हम जीत गए थे. तो आई एम श्योर कि उससे कुछ तो फर्क पड़ता है मोरल पे. आई मीन ऑप्टिक के तो मैं खुद सोच रहा हूँ ऑप्टिक अभी कितने ज़्यादा, आई मीन आई एम प्रीटी श्योर ऑब्वियसली प्रोज है तो ये अपना अच्छा मैनेज कर लेते हैं मेंटल, बट इनका मेंटल अभी कितना प्रेशर में होंगे. आपको पता है कि पिछली बार क्या हुआ था लाउड के साथ. हाँ, प्लस अभी कल ही बहुत ही लंबा गेम खेल के आया DRX के साथ और वो जॉस्टिंग था गेम वाला. एग्जैक्टली, दे ऑलमोस्ट लॉस्ट भाई. हाँ, अब ऑलरेडी 2 तो राउंड ले जा चुकी है. और वो भी टी साइड पे. नॉट अ गुड लुक. वही. बट चलो अभी ये राउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनको बोनस नहीं देना. हाँ, बोनस देंगे तो फिर उसके बाद इकोनॉमी छूट जाएगी पूरी. हाँ. ओह नाइस, ये काफी एग्रेसिव खेल रहे हैं लाउड वाले. हाँ, नहीं ऑप्टिक भाई पूरा एम इन पुश कर दिया और रीड अच्छा किया क्योंकि इनके 3 बंदे एम इन पर हैं. देख विक्टर भी पुश कर रहा है और वो आई थिंक ले लेगा. नेवर माइंड. नाइस एफएनएस. ओ वेट, क्या आई थॉट क्रैशेस ने अपनी टीममेट को वो कर दिया, डार्ट कर दिया. नहीं नहीं, उनको दिख गया टीपी. ओह, पीछे फ्लैंक भी आ रहा है, फ्लैंक भी आ रहा है. ये गॉड डैम भाई, गॉड डैम भाई. ट्रेड डिसिप्लिन भाई, उसने शुरू में नहीं मारा, ही वेटेड भाई. आई थॉट जब उसने शुरू ही नहीं मारा ना, मैंने कहा शिट भाई उनका एक टीममेट मर गया उसके चक्कर में, बट चलो निकाल लिया उसने. Interesting if OPTIC are going to continue with this. Again, pushing towards mid. Whether or not now actually are going to continue these little flash plays in through A lobby. A heavy stack here once again. Less going to have to. मुझे पता याद आएगी यार VCT की बहन चोद इसके बाद ना. यार ये तो है, मेरे को बहुत मजा आता है VCT देख के. मुझे पता है, मैंने पहले कभी नहीं देखा ऐसे की स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट और मुझे नहीं पता था कि मैं इतना हुड हो जाऊंगा भाई. मैं बैठ के रोज सुबह वेट करता था भाई 10 बजने का कि शुरू हो गेम. एग्जैक्टली भाई. और अब लग रहा है कि बहन चोद क्या होगा दिन का. तब बल्कि पढ़ाई करनी है, बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन भाई मजा आता था इसमें बहुत. ओह, मार्फ नाइस शॉट था वो मिड में.
Marv. ending. There's just no. There's Oh, crashes. They've made it possible. I thought crashes मर जाएगा वहाँ पे. बट क्रैशिस बहुत ही सॉलिड प्लेयर है लेकिन बहुत सॉलिड प्लेयर है ये तो. आ रहा है मार्व आ रहा है. Iceman himself, the audacity to do this in a 2v. आई थिंक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट टाइमिंग के ऊपर होगी पूरी चीज़. और उसने सुन लिया. ओ लेट्स गो भाई, बहुत ही बढ़िया. तेरा जल्दी आ रहा है क्या? ओ आई थिंक तेरा दोनों जल्दी आ रहा निकाल है. गया वो. मैं जल्दी ओ कितना जल्दी आ रहा है मेरा. कोई ना, मैं रीलोड कर लिया इजी. where you can see both teams are just at that cerebral level, trying to just manipulate any space on the field. Yeah, you're actually going to have the operator online here for round 5. That ultimate stack looking very healthy here as well though. Sadak actually with no command. A couple others. That's such a crucial kill there. And like I said, Marv manipulates that perfectly. I'm just still amazed by the willingness to brawl that we've seen so far on the extremities. They're really surrounding these fights, but कर ले भाई. fighting for so much of the initial space. Yay, though, कर लिया noted first रीलोड मैंने भी. handed very fast, decent mid presence. Now, fortunately, for OPTIC, they do have a bit of a time purchase there, so no हाँ, worrying front Great yet. flash. And, oh, No, no, no. clear him. No. जा बना ले अपना. Just walk on past, walk on by, dips around, has a ठीक है, little आजा. bit towards main, knocks a flares, yeah, he's still on the case. हम्म? Yet to be forced away from the angle, and what नहीं, about नहीं, हूँ मैं Sassy, Discord पे हूँ. Les and Pancada? You know FNS is walking this. This is insane play. The bravery to do this, testing them on all occasions. Spottings. मैं 2 सेकंड आया. FNS is getting away with murder for the second time. Who this? अरे एक्चुअली बहुत ब्लैक मंकी. शिट भाई. हेलो, एफएनएस क्या हाल है? खेल रहे काफी. और भी क्या हाल है? कैसा है भाई, कैसा है? मेरे किचन से बैठ के बात कर रहा है साला. अच्छा हाँ, इसकी आवाज़ आई थी अभी, मुझे पता था तेरे घर पे है ये. ले भाई जेतर ये ले कोच पार्टी. क्या भेज रहे हो? और गेम दिख रहे हैं, गेम भाई फाइनल चल रहा है आज. भाई मैं सही देख चल रहा रहा हूँ वीडियो ऑलरेडी. है. भाई स्ट्रीम देख रहा है क्या? हाँ, मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी. मतलब जॉइंट हूँ बट ऑब्वियसली फोन पे साथ साथ नहीं देख पाऊंगा. सही है बात, सही है. मैं 2 सेकंड आया. भूख लग रही है चोट. भाई मैच में साइड में कोई ऐसे अर्चना पुरन सिंह टाइप कैरेक्टर रख ले जो ऐसे रिलीफ के लिए हो. उसके लिए भाई तू आ जा भाई. तू अर्जुना पूरन सिंह की तरह पागलों की तरह हंसी हो. ठीक है भाई, हंस दूंगा मैं तो. भाई ऑफ शॉट लग गया. हंस दूंगा भाई मैं तो. मेरे को क्या है, तू अपनी बेटी बेच. VCT नाइट्स विद शिजनिगल. निकल. ढंग से बोल भाई. अबे हकला दिया था और बोल. सोच रहा हूँ तेरे घर कॉल करके बता दूँ तू क्यों आया मेरे घर. नहीं भाई, स्ट्रीम पे मत बोल ये चीज. डिस्कनेक्टेड है. किससे स्ट्रीम कर रहा है तू? OBS. नाइस भाई, मैंने अभी रिसेंटली OBS चलाना सीखा. उसमें ऐसे ट्विन कैम वो कर सकते हैं मस्त. जैसे टीवी चैनल की तरह पूरा PCR VCR बना के. बहुत कुछ कर सकते हैं. बट मैंने पूछा. तो भाई मैं व्यूअर्स को बता रहा हूँ, तेरे को नहीं बता रहा. चलने का. व्यूअर्स कौन है भाई? FNS needs to be careful now. They are holding for this push potentially. They're timing right though. Now that's you know deeply they've had to tuck into this default now. Actually investing utility to force them off. Such a forward angle. Again, there's no pressure. That's OPTIC they actually swing through now. Marv's exploring short. He's got the one-way up. They've conditioned them to do this. It's the perfect, causation and reaction. Great bait for the operator as well. चल भाई स्ट्रीम खोले. Fantastic. Gets the fall away, dips towards short. The lockdown comes in and ensures further safety. Now they can rotate that third man if they fancy it. Still not too much stress. Aspas, position noted, will fall away. This is very comprehensive from OPTIC. That's a lockdown. Force them into an uncomfortable positioning because there's 30 seconds left for Loud. क्या फ्लैश मारा?
बट थोड़ा Don't let him get away with it again. Finally he gets found. Sprays in still. I don't know how he's doing this time and time again. Leaving Sarsi and once again Pancada to deal with such an unfavorable situation. So many players against him and so little time. Oh my god, OPTIC bhai, in OPTIC. business today, Mike. This is looking good. It looks like they've done the work. We're waiting to see Prepare if हो गया they ये इस have बार been able ज़्यादा। to. तेरे को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता ना, पिछला अभी इनका मैच हुआ था इन दोनों टीम्स का ही, तो लाउड ने बहुत गंदी तरीके से हरा दिया था ऑप्टिक को। किसने? जो लाउड दूसरी टीम है ऑप्टिक के अगेंस्ट, दो टीम्स है ना, ऑप्टिक वर्सेस लाउड। तो लाउड ने अभी रिसेंटली लास्ट मैच में ऑप्टिक को हराया था काफी गंदा, और ऑप्टिक अब अच्छा कर रही है। आई मीन किसके रूट कर रहा है? ऑप्टिक। ऑप्टिक यार, ऑप्टिक सीएस में भी थी क्या? मेरे को मतलब पता नहीं थी, ज्यादा नहीं थी बट हाँ थी। अभी जेतर ऑप्टिक का सारा गेम कॉर्ड का था शुरू में। हाँ मोस्टली वो कॉर्ड के लिए फेमस है। अभी कॉर्ड से फेमस काफी। बैलेंस टीम में इसकी अपनी कमी है कि उन्होंने एनबी की टीम उठा ली थी पूरी। हाँ जब चिरानपुर खेलता था मेरे को याद है, ऑप्टिक था, नाम तो था। ऑप्टिक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑल्स आई थिंक, लेकिन कभी सीएस में थी नहीं सुनी मैंने। सबसे केवल कॉर्ड की सुनी है। वो नहीं है नेट। हाँ बोल 130 नेट शॉट नहीं है ऑप्टिक की टीम में वो भी होता था। कॉर्ड प्लेयर था ऑप्टिक के टाइम पे। हाँ। इवेंट क्या कहते हैं, जब सीएस में ऑप्टिक बहुत अच्छा हुई थी, टैरिक बहुत चली थी, तो टैरिक टैरिक भी खेला था था। CS। टैरिक था हाँ। ऑप्टिक में, रश था, टैरिक था, वो वहीं से तो आए थे फिर वो C9 में। ओह नाइस शॉट क्रैश। काफी तगड़ा खेल रही भाई ऑप्टिक, मतलब उनको मौका ही नहीं दे रही कुछ ओपनिंग लेने का, साइट में आने का। वैसे तेरी स्ट्रीम काफी पीछे चल रही है लेकिन 10 सेकंड 12 सेकंड। हाँ वो मेरी स्ट्रीम नॉर्मल लेटेंसी कर रखी है मैंने, लो लेटेंसी नहीं कर रखी। अच्छा नेट की उसकी वजह से। हाँ मैंने कहा कोई इशू ना है। मेक सेंस। अबे यार मैं तो फोन पे साथ ही नहीं देख पा रहा। मेरे स्क्रीन साइड में बस चला के छोड़ दो तुम लोग। हाँ मैंने भी करा है। अब मैं ट्विच पे आ गया दोबारा, बट वो चल रही है। मैंने म्यूट कर दी बस ताकि आवाज ना आए दोबारा, बट चल रही है। अलग से देख रहा है वैसे मैच। ठीक है, दिख रहा है जय, इस पैसे भेज दूं। अरे यार इस पे वो होती है ना, कैसे भेजते हैं इस पे पैसे? वही तो कह रहा हूँ, डोनेट कर देता हूँ। हाँ तो कर दे, मेरे को क्या। डोनेट का ऑप्शन है वरना चैट पे आता है ऑप्शन डोनेट का। अबे इधर ऐसे वो करके क्या कहते हैं भाई, मेरे को 500 रुपए कैश दे दे। डोनेट कर दिया भाई मैंने, देख ले भाई आ जाऊंगा तेरे पास। चल यहाँ भेज रहा हूँ भाई, 500 रुपए कैश दे दियो। उधार पूरा हो गया भाई। Who will get the dub? डब बत्ती बोल या थल्ले काली कार? डब बत्ती बोल थल्ले काली कार है, तो किस पे आएगी काली कार? क्या बात हो रही है? मैं चाहिए अभी गाने बेटे काली तो मेरे यार है ऑप्टिक। और इन्होंने वो नहीं चेक किया वाइन, इन्होंने वाइन नहीं चेक किया। ओ भाई विक्टर ले भी गया भाई, विक्टर ले गया विक्टर, बट ट्रेड हो गया इमीडिएटली और ट्रेड हो गया फिर। मार्वलो है अभी। स्टिल सीम्स लाइक अभी ऑप्टिक अच्छा कर लेगी। आ नहीं गया। ओ क्रैश ले गया। ये आराम से रेस कर सकते हैं, बट इनको कुछ आइडिया ही नहीं कहाँ पर है ये। ओ ये कोगरी किल मिल गई। ओह माय गॉड, इतना डोमिनेंस क्रिएट कर रखी है भाई ऑप्टिक ने, उनकी गांड फटी पड़ी है। शीश भाई ये राउंड तक आ गए। लेट्स गो भाई, लेट्स गो भाई। भाई ये देख, ये जिंदे बिल्डिंग चेंबर मेन, ये चेंबर मेन होगा भाई, लेकिन ये कैन डोमिनेट एज जेट भाई। ऑब्वियसली ब्रो, भाई उसकी प्रेजेंस भी होती है साइड पे जब जेट खेल रहा होता है ना वो। उसने बेसिकली चेंबर ने क्या कहा, कहता कि बहुत हो गया भाई चेंबर, अब मैं भी बोर हो गया, अब थोड़ा मजे लिए जाएं, थोड़ा एग्रेसिव हुआ जाए। वही कर रहा है वो।
don't often see Ye's op not shoot straight. अच्छी बात है, ये जितना राउंड स्क्वीज कर सकते सिटी साइड में इन्हें करने की जरूरत है at this point. हाँ And they are grinning, man. Look at Crash's face. और ये लाउड का पिक है Exactly what they're up to. क्योंकि जब लाउड सीटी पे आएगी वो भी करेगी स्क्वीज, हाँ क्या करेगी वो, तो इनका यही है कि जितना कर सकते करने अभी। इवन तो पिछली बार ये उसमें काफी मरे थे, क्या कहते हैं सिटी साइड में ही बहुत ज्यादा पिट गए थे, बट स्टिल इस बार अच्छा कर रहे हैं। ओह नो, लेस हाई कहाँ से किल्स लेता है ये लेस? आई थिंक ये को भी निकाल लेगा, उसने अच्छा एंगल ले रखा है, पर वो चेक कर रहा है। ओह उसने पहले देख लिया उसको, हाँ उसने पहले देख लिया। कोई नाइस ट्राई, नाइस ट्राई। Get him out of tiles, get him outside of B main, and Les stand strong. अरे आप तो डिस्कॉर्ड पे नहीं This is थे? the call. Beautiful stuff from him, but still 3-round deficit here. और भाई हमारे जोन में यार लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। नहीं आ गया ये। क्या बात है, अब तो रूम में मचाओगे तुम तो। या ब्रो, डैम भाई, सीन्स विद द होमीज भाई। 6-3, we need to see repetition to this. देख अभी भी पुश मार रहे हैं ये, इनकी गांड ही नहीं फटती, अभी भी पुश मार रहे हैं। Making sure there's no possibility of a trade coming through. As Aspas again कुछ डर ही नहीं है। takes away some of that pop on this execute, but the Hunter's Fury going to be posted blind here. ओ मर गया। And he's dead found. Couldn't get away from it. Good connection for Sarsi. Bob! What? ओ भाई What is going on? How is Mount here? शीश, How has he just got a kill? Still noted, still fighting. Finally goes down. Sarsi's got him. उसको सुनाई कैसे नहीं दिया ससी को? Look at the damage. Sarsi's considered भाई सैसी बहुत लो है। Sarsi is becoming Oh, quick to what Victor ने they're हक up दिया। to, and Sarsi ये is Victor की saving kill them थी। with 5 HP. Dark goes through, but they're still locked out in main here, and actually FNS noted. Cross is A little being bit. watched. विक्टर मर सकता था बहुत आसानी से। ओह सॉरी, एफएनएस मार सकता था, हाँ मर सकता हाँ, था काफी आसानी से, वो हाँ। बच गया। Good crashes. बच गया वो, उनने विफ कर दिया एक्चुअली। Hunter's Fury as well, so he can split from FNS here, but a little bit of a misread from OPTIC. 30 seconds left. Says- ब्रो वही ना कि correct, they- जो डिफरेंस है प्रो प्ले में और हमारे प्ले में, हमारे प्ले में अगर दो लोग इसको फेस करते हैं ना तो देयर इज अ चांस कि बच जाए दोनों, बट प्रो प्ले में इफ यू सी देम फॉर मोर देन 2 सेकंड्स देयर इज अ वेरी हाई चांस होता है। हाँ कि एक बंदे को हेडशॉट पक्का लगेगा और मर जाएगा कहीं वो। प्रोज हैं ब्रो, प्रोज हैं भाई। यही लाइक यू डोंट सी देम फॉर लॉन्ग बेसिकली। To avoid being noted, but he has to swing it eventually. Pancada चलो going निकाल through, गई लाउड। and they're starting to work it out. They're starting to piece together what is going मेरे on, हिसाब से तो what's going on किसी right तरीके से for बस OPTIC. निकाल गई लाउड। How mild. मैं उतना नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा बेरली निकाला है। बेरली, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा उन्हें पता था वो क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऑब्वियसली उन्हें पता था, बट स्टिल काफी क्लोज निकला था। But the fact that Sarsi even doubled down to check again, Yeah. that to me is such good intuition from that man, just to ensure that there was समझ आ no रहा है? second layer to it. There's the conditioning early on in this half, where actually everything that Loud are doing, OPTIC are happy to backfill immediately. Still got the lockdown up from less. Well, we do see. That's the first time. लिटिल टू फार क्या? He's in mid. Yeah, he's in mid. He just went for a wander in mid. On a lovely sunny day, but he loses हाँ, his ये life. तो Set है। up with the trade out, ये and तो now you है। can see the look towards the side. ये Less तो ब्रॉन्ज लोग, आयरन लोग, कुछ लोगों को तो One क्या ही towards बनाएगा। They can get further. Yes, they tried to. Crashes though. Creeps it. Smiling again. The vision depleted on one. I knew Sarsi couldn't even see. Pop flash towards the side itself. Victor has one in kind. They're trying to halt this progress. Look at Marv 1 again, minute on the though. board, and you're absolutely right. Marv is in the back line. This guy's an assassin. ये माप बार-बार फ्लैंक आता है और ये कभी भी पकड़ नहीं पाते, और ये देख फ्लैश भी कर दिया ऐसे। Time again. This is just unthinkable. क्या बात है भाई क्या मार। बात है भाई, ऑप्टिक भाई OPTIC क्या is खेल just रही pulling है। off some of the most unorthodox decisions, and it's paying off for them. Loud can barely get a steady footing. Again, look at Ye's willingness to just swing here. There's been a lack of focus from Loud towards mid in the early round because they've had to stack up towards A main. They've had to try and pressure this one way, force Victor out of some of these. वोट भी नहीं किया, वाह। And Ye, yes, gets the kill, gets traded, but then look at the immediate decision from अरे OPTIC. who will get the dub, who will win? It's actually been wonderful to watch, and you're right. You kind of Change frame कर it देता so हूँ भाई। perfectly. Ye created that avenue that then you're going to see Marv kind of fill through and then find the approach खत्म from करो now. भाई।
We go again. More It's big. aggression. Well, look how early the information comes through, Lauren. The rotation's already happening. And it's not just mindless, it's so well constructed, and we're going to see everything invested towards this. Crash is going to post it. It's FNS to find the front. That's Sadak now gone. Crashies going to be halted for now towards middle. They could really do with some damage now, and they ain't getting it. Marv this time stands to fight, does get outdone. Good trades. Close चल रहा है. FNS playing off of Sean, and he just gets aggressive again. अबे FNS. Brawl! अरे FNS I can't believe what we're watching. मिस क्यों कर दिया उसने उसे? I think flash था. Looks to pin the अरे Sassy to want to close it वो down. FNS को बहुत जरूरी था वो सासी को मारना. सासी की वजह से निकला है राउंड. This has been one of the most volatile, abrasive halves I have ever seen. This game is playing out like we're in OT in map 5 already. This is something different. Absolutely is. And I already said earlier on the last time it was 3 rounds for OPTIC to pull away from their defense. And it's 7 this time around. The stronger side being Loud on the defense. We have to see where they come away from this. Yeah, it's going to be 7-5 on the half desk. What do you make of the first half? Thank you very much, Pansy and Hypog. This is the grand final, guys. We kicked it off in style. And, Brent, we heard the cheers the crowd had for Ye, and he's showing off. Yeah, this guy has just been an absolute playmaker, but a key difference, I think, between the way he's been playing last time and this time has been the amount of disrespect he's showing, honestly. Pushing into deep positions all the time, but it's clear counter-stratting, I think, from beginning to end by the entirety of OPTIC. They've come into this match, and Ye has been enabled because of it. Yeah, I want to show you how they're playing, right? They're fighting over extremities, which they couldn't do against DRX because DRX are so passive on the default, and then they're pushing out. The amount of kills they've got on the defense by pushing out because they're abusing the lopsided defaulting. The way that Loud defaults, they have 4 players in one area, 1 on the other. They just can't hold this. Look at FNS getting kills up here in tiles, man. This is your killjoy pushing tiles, and it's booming Sadak's brain trying to deal with this. It worked so well for them for so long, but those last few rounds, Loud rallied with some big plays from Sassy. And now as we look ahead towards the second half, we have to talk about how good Loud is on this side of the map. They've played it twice in this tournament. They've only ever lost 1 round. 95% defensive-sided win rate. And the man that is absurd on this half is Aspas. Every time he gets on that defense, he is so enabled, taking those fights to hold down main control and being excellent when Loud leads into those retakes that they're oh so good at. Look at how the heat map there was focused around tiles as well. There was a big red spot because Aspas is holding mid, killing everybody that tries to push. Good half, but I think Loud अभी भी कर सकती है. करना चाहिए तो come back कर सकती है. हाँ सही बात है. Well, Loud, this is where Who will win by you? Online. Let's see how OPTIC are going to be able to deal with this defense. तो तुम लिखा था कि who will win? OPTIC, Loud or me? अच्छा वो हाँ. Now, I think you, Des you. kind of highlighted perfectly and echoed what we were seeing a great deal of. But again, when we talk about this side switch, Mike, it does kind of lean back into maybe the start of this game. Where do you sit on this? Where does this now tailor in your mind? I mean, from what we've seen from that defensive half, I got to feel like OPTIC have just completely, like carte blanche, approached this with a totally new mindset. Okay. We're seeing things that aren't necessarily, you know, I use the word unorthodox, but it's not the traditional OPTIC way, right? Sure, sure. They're happy to get aggressive and whatnot, but like I said, it was that backfilling of some of the setups, and Josh highlighted it perfectly. I was talking about when Les was going to feel the pressure, and when they created enough pressure outside A main, that's when they looked to isolate Les. It was a beautifully constructed half. Timeout here, it's time for the second half. I'm curious actually of what they're going to do to deal with Aspas. Right, because it's whether or not they do the old, you know, let's mitigate as much as possible, sure, discover where he is in the early round, and let's head elsewhere. But Aspas is so active on some of these defensive rounds on Ascend, and it's really difficult to get a solid grasp. Now, and it's very interesting to see the timeout now as well, preparing themselves coming into this for OPTIC. That's a real curiosity and something that I'm sure people that is through. Ridiculous. That's terrifying. 1 round on defense. They've lost. Well, there's the challenge. OPTIC, good luck. Because by normal accounts, I'd say, hey, quite a nice scoreline here. 75 Loud have only lost 1 defensive but Loud are exceptionally round. अच्छा last map में कह रहे हैं एक ही defensive round हारे थे. Absolute, just perfect side. So we go in. The challenge is set. The bar is high. OPTIC, if you want a chance in this, you have to genuinely go against the odds by such a large margin. A slow approach here from OPTIC early on, but they got bodies outside short. Slow खेल रही है OPTIC. Ricardo actually tucked in on tree here. Does have Sassy
close by. Ding. What? The Got shot. the second headshot on that. And Pancada's still happy to sit on this for now. I think Being bailed Pancada out a को fair kill amount मिलेगी. and no main pressure either, so they're really quite. Oh, never mind, timing. Just walk up from Optic, okay, Pancada. Oh, actually falls, and Crashies. Crashies got both there. Pancada, fair enough, but how did he get Sassy? I do not know. Les is on the case and Sadak's on the flank. Sadak They've not let this कहाँ one go without a fight. A 3v3 now, the door going to be dealt with very swiftly, and Les needs to be a little cautious there. Didn't want to get caught out now. The spike's not crossed. They still need to find a way to facilitate that. And look at what Marv's up to. Of course he is. The man in the back line's always going to be here. Marv again. It's going to hit. Did he hear the glass break? I'm not sure. Oh my god! Oh my word, they turn around and once again, it's Marv. Just Let's fucking go by Marv. Marv यार सच्ची में Marv इतना इनके लिए भाई वो ओमन पे कभी-कभी लगता है कि बेटर खेलता है क्योंकि ओमन पे उसके जो क्लचेस होते हैं ना ये बहुत तगड़े क्लचेस मारता है ये हमेशा इतने अच्छे लर्क देता ना बंदा ओमन पे इतने अच्छे लर्क देता है उसको like I think like क्योंकि ना वो एस्ट्रा भी खेलता है वो भी खेलता है fucking Brimstone but I think Omen does practice as a controller. ओमन बहुत अच्छा खेल लेता है. इट्स नॉट लाइक एस्ट्रा अच्छा नहीं खेलता बट ओमन बहुत अच्छा खेल लेता है यार. हमेशा भाई इसके इस राउंड ही इसके कम से कम 3 या 4 ऐसे लर्क होंगे जिसकी वजह से राउंड पलटा है. This is already starting to look like maybe this goes out of the ordinary. Let's look at the buy here, just a stinger for Aspas and the Sheriff for Sasi, but that's it. So for Optic, they want to keep it clean. We do have a stack towards the B site though this time, and that's for Loud. 4 players present. And you're going to see a little bit of progress being made on the other side until then. Sadak was a player on short, does get picked off by Ye, so already we're now looking at what else can they achieve here. Well, no, actually that peak is almost a red herring. So like you said, the stack is here on B site. Now players conscious not to give away any audio cues. Optic happy to slow things down now. इनका भाई How deep this drone will get. It's all the way from Sub Rosa, so he won't actually find anything through tree or onto site. With nobody holding it, Optic. तो सुना वो क्या कहता? उन्होंने जो कैट हो गया ना उसको सब रोजा बोलते हैं ना उसको. वो वाला एरिया को जो कैट के नीचे टॉप मिड के नीचे होता है एकदम. टॉप मिड की हां वही तो उसको सब रोजा बोलते हैं तो ही सुन के हंसी आई. भाई सब रोजा सुन के अब हंसी आती है भाई. वो बंदा कहाँ रह गया? कुछ भी नहीं कर पा रहा भाई वो. असेंट तो बड़ा इंटरेस्टेड लग रहा है इसके अंदर. मैप का नाम पूछ रहा है. कौन? ये जैसे कहता भाई ये मैप का नाम बताइए. मैप का नाम भाई टीएम है. वो कह रहा है मैप का नाम टीएम है. Sassy with a sheriff. Well, they're just going to try and dampen क्या बोला वो? Shit don't add up. Sassy's found one. Shit does add up भाई. Just Aspas and Pancada left to find. Shit always adds up bro. At least my shit adds up. The Spectre does. Yeah भाई, my shit multiplies actually. Multiplies. They will respond, but now Optic conscious to hold on to at least 3 of these weapons. You could punish Crashies. That could have been something. Not to be. Oh god पीछे से पिट गया. शॉट से पिट गया सीधा. Nice one Crashies, let's fucking go भाई. Crashies इनका भाई वो है पता है इनका बैक इनका Crashies इनका बेसलेट है पता है इनका बैकबोन है Crashies. Crashies I would say anchor नहीं है इनका anchor वैसे ये है. हाँ Crashies और Marv जो है ना इनके बेसलेट है पता है इनके बैकबोन है. अगर वो नहीं हो ना तो अगर वो होंगे ना तो obviously you'll see the difference. नहीं अगर वो नहीं होंगे ना तो you'll see the difference basically. वो तो है ही. वो तो मैं वैसे तो हर प्लेयर के लिए बोल सकता हूँ बट हाँ मैं तेरा पॉइंट. हाँ लाइक ये तो वो है बेसिकली लीड सिंगर गिटार जो बोलना है बोलो. लाइक वो ही द वन हु शाइन्स इन फ्रंट. ठीक है ना एज चेंबर एज जेट जो भी जैसे भी वो हमेशा शाइन करता है. हाँ और इस टूर्नामेंट में मैं देख रहा हूँ भाई वो एक्स्ट्रा ही शाइन कर रहे हैं. जैसे उसका टीम लिक्विड के अगेंस्ट मैच याद है तेरे को? हाँ हाँ भाई बंदा 30 किल्स या समथिंग गया था चेंबर पे. हाँ Optic need to put themselves in a position. देखना जरा देखिए जरा क्या कह रहे हैं. Find an opening engagement. Can't lean back and rely on Marv smokes in any form of क्या हुआ? execution. ये स्ट्रीम चल रही है. So we've got a minute to work with. So
सुनाई दिया क्या हुआ? Hoping Loud to try and keep this as clean as possible. Yeah, just going through the motions. बोल क्या हुआ? As जल्दी much बोल. of this utility as possible. ना अभी इसके बाद मैं तो कह रहा था रात को. They're pretty happy where they are for now. The crunch towards the B side looks like it is now. ना इससे मेरा मतलब था 11-12 बजे अगर मैच Takes a little bit of damage, but yeah, he's in the sights! अबे इसको वो ग्रैंड टूरिज्म खिला दे. Takes down less. Spots the player by the back of Bauhaus. Flash dribbles through and Sarsi eats it just completely. Sight's now there, Spike is on towards it. FNS trying to hold the cross and he does exactly that. Job achieved, mission achieved. But can they hold this though? Can they hold this retake? Aspas and Pancada have to work this through. Aspas making his way back through market here. Turret going to be key. Alarm bot actually stacked up on stairs as well. And OPTIC happy to wait for contact. It's a weird setup though. Crashes up on the box. Little unorthodox seems to be the name of the game. This entire map. The wallbang. ओ भाई दिया वॉल बैंग. But I don't think क्लच कर पाएगा. इस पे बुलेट्स नहीं है ज़्यादा. Never mind. इसको क्लासिक निकाल लेनी चाहिए थी. What could have been an absolute tragedy in the making. It's going to be close. But I'm pretty sure he's got it. इसको क्लासिक निकाल लेनी चाहिए थी यार. But चलो ठीक है बहुत ज़्यादा क्लोज What a था. play from FNS. He eats the paranoia, slips inside the cloud burst, nearly gets the better of Pancada as well. They made him sweat for it. 0.74. What is this from Ye? Right over the top. Enemy remaining. Last player standing. And again, it cost them 4. Pancada ने भी बहुत तगड़ा शॉट मारा. And the repurchase looks a little rocky. Ye's got his Blade Storm already. Yeah, it was farming. And yeah, the buyback for Loud is... Look at the advantage filth. here. It's horrible. It's straight up middle. Look at the push already coming out. Aspas though wants to be the one to equalize it, the grand equalizer here. Push straight up through middle, look towards tiles, try and spot the player, but it's not just him. There's 4 players behind it. Smoke towards CT. FNS should have seen enough. The spike's there. Oh, you're absolutely Oh, right. bhai, wo spike le gaye. It's in enemy hands. They're going to set up new defensive lines. This map ain't going to be fought out like this often. And Sadak's going to come out as well. There's no way to put it. This is just to slow things down here, but look at OPTIC. How'd you get back in here? They're locked off on so many angles. Convicted finding them here, actually. Oh, Crashy's has. भाई तब भी kills ले रहे हैं. Oh no way! It's falling down like a house of cards. Aspas goes down. They still know less. Pancada's there too, but there's that final player. They don't quite know. Crashy's Bye bye Pancada. And the frag couldn't find Pancada. Less still doing well though. Still making this seem almost possible. Spike back in hand in 45 seconds. They can start to get to work. Marv, this whole time though, mad just dash. been holding on. Oh, low हो गया. He's down to 13 HP now. Does he expect Marv this close? Yeah, but look at Sarsi. Okay, takes down Crashy's now game on. 30 seconds A left. little bit more. God. Punishing Marv on the hot But चलो लेस बहुत And low now है. on लेस 2v2. बहुत low है. Spike is down, so time in OPTIC's side. But you know that's supposed to Let's be do 1 HP, Sarsi. right? 1 They HP know है there's pretty no much. YB. They've got a ways to wait here, and Les needs to stay patient. It's 13 HP for less as well, and only working with the Bulldog. FNS की पोज ही बहुत अच्छी है. FNS Position. actually tucked up in tree here. नहीं. Right, actually, Les gets it. That's his third now. The बहुत ही गलत टाइमिंग इसकी. बहुत ही गलत 13 टाइमिंग HP, भाई. making it look lucky, but it is Ye on the other side. The dark Does he yeah. wait? He waits so patiently. He finds one the second. He what? can't do it. It's Sarsi. And somehow the score's down in Loud's FNS. favor. And once again, we know these guys are damn good on this side. But once again, the unorthodox is hitting here. What was this round? The spike गंद went मचा where दिया it पूरा was. plate पे 4 भाई. players from Loud. I mean, come on. I mean, 2 things. That's the last time we see that default from OPTIC. It's the last time we see the spike there on the floor. I Absolutely. can guarantee you that. Absolutely. God, and one यार ये actually बहुत sad हुआ FNS के a साथ. bailout round from Les. हाँ. He's left on so little HP, and once again he's doing this. But मेरे को मैं समझ गया ये push क्यों मार रहा था ताकि lurk दे सके. But I think उसको बस वहीं बैठ के खेलना चाहिए था. So much though, once again. He's well just scraping together. I mean another obviously purchase. हम तो as A viewers judge of the बोल ही Bulldog सकते हैं कि to भाई round इसको ये this करना out. चाहिए था, इसको वो करना चाहिए And a था. lot of हमें motivation now for काइंड पता भी था कि वहाँ पे था वो. हाँ हमें तो पता बट भी था उसने उसको पता नहीं एक्सपेक्ट था. नहीं किया होगा ना. वही तो हाँ. definitely expect नहीं किया but still Yeah, but there's hold still a कर. fight to be made, and it could be such a हाँ. factor of if it actually goes right, they win out and they keep control of the map. And now with the mid pressure, they might commit behind it. But no, the timing's actually really good for this hit to come on in. Yeah, Aspas and Sarsi deal with both sides of this hit from OPTIC. And yeah, lesser weapons just being mowed through. It's now down to Marv. Oh, ये round 2 यार unfortunate था. And it's dealt with comfortably enough. Loud, 3 standing. Didn't Quick quite round था ये fall तो. for the pressure there at all. Just like we said for OPTIC,
This comes back to a crucial purchase अब again. 9-8 ले आए भाई. But in Loud's favour this time around. A little bit of a buffer now, but it's not much. Aspas will be able to offset that slightly with the Blade Storm. This will be basically everything in the bank for OPTIC. And this is the round Loud can equalize. There's a reason this veto Votes looked देख good रहा for है. Loud. There's a reason 60% को coming लग from रहा है the OPTIC other side, set them जीतेगी. up for success. 40% मैं This जीतूंगा. is one of the लाउड sides. से बेटर हूँ मैं भाई. Showing the मैं लाउड से बेटर. मैं पूरी टीम से बेटर हूँ. एक बंदा पूरी टीम से बेटर है. तू लाउड है भाई, तू लाउड ही है अकेला. मैं ही लाउड हूँ भाई. ब्राजीलियंस बेटर देन वो इंडियंस बेटर देन ब्राजीलियंस भाई. They've got numbers advantage on this. If they I'm push through Brazilian here, और OPTIC American. Flash. Flash goes in and Mob actually gets away completely scot-free. And they've made such mid progress here on the other side of things. भाई Yeah, CS भाई. already through market here. CS भाई. As long as the spike doesn't get caught, this is a really good read. But Sassi gets तेरे को away. याद नहीं Quick CS में वो moves, जो keeps कोल्ड him जीरा living, and और Ye फॉलन gonna वो try सारे to वही close तो हैं that though. ब्राजीलियन. Potentially one towards Bowhouse, not 100% sure. But it's a player towards अब वो तो close यार cap तुम इंडियंस to punish. वो And एसके buying रॉसी से time, पूछो. precious seconds is Sassi dealt with and beheaded. ग्लोबल Side ई-स्पोर्ट्स now एनिग्मा more ई-स्पोर्ट्स vulnerable. अच्छी Evidence टीम्स to हैं बट support. फिर ये है कि Clearing क्योंकि out Bowhouse, no, but it's be the trade from Marv. एपैक Spike रीजन on में the बहुत side, बेटर but look टीम्स at भी the एग्जिस्ट reinforcements. करती They हैं. finally made it. PRX भाई वन ऑफ द बेस्ट टीम्स Marvin crashes. एट दिस पॉइंट वो एपैक की है. Sadak actually gets found Yeah? by Marv trying the headshot. हाँ रीजन के Now हिसाब I'm से होता looking है. towards where Crashes is off to. He's playing the smoke. He's holding the space. The temptation beckoning, and he's going to swing it. He's going to get one. Puts Marv in the 1v1. The Iceman himself. The Omen battle about to go down. Pancada on the other side. नहीं चाइना Utility to play with on Pancada too. एक्चुअली नहीं है. चाइना ये चाइनीज टीम मेरे को नहीं पता. मेरे को सिर्फ पता है अच्छी टीम जो है वो सिंगापुर की है PRX He's not on his side और anymore. इंडोनेशिया की. Shoulder peeks it. वो जॉर्जिया. Down to a danger. ओहो मजे ले गया. He's toying with him. He's playing with मजे ले गया भाई. Marv is doing और so तब भी much of this, but does he have the time on it now? Pancada, वो no, he टाइम नहीं doesn't. है. आई थॉट था टाइम. Played it to the Never mind. second and played him like a fiddle. OPTIC get to 10. हाँ नहीं आ रखी जनता. They answer back now after Loud building in 3 rounds. You look at the knock-on effect though. OPTIC's purchase is going to struggle here. What a beautiful round though from both sides. Again, the back and forth is insane. You see the awareness here. Crashes looking to be unorthodox. Get inside that smoke, cause problems, run the clock down as much ऐसी किसी भी as टेलीग्राम possible. चैनल Still ultimates available for Loud. पे तू अपने उससे कर सकता तो. See, there's a sting and there's a spectre here in this purchase. मेरे and को Aspas कुछ back on the आइडिया नहीं भाई. operator. Oh, this is going to be such a fun battle. Aspas posted towards middle on this. Similar scenes. Look how deep. Oh, Sit the early on. timing. Aspas Yeah. swings it. The intuition on the timing, just steps out, finds Crashes midway up cap. Lovely stuff. Now the pressure going to continue to mount though. Yay! हाँ सेम ही तो मैच ही है भाई. Barreling through. He's straight up tree. What? Think about Sassy and Aspas. Excuse me, how has he been allowed to do this? How has anyone let Ye off the leash? How have they Maybe let him yeah, get makes this sense. far? There's no rotation. And no one's noted this yet. Pancada's still, you know, trying to do his work, just sack towards hell. And Ye's above him. फ्री टू वॉच है भाई. This is not normal behavior at all. Ye has somehow just appeared behind him, and this is a devastating round to lose potentially. Now with a spike on the side, they can start looking towards getting the plant, but still, Sadak falls away. Hunter's Fury, I think, just got invested. It did! Zarsi found Victor. FNS on the trade, still posting it. Marved again! भाई How much can one man do? Sassi doing bailout work as well. And now तेरे हिसाब से Sassi कर लेगा against clutch FNS. FNS? And the time, a couple more precious seconds. But look I think at yes. where FNS is मेरे को भी going. लग रहा है. बट सासी अभी बहुत ऑन पॉइंट है. I don't know. उसकी टाइमिंग ओह कर गया. Let's go by FNS. And I thought Sassi read that. I thought he was ready for what was coming. I still am just absolutely in shock मेरे and दो awe हैं of तेरे how एक Ye got to मसला that एक position. थिंक इन्होंने Still, It's flipped back the other way now. Another ridiculous. Marv just going down swinging here. The only thing to actually put him down, the Hunter's Fury. They said Sassy so close to the mark here. But OPTIC find their 11th. They forced the second time out here for Loud. And look at the advantage now. Financially. पांच आज पांच है. ये ग्रैंड फाइनल है ना तो बेस्ट ऑफ 5 होता है. 10 11 12 बजे तक भी चल सकता है. I thought this was going to be a loud map one. क्या चीज? I really
बहुत कूल है भाई इनका तू म्यूजिक सुन You have to lean that way. Surely, logic dictates. अब जाएगा मैच लंबा OPTIC losing that last game as well, they faced ये everything म्यूजिक starting हमेशा against मस्त होता है thought, surely this one, yeah, it's a long series, but I'd say Loud I mean gets पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है उसके लिए तो अच्छा है the veto looking good in this favor for at least the starting points. हाँ ये हिंदी लिखते हैं इनको पता नहीं इनके इंडियन व्यूअर्स भी बहुत हैं टाइम आउट में पूर्ण विराम लिखते हैं अटैक साइड को आक्रमण लिखते हैं He's having an insane game so far. And this isn't even saying anybody on Loud's particularly playing bad. Optic have हो come into सकता है this, like I said, with a breath of fresh air. Reinvigorated, looking so new ये in this as well, टर्की playing as a इस्तांबुल pack too. And we noted how decisive they were in the first half. That trend has continued here in the second. Yeah, 100%. बहुत व्यूअर्स है ना वहाँ पे Really वैलोरेंट looking के to बीच catch Loud off guard in the mid round. Make it as hard as पता नहीं possible for करेंगे कि नहीं Sadak. क्यों यहाँ पे टैक्स बहुत लगता है Three on the trot that Loud are able to claim has now been answered back almost हाँ in एंटरटेनमेंट back-to-back टैक्स लगता है Optic. हाँ क्योंकि स्पोर्ट्स में नहीं आता ना ये स्पोर्ट्स में कंसिडर नहीं करते इसको एंटरटेनमेंट कंसिडर करते हैं एग्जैक्टली The semi-force here. I mean, 700 left in the bank for Aspas and Sadak. A Stinger and a Spectre, but a Bulldog. आई थिंक ऑप्टिक निकाल लेगी ये वाला राउंड नहीं निकलना चाहिए ऑप्टिक का भाई क्योंकि उनका फोर्स है Look how deep they're already sitting in this. No commitment on that one for Ye. Sadak is going to fill that space and need to be very cautious now. Play forward for Sadak. And there's just no good options. There's no good outcome for him. The rotations are coming in. And Carter forced to the back of the site, and away we go. Yay, first man. Flash is good. चलो सैसी निकल गया राउंड अच्छी बात है गुड राउंड अब तो आई थिंक जीजी हो ही गया pretty much ऑप्टिक It's going to be less. And Aspas trying to play it back in, but look at the weaponry, Mike. You noted it early on. It really wasn't good at the start, and it's certainly not good now. Expects for the Bulldog to work back in here. 4 to find Ye. Still got that Blaze Storm after so much damage conceded here. Right at the choke point. Yeah, you're looking to get aggressive. Crassy's the one to find the wallbang. Optic on map point. And like I said, the finances haven't been comfortable either side. I think this is Loud just looking to make it as uncomfortable as possible on the repurchase. And Optic taking no chances with this. They put the lockdown in. Another beautifully handled. It was anti-eco, but a Guardian, some light shields here. Not an awful lot for Loud to work with. Some gaps in utility as well. Optic, I feel like they're hitting their stride now. Confidence will be brimming, and the high flash to allow the steps forward. Aspas has got revealed picked as well. Yeah, he's gonna not do anything Oh, about Aspas. it. Aspas gonna fight too. And just tries to play his life. I don't know how he just got 2 kills out of that, but apparently that's just fine. Sadak, I think, got tagged. He's down a little lower, but Marv's in the side. बच गया Again, मार्व these rounds are absolutely unfathomable. Marv tucked in the corner, and Sadak's got him dead. Good resilience, but what a bailout from Aspas. अब ज़्यादा अग्रेसिव होगी लाउड क्योंकि उन्हें पता है कि लास्ट वो बचा है वो पिक्स निकालने की कोशिश करेंगे ये देख Makata going to line up the last 2. Loud on 9 now. Again, the first time we've seen this, though, the flash over the top, the cloud burst in mid just to try and pressure Aspas. The Nano Swarm lineup coming through as well. He takes so much damage here, and he's suppressed, so we can't even dash out of Pizza. That's it, beautifully constructed. Just trying to catch him off guard. I mean, between the 2 flashes, that was wildly impressive. The first flash to set them up, as you noted, the high flash that comes in, but there was the second. But just in between that split second, he got vision. Actually got 2, so 12 to 9. I mean, it's a credit to just how It's insane got Aspas is. Yeah, absolutely. He had seconds to work with, maybe less, but still got him out of danger. Crashies goes down instantly. That's going to be the spike. Left for a second, but quickly picked back up. Now, you can look at the buy here. FNS really the only danger man, I'd say, with that rifle. The rest, obviously, up against it here. And, of course, perfect purchase on the other side now. Starting to enjoy a little bit of that money that's been evading them this half so far. With 9 rounds to 12. A couple more chances to try and close here. अच्छा वो वो हम पर टाइम नहीं था भीड़ बहुत थी मैं अपनी भी एक चीज़ छोड़ के आ गया प्लस मिल भी नहीं रहा था कहीं पे भी बाहर वो ड्राई फिट वाली शॉट्स लगी नहीं हुई थी वो जो दुकान पे हम गए थे वहाँ पे भी मैंने देखा मिली नहीं This game is blowing my mind. But look at the spike. Where Optic have had to reposition to. Sadak's got to be careful here though. He could get caught. What is that? He found the headshot.
Just casual, real casual, the 180. भाई imagine ये वाला round निकाल दे. But once again, there is one man. I think निकाल देगा. निकाल सकता है भाई. Definitely कर तो सकता है. They look Even though वो देख रहा है साधक वो angle. Sometimes it looks like it's so simple for him. 30 seconds left. Sadak, such a cerebral play. Got Pancada. I believe in ये supremacy भाई. I also Might believe get in the ये 1v1, supremacy, but that might be all he gets. He doesn't have a shot of it. Lovely from Sadak. Show me that blade storm again. Did he catch just a चलो piece force ahead आया of था the उनका. paranoia? अब full buy round. Cool, that's fine. What? I think there was a pixel, but I mean bloody no. Mobbed का भी यही reaction था भाई. Yeah, that's pretty fair. That's pretty fair. I mean, if there's going to be a But- deterrent to not Like good challenge Naspers लेकिन Aspas on वो mid, वो it's kills like chance that था. that'll do it. हाँ वो तो है ही तुक्का ही था वो और like क्या वो था. like उसने वो कर लिया था basically anticipate Finances. And this back कि head level कहाँ पे होगा और उसने मार दिया. हाँ और उसने मार very दिया. solid foundation मैं तो to तब भी strike random ही to get कहूँगा around क्योंकि मतलब comfortably. चलो ठीक है good prediction from This is Aspas now but बहुत कम chance था वो right लगने back का और वो in लग favour गया of Lau. सीधा headshot. Optic tapped out here. I mean, everything comes into this purchase. Yay down on the light shield. Allowed, they have a buffer. I mean, it's only Pancada sat down at 450. The only thing to offset this really would have been Aspas either playing a rifle here, holding onto that blade storm, and it would have made it even better. But I'm happy to see the operator in his hands. If we're already getting glimpses of greatness coming into this point, can't wait to see what he can do going forward. 12 to 10. Timeout concluded for Optic. I mean, Optic would have to do the unthinkable. If Loud win this round, हमेशा ये टॉप ट्रिक कर रहा होता है. हमेशा ये टॉप ट्रिक कर रहा होता है. क्या दिक्कत है इस बंदे ये तो भाई की? पागल आदमी है भाई. पागल आदमी है सच्ची में. हमेशा टॉप ट्रिक कर रहा होता है. that will help the cause, but a lot riding on this now. Go back in. Hear the purchase here. And you can see he's straight up in towards middle, but it's all a fake. It's all a straight up fake, but they deal him so quickly. And Aspas rattles off a shot. Crashy's dead. Cross now being watched, gonna spot a pixel on the TP going forward. He's gotta know he's somewhere close. The flash is really good nice though. Mark flash, set up to succeed. Aspas gone. Pancada tucked in the corner, tries to get out of there. TP's away. 10 HP. Sprays in a praise. And this time, कोशिश no तो करी थी one's उसने answering. but A 3v3. और best part के Marv की health अभी भी intact है. हाँ और Marv इनका proper clutch player. Ferocious towards heaven. Wants Sassy dead. He can't do it. अरे भाई कैसे निकाल दिया Hand ये? यार. Loud hold on again. ये तो समझ में नहीं छक्का Odin player. Odin छक्का Odin Mother player. chod. Absolutely perfect. They recover the operator as well. Les has his lockdown back up. I mean, it said the spike plant will make a difference. It's not going to be a massive difference. We have to scrape together a couple of rifles, but the utility will suffer. They're missing shields on the side of Marv. It's a broken purchase. Let's go. Let's go. I don't need my voice. It's fine. We're here for a good time, not a long time. Actually, maybe both. Yeah, we look at the purchase. भाई निकाल दिया ये round खत्म करने होता है. Rifle, no armor. Yes, actually भाई OT नहीं जाना चाहिए ये बिल्कुल भी. Warded away from the spam. Actually concedes a little bit there. So the sheriff from yeah. So reading that perfectly as Optic actually drift back towards B main. Yeah, he has to be the tip of the spear here. Actually, previously the nano swap Think this goes OT? set up for that. Loud ले जाएगी फिर. To switch, but Ye's been getting मैं इतना जल्दी तो नहीं कहूँगा कि लाउड ले जाएगी बट हाँ ऑब्वियसली उनको एक्स्ट्रा चांस मिल जाएगा और वो डेफिनेटली ले जा पाएगी. That's everything. The entire plan. साला ओडिन प्लेयर आ जाता है. Ready for business. ये सासी को निकाल दो बस. ओ मेरे को लग रहा है किल मिलेगी. बच गया. बच गए लोग. second half of the spray would have done a ton of damage. आयो बे बहन चोद लोडू का चोदा. लोडू का चौथा. काश नहीं लोगों में. Yeah, they'll force out a shot and maybe take up a little bit of the space in middle. FNS does now have his lockdown ready. And that's going to be committed. 35 seconds and the counter comes out. Sanak's not here with the nade either, so see already less slipping away. Sassy. उन्होंने भी counter. Oh, that's good.
Okay, क्या came back नीड है on भाई then. विक्टर का? And all the information once again flowing, but OPTIC need to make this Oh my stand! God! And it's just an absolute spray down! नहीं यार ये क्या यार, ये क्या है ये? OT time, sir. Debut on the round! Flawless. And this is just Fuck यार बहन चोद. destined to be an unbelievable game between these two. The duel of fate, of course, is going OT. 12-12. Loud. If you open up a door of opportunity for them on this map, it's almost your downfall from the very word go. OPTIC were held on 12 for such a long time. You call it scripted, but we are way off script here in terms of what we were expecting out of this map one. OPTIC exceeding expectations. Loud. Like I said, I don't even feel as if they're playing poorly. OPTIC have just come in with a totally new approach here. और विक्टर का वो नेट ना भाई, वो गेम बहुत चेंजर. ओपी था भाई, बहुत ओपी नेट था वो, लेजिट उनका तोड़ दिया. So many of those rounds. I feel like the last 5 or 6, we kept talking about the economy, other than Loud stabilizing finally in like round 22, 23. See if OPTIC continue with how they approach the regulation side. But remember this duo on this side as well. Yeah. This was a really key component and what made this side look actually quite exceptional was the combo between Double stack in mid. They're Victor going to look for and less. Marved. And, I mean, maybe rightly so. The guy got away with a little bit more. उन्होंने Like this उनको one, पता था but कि ये there's वो 3 करता players है. with the task, Oh, and that's been nice. dealt with. Now, where's the rest? Pancada with a critical trade though. Crashy's going to get dealt with as they did try and commit towards middle, but it's going to spur on the hit towards the A site. Wait, उसने smoke के through tag भी कर दिया Won't be उसने. able to come through and commit to that flash. So that coming through. He's getting aggressive. He's going through by Yay. Yeah, he's going to just तू दिया deny it. चढ़क. She has smashed क्यों यहाँ पे? the one to aggressive right on आसपास back को in. कैसे भाई यार. मिली ये किल भाई, कैसे मिली ये किल? नहीं Put बनती, it back down to बनती थी नहीं. 3v3, but they're walking wounded. Victor! क्या कर रहा है विक्टर? It dives right back on out of the round. क्या कर रहा है भाई? They face a 1-by-1, they fall. Loud. Advantage. ये in क्या OPTIC. बंदी गन बैटल ले रहे हैं बेकार की यार. वो भी टी साइड निकाल गए. वो विक्टर भाई रीलोड करते करते उसको पुश कर रहा था सासी को. रीलोड करते करते वो बहुत आसानी से मर सकता था वहां पे. मैं समझ गया प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे, बट starting to turn. And it's a 3-man crunch onto less. They create a little bit of pressure on the back of Victor and that one-way fuck भाई Pancada के shots. Bait Loud to come and challenge it, burn up some utility. And the timing is perfect. Less isolated but Loud. ये बंदा लेकिन कोच बहुत अच्छा है यार. क्या चीज? Ultimately कोच बहुत बढ़िया है भाई, चिल्लाता है खड़े होके वो. हाँ बहुत बढ़िया कोच है. मैंने कभी नहीं देखा चैट को चिल्लाते हुए या भैंचो. वो बस बैठा रहता है. सब जीते बैठे रहते हैं, लेकिन ये चिल्लाता है हमेशा. हाँ जीते भी है ना. चैट बस ऐसे करता है हाथ से, ऐसे बस ऐसे करेगा, उसके आगे और कुछ नहीं करेगा चैट. The side they're pretty Eventually, solid yeah. on. Yeah, they they did. worked out. I think it was 4 on the trot at the very end to get us into OT. OPTIC need to come up with a concept, a plan, a theory, something they want to try and run into this. I actually quite like what they did try and और द फैक्ट कि उन्होंने टी साइड पे निकाला. अभी ऑप्टिक डोमिनेट ही सीटी साइड पे करी थी और वो सीटी साइड हार गए अपना ऑप्टिक. वैसे तो ओवर टाइम में हमेशा मैंने देखा है उल्टा हो जाता है. हमेशा अजीब ओवर टाइम्स चलते हैं क्योंकि ओवर टाइम में कुछ भी हो रहा होता है. बट स्टिल not nice. Some of these players for Loud have come up huge in some of these rounds, and that's the thing. You can count on every single one of these players individually sometimes to just deliver you an outrageous round. Yeah, and if you want OPTIC to tie this one up, we're going to need a little bit of that. Need someone to find a little bit of that magic. So far, Loud starting to really settle into this. Sassy adjusting now for the A wallback, but there's nobody outside B main. Towards A. ऑप्टिक के लिए चीयर कर रहे हैं सारे. Stack for Loud as well. The flash is perfect. They're going to take नाइस सेम इन कंट्रोल. अच्छा कंट्रोल लिया, काफी अच्छा कंट्रोल. ओहो मार्क्ड. उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. Strays there, Marv strides in and they're playing so aggressive. And it's Salah. हाँ विक्टर हग रहा है यार. मेरे को अच्छा नहीं लग रहा विक्टर के. Underhand gives him a little second to back away. You can see Gate. ये कम ऑन. उन्होंने सुना नहीं. इसको तीन मिलेंगी. लेट्स गो. भाई शिट भाई, ये बहुत मस्त था. होली शिट भाई, ये ने अकेले निकाल दिया राउंड. It's always someone doing his best Marv's cosplay in round 26. Look at this. Gut wrenching for Loud. उसके बाद भी इतना शांत, कोई चिंता की बात, कोई शांत, एकदम शांत बैठा. उसको ज्यादा वो है नहीं. We have someone like ये बस प्यार से क्या आदमी है भाई. बहुत तगड़ा प्लेयर है. the best player in the world in my mind. वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स भाई. Unbelievable talent on that man.
finding it there. Perfect space to work. हाँ But again, Remind back. We said for loud. अच्छा तू देख कितने लोग देख रहे हैं आज 273k भाई पिच पे वही और मेरे को 2 लोग देख रहे हैं Bails you out, gets you 3 out of the hat. No worries. Now, loud. आएगा टाइम देख मेरे तो दिमाग में इधर भी था मेरे को उतना कुछ नहीं है मेरे तो दिमाग में इधर ये था अच्छा ही तूने लगा दिया ना लेकिन हाँ लगाता रहे मैं तो करता रहे इन ड्यू टाइम भाई हाँ वो मेरा वो आ गया देख इधर में मेरे दिमाग में ये था कि मैं तो देखने ही वाला हूँ तो आई नॉट फकिंग स्ट्रीम इट भाई मेरे को तो देखना ही है कुछ हर्ट थोड़ी कर रहा है सही बात है तू क्या कह रहा था तेरा क्या आ गया वो कार्ड ओह नाइस मेरा भी आ गया होगा अब वो हीरो वाला कार्ड आएगा ना इसमें हाँ 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 वही अच्छा कार्ड है आई थिंक वो चाहिए वो कार्ड अच्छा है वो चाहिए मुझको क्लेम ना भाई डन ये वो एक्चुअल उनकी VCT की मतलब ऑफिशियल ये सासी ये बंदा जो इनका सोवा है लाउड का ओ यार इसका तुक्का मतलब चलो गुड तुक्का नहीं गुड प्रेडिक्शन बट मैं तो तुक्का ही बोलूंगा भोसड़ी यही आदमी है साला लोडू है साला टकलू साला अरचोद टकलू लोडू एक ये अरे डर का अच्छा प्लेयर है इतना लोडू लेकिन ये हाँ डर का वैसे डर का टकला है बड़ा अच्छा टकला है वो ओ भाई विक्टर बस फ्लैश लेके खड़ा है ये कॉट हो गया नहीं अच्छा टर्रेट है उसका चिल ओ ये टर्रेट पे पीक करेगा भाई ओपी अरे जल्दी कर फ्लैश साले अगले यार क्या करता है ये कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया इसने भाई कोई ना एफएनएस है भाई एफएनएस बैठा है सही भाई ये बंदा क्या ओमन खेलता है इतना तगड़े टीपीस मारता है ये आदमी अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट नेवर माइंड अब देख क्रैश इज प्रॉपर क्लच प्लेयर तो है क्रैश मस्त वो भी चुइंगम चबारे चिल एकदम मतलब ऐसे जस्ट कैसे अच्छा क्लच करना है क्या क्लच करना है यार बहुत ज़ेन आदमी भैंचोद है इतना ज़ेन आदमी ना भाई ये तो बात है बट इससे ज्यादा ज़ेन वो है ये नहीं शिट ओह नाइस ट्राई भाई 3 HP है भाई वो यही टकलू मैं कभी नहीं आशी ने चौदह बैंक भाई वो इन मर गांडू इतना चाल पकड़ेगा माधव चौद याद है मेरे को यही है वो जब तक कोई जीतेगा 2 राउंड हाँ चलते रहेंगे एक बार एक पता कितना गया था 24 तो प्रीटी मच डबल मैच हो गया था ओटीज में हाँ तो जैसे अब 13-14 हो गया अब लाउड को अगर ये वाला जीत गई तो लाउड जीत गई अरे ट्रहक रहा है भाई ट्रहक रहा है हो गया जी हो गया कितनी गंदी गन है क्लासिक भाई वो उसने उसके तू सोच वो लिटरली क्लोज रेंज था 3 HP था उसने उसको राइट क्लिक किया एक गोली उस पे नहीं लगी ऐसे कैसे हो सकता है ये क्या गन है भाई तू क्या गन है भाई पता नहीं भाई मैं बोल के मैं आज मैंने जिंक्स कर दिया ब्रो आज मैंने जिंक्स कर दिया मैंने बोल दिया ऑप्टिक जीजी हो गया आज मैंने जिंक्स कर दिया निकालेगी ऑप्टिक निकालेगी उम्मीद है मुझको मेरे को भी उम्मीद तो है और अगर नहीं निकालेगी तो देख फिर आई लुक एट दिस की लाउड डिसरप्टेड ठीक है ना वो तो है ही आई मीन फेयर बट ईदर वे मुझे बस आई जस्ट आई एम थिंकिंग कि ये अच्छी गेम होने वाली है आज दैट्स ऑल हां ये तो है भाई फर्स्ट मैप ही ओवर टाइम पे गया अब अगला एटलीस्ट ऑप्टिक का पिक है हां नहीं साधक पता नहीं हो सकता साधक उसने कुछ इंडियन वर्ड पे किया बट वो इंडियन नहीं अब उसके हाथ पे लिखा है साईराम बता इसको हां अच्छा उसके हाथ पे वो लिखा है बाय द वे साईराम
हिंदी में। हाँ वो संगी है शायद। बट ब्राजीलियन ना बेंच ये लोग, तो ये लोग करवा लेते हैं कुछ भी। ये लोग मतलब होता है ना कि भाई हम हिप्पी हैं, तो किधर जाके बेंच इंडियन देखेंगे भाई इंडिया में राम में मानते हैं भाई। ये तो है, वो थोड़ा हिंदुइज्म, वो पीस वीस हिप्पी कल्चर से भी रिलेटेड है ना कि भाई हिंदी लिखो और वो सब, तो है थोड़ा हिप्पी बनने के लिए। जैसे वो नहीं है बेकम, उसके हाथ पे टैटू है ना मेरी वाइफ का नाम का हिंदी में। बेकम के हाथ पे भी अपने बीवी का नाम का टैटू है हिंदी में, विक्टोरिया बेकम। वही तो हिप्पी कूल विक्टोरिया। वो विक्टोरिया, ये उसने गलत दिखवाया ना कि वैसे विक्टोरिया इसने लिखा है विक्टोरिया। साई राम, ओम साई राम, अरे ओम साई राम। पूजा करता है क्या तू? पूजा करता है कि नहीं करता? आई थिंक तभी जीत रहे हैं ये लोग। हाँ इसलिए तो जीत रहे हैं क्योंकि उसके हाथ पे साई राम है, इसलिए तो जीत रहे हैं। बात एकदम सही करी, ये तो बहुत ट्रू है। भाई देख भाई, अनु में चाचे और स्नेदीप को बता रखा था। चल स्नेदीप का तो पता है मेरे को, बिजी रहता है। अनु में और चाचे को बता रखा था कि भाई मैच होगा आ जाना, और मैं वॉच पार्टी रखूंगा। आई नहीं ओनली, और मैं जहीर को कह रहा था कि भाई तू मत आइयो क्योंकि ये मेरी कल बेइज्जती बहुत मार रहा था। और जहीर भी ओनली रियल लेगा भाई। जैतर तो आया भाई, और जैतर ने बस सुना कि बस, वैसे तो ये इसलिए आया क्योंकि इसको अंडे बना कर। नहीं तो मैं अभी और भी आऊंगा, बट चलो बैठा था मैं साथ में। देखना भी था एक बार, मतलब वैसे भी देखना था क्या भाई। मैं सीएस के तो देखता था ना इतने, तो मेरे को एक बार इसके बेटर होते हैं भाई, बट थोड़े ज्यादा मुश्किल होते हैं समझने में क्योंकि सीएस में सिंपल है, फ्लैश स्मोक। इसके अंदर बतेरे की यूटिलिटी भाई। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। डब चल जाए बस तो हो गया। भाई एक रेना खेलना आता है, मारा किसी को, हील लिया, भाग गए। वो भागता भी नहीं तू, और हील भी नहीं करता तू। मैं पीसी स्टार्ट कर दूंगा टीम में। आ जा। हाँ टोटल व्यूज 25 बट कंकरेंट टू। सही है। We have to tell everyone that we just switched to Verizon's new Welcome Unlimited plan for just $30. I've already told everyone. Wait, did you say Verizon for just $30? It's their best unlimited price ever. $30? That's awesome. Yeah, and it's from the most reliable 5G network in America. For $30 a line, I'm switching now. Yeah, it's easy. And you get $960 when you switch the whole family. Wow, I gotta let my buddies know. We're already here. The network you want, the price you love, only from Verizon. What a start to kick off the grand final
course, here at Valorant Champions, Loud, they take map 1 in overtime. And look at this, the city is lighting up for them. They've already taken map 1, guys. They've done more here already, Mimi, than the last time they were in a grand final. I mean, what an impressive way to start out this series for Loud. It looked like that for OPTIC, they were going to finally be able to best this team on Ascent. But when we got into that second half, Loud again proved their dominance on that defensive side. I mean, the defensive side, though, was cracked open in multiple different ways. The amount of times OPTIC managed to find somebody behind enemy lines, getting marved and Yay into deep lurks. But when they got for the site execs, Loud were just able to hold it off completely. And you've seen here that there is a big difference in terms of one defensive round lost prior coming into this map, and then multiple lost this time. So OPTIC definitely punching harder than we expected. No, it was a great matchup in terms of just the absolute adaptations on the fly, honestly, because you could tell from the get-go that OPTIC had changed up their game plan. Every single player is playing way more aggressively, trying to find those holes that you were talking about in the defensive protocols a lot of the time. And it looked like OPTIC were going to take it, but it is Loud once more, battling back, showcasing some of that experience they've got, and making it one of the most ridiculous maps that I've actually ever watched. I mean, I could absolutely empathize with Mike, who was on the cast, saying, what the bloody hell did we just watch after the first half? Because it felt like every round ended in the first 10 seconds. Yeah, it was absurd. And I think for Loud, it's kind of re-hitting a story that has been with them for this entire tournament, in that they are one of the best teams when the going gets tough, when games get close. They're fantastic at making those adaptations in the late round. And I was especially impressed with the guy you're watching in this clutch. Saucy, he stepped up in such a big way towards the tail end of this game to keep Loud in it. The stats say there was only one clutch in this game. I don't believe it. I don't believe it. The amount of moments that Sassy was able to win, including this one, absurd. It's just madness. And there were so many moments where it could have gone in either direction. Really, this was so winnable by either team. Thank God it's Brazilian. After that. That was just an absolutely outrageous thing that I witnessed there. I couldn't believe it, but I mean, justice, honestly, as well, for trying to use the jump and right click on a classic. So I think he might be Brazilian and bold at this point. But you guys are winners too, fantastic Jet players on the server. Why not throw you another one? It's the Korean Jet standing by with Achilles. Thank you very much, Jinsu. That's right, I am standing by with none other than Buzz, one of my favorite players. And Buzz, off the rip, let's just go ahead and show it. You're going to be doing this interview in English. It's the first ever interview that he's doing in English. But right off the top, what did you think about the first map? Already crazy. We got overtime to start. What did you think? I thought Loud gonna win this first map really easily, but OPTIC was they prepared really well. So but they're winning in the first half. But last time they Loud pull it back and goes to overtime, and they're winning. And it's crazy match. I see. Oh, hopefully it keeps being that crazy. But it's been a pretty crazy time. We've been here for a very long time. What has been your favorite part about being here in Istanbul? There's a lot of moments I wanted to say. The match we played, there was crazy moments, you know? Against Furia, Fnatic, FPX. We go to overtime a lot. And there was a crazy match, and there's a lot of unforgettable memories, I think. All right, so the matches, I mean, I can't blame you because they were absolutely incredible. Some great series throughout there, and the fact that you guys were able to make it as far as you did is just utterly incredible. I mean, moving on, who do you think is going to be able to take this? Loud have the first map. OPTIC, though, still looking really, really good on Loud's map pick. Who do you think is going to be able to win the series? I think the Loud is going to win this series because the last time Loud beat OPTIC, and the map board for the route is so good. So I think Loud is going to win like a 3-0 or 3-1. Yeah, I think Loud is going to win this series. Okay, there you go. And Korean Jet is saying Loud is going to do it. We're not going to have the two-time. We are going to have the first Brazilian champions. We'll have to just wait and see. But last question for you here, Buzz. Do you have anything that you want to say to the English fans? Because obviously you've been having incredible international performances this whole year round. You've gotten so many people's attention on the English side. I want to give you the opportunity to say something to them in English. I just want to say everyone to thank you who support us and watching us. That's after I lost, I want to say everyone that they give us the kind words. So that gives me energy, and that was so good. Thank you to everyone. I hope you guys enjoy this tournament. Thank you. Well, thank you so much, Buzz. 감사합니다.
Congratulations on doing your first English interview without a translator on standby. Dave, maybe he's going to be out of a job. I don't know. But guys, we'll turn it back over to Yinsu and the rest of the crew. I'm just sad again. It could have been DRX, but it doesn't matter. We still have two amazing teams here. He thinks Loud is going to take it, or 3-0, 3-1. Do you guys feel that way after what you witnessed on map 1? Honestly, I think it's so up in the air still. And already you're seeing the prep have an impact here. You've got the IGLs and the coaches already dictating the game in a different direction. Yeah, and one guy who's been leading the team over at Loud is Sadak. He is in the AIM Lab shoot-around as he's prepping for map 2. And Bren, you were complimenting Loud on the way that they prepared and the calling as well. How much does he need to step up, do you feel like, as the series gets longer? I think Sadak is one of the best IGLs in the world, and also just in terms of the impact that he has as a player alongside that. It's hard to make the kind of calls and adaptations while also still putting up numbers, but he is going to play such a huge and pivotal role for Loud the deeper this series goes. Because like I said prior, as we were heading into the map select, preparation goes out the window to a degree. And it comes down to, you know, the resilience, the mental game, and being able to essentially adapt to what your opponents are throwing at you on the fly. In fact, we already saw that on Ascent, I think. Yeah, the further Ascent went, the more the kind of the preconceived notions that both teams had coming into that map just went out the window. And they were adapting to the way that each team was playing over and over again. And so Sadak versus FNS in this IGL battle is going to be one of the most important elements of this entire series now to decide who takes the whole thing. Yeah, I think the battle of the minds is everything for these guys, especially as the series progresses, because we head into Bind now, and this is one of those maps that has generally been a strong favorite of OPTIC's, but the last time these two teams played, Loud actually came out on top, and I think it also did kind of come down to the late-stage adaptation that Loud was able to provide. Yeah, it does bear mentioning that OPTIC are incredible at Bind. They are 10-1 globally with the composition that they run, and that one loss is to Loud. And it happened in the upper finals, and the way in which it happened is that Loud were running these sand crunches repeatedly. They were getting control of short, they were holding it with the Viper one way, and they were crunching sand, trying to punish Marv, to get retakes through hookah. So there's a clear game plan there, but it also offers an opportunity for OPTIC to respond and come up with a counter of their own now. Yeah, and we already saw that on Ascent, where they did come out, they saw that 4-1 slower style on the attack that Loud like to play. They got aggressive on the defense. Even if there wasn't a lot of time to prep, we're already seeing some of those ideas out of OPTIC. The question is, what is that idea here on Bind? We're heading to the Prime Gaming Agent select here. OPTIC, they're trailing by one map, but this is where we expect them to recover, given that Pearl and Fracture out of the question. Yeah, I would say so. I think this is their map pick to win now as we head into Bind. It's typically been a comfort, despite the fact that they did lose to Loud last time in that matchup where they were playing against each other. But OPTIC have really impressed me, I think, with the kind of adapting, and I think the evolution of this team as well, because it hasn't really necessarily come down to the compositions that they've changed up. It's come down to those little things, the way that they change their defensive setups, the way that when they have a Viper's pit online, Victor will hold in a much more unorthodox angle, for example, to try and play off of that. Those are the little things that OPTIC are doing that makes them one of the best teams in the world at Bind. Like I said, Loud love to run these, or have recently, since they've been playing this comp against OPTIC, love to run these teleporter plays into B and crunching that area, pushing through with short control. For OPTIC, I think they need to adjust their game plan on the attack side. That's where they're going to be starting with this comp. And normally they run heavy presence down short with a late backstab in showers, and I think that got read pretty heavily. And they run heavy B long with a late backstab through hookah, and Marv was getting caught in those positions too. So there are clear strategic things that they need to shift, and they will know that they need to shift heading into Bind. And I think the two players that does put the pressure on is Marv and Ye. They were two of the top performers in map number 1. But these are the guys that on that attacking side tend to play a little bit slower, are the ones playing back, holding for those flanks, and shutting down those retakes that Loud loves to throw. Yeah, and this is where OPTIC, they have to come back. If you look at the maps of the rest of the pool, definitely. How concerned are you guys if they're not able to? If Loud win here, I'm with Buzz. It's probably a 3-0 or a 3-1. It feels that way, right? It really does, I think. Both of these teams are just, despite the fact that the first map was so close. Yeah, it's going to be an important one indeed. We already had an overtime. Pansy and Hypog, we in for another one? I absolutely bloody well hope so, if it keeps up to what map 1 is looking like. But Mike, this is one of those gateway maps, I feel, in potentially unlocking the best of 5 here. If it
does go the way of, let's say, Loud, you do feel as though it starts looking like that 3-0 does become highly likely, maybe a 3-1. I believe so, yeah. I'm absolutely with the desk down with Buzz as well. That ultimately this one is really the flip factor of this veto. And when I said previously the veto's front-loaded for Ascent, that was the one that should have been comfortable. So in terms of expectations, we're already kind of off kilter here. So it's going to be interesting, again, starting on the attacking side. I mean, last time Victor didn't necessarily struggle to really find value, but the number of times that Loud were actually effectively able to deal with him, some of the desk highlights were actually some of these setups where Loud had the perfect reads, and they knew at what time of the round that was going to happen. They absolutely bossed the middle round. This is where we find out, was it a bad performance from OPTIC, an off day before, and you find the validity in the answer of, was this now Loud fully answering them, fully understanding what makes OPTIC great on this map? Or can Loud do that again? Has been evolution? So many more questions coming into this. We look towards the attacking side here, and it's OPTIC starting out. But can't help but glance towards the defending side of Loud, already exploring a little towards short. Pop flash, popping a flash in towards showers, noting nothing so far. Marv actually positioned outside, and on the back of that sound cue, both him and FNS will peel away from this. An early progress for Ye and Crashies here. There's only one member. Les has been left to try and anchor on B site here, and haven't really progressed anywhere else on the map. No real confirmed information elsewhere. And first contact made, noting Ye and the follow-up. So you're now going to know at least 2 players towards long, so he's got to try and play his life. Already Ye's going to backfill that space, though, take all that elbow control away, force him towards CT. This is a full-on retake 5v5. Spike planted. No, actually, look, OPTIC look to push even further through. Crashies will find less, and that's an early kill to concede in this retake. Nobody else even really set up close enough to capitalize on that contact. Now I'm looking towards maybe the pressure that's going to come in from Hookah. Victor does need to readjust towards Tube, down to 73 HP, but there's been time now, and Sasi just finds Victor. Ye overextends towards CT, and the punish on the timing here. They've actually carved space for themselves. And timing, they've still going to get a little bit of a wiggle on here. But the fight towards CT. CT is found, and now Mark. Oh, what? Mark gets 3 from elbow. The rest of his team crumbled around him, and Marv still delivers. What an insane turnaround on that for the Red Bull clutch. Just when it all looked going so well for Loud. Even find this first one. Beautifully done. Surgical precision from Marv. You can see, yeah. Because the retake until that point looked unbelievably I mean, OPTIC were crumbling ahead of that. The burst. Hang on, though. Loud have actually forced back into this. Get out of here. Well, we've got Stingers coming out. We've got no armor behind it, though. So it's purely Stingers with a little bit of utility. That's about it. This could dampen the next purchase, so what can they achieve off this? Let's see. And first contact found, and the success! Sarsi's already got it. Ye's dead. And now, if you're OPTIC, you're not expecting this! And there's more damage! Loud and making it count! Flipping the script here in round 2. Marv left to pick up the pieces here on short. The flash actually should just catch him, so noting presence there. Crashes on the other side, nothing to act upon. Launching smoke. Oh, that's it. Still got 2 towards long here. I mean, Sassy's got the upgrade. Already this rotation coming through from Les, but he's only got a frenzy in hand. Sadak wisely respecting this. Thought he was going to sit a little bit deeper towards CT, but actually Marv wants to provide almost more. Maybe dig him out of this hole they're sitting in towards, getting up close and personal to the Stingers. The man's absolutely tearing into them, and he has at least given them a 1v2, right? Like, he's done the best he could, potentially. This flash could be crucial. Okay, confirms his attendance, spots one towards Heaven. He now notes both of the players. He wants the fight towards Heaven, and he gets it. And now looks towards the follow-up. Pancada creeping closer, and the pop flash has to be good. He's called him. A little bit of a turn, though. Pancada's got the gun back out. He's ready to fight on this. A tap on the spike, and the push! He sprays it wildly, and Crashies could not care. Damage achieved, though, Mike. 4 will fall for OPTIC with his back-to-back Red Bull clutches. Crashes and Marv. Getting OPTIC on the board here to start behind. Again, with that Stinger purchase coming through, we'll see what the gaps now within this purchase. Fantastic opener, actually.
Looking to flip this back. Full 2v4 actually, and that's with Marv getting hyper aggressive with that smoke. They're live from the Hex quarters. The watch party all lined up. Seeing it, yeah, there are gaps here. Some utility missing. Sassy actually going to offset this now with the ultimate being available. Crashes on the other side will grab the orb in showers. Marv actually has the orbital strike online very early on here for round 3. Could be key in a post-plant scenario here as well. They can get themselves there. Actually, FNS gets ahead of it. Look how far he'd progressed. That, to me, was such a surprising factor that no one had noticed him until now. Same to be said for Aspas. No note on towards it, but the trade comes in. So position now removed, bit of a one and done. Now what remains is, well, less. Still connecting, but the trade's still coming. They're really fighting for the site. Now, plant comes in, Optic should be able to get in towards a decent post-plant. See how far those Seekers go. They know they've got a little bit of time to work on this now. Rifle isn't posted, but shouldn't actually catch anybody here, so... Somewhat telling in itself, but not going to give away the full picture. Yay posted on the angle. Ooh, and the timing! He gets to look back, but Pancada picked up his teammate. Another 1v2. Trying to slip the net here, fall away towards the site and play the timing, but already on the site is Sarsi. Sitting pretty, Pancada's on 5. This is the kill, he turns! Oh my god! Back in time! Dips around, the movement's gorgeous, and Pancada is just hemorrhaging blood. He's got to get out of there. That's more than enough done for Yay. Big round for Optic. Just when you think Sassy's going to catch the god timing and find that kill, Yay flicks back onto him. Another Red Bull clutch. How many we had so far? There's been 3 rounds. Right. There's been 3 clutches. Sounds good to me. Coming right down to the wire here. Remaining. I like that Pancada even survives this here. What a readjustment. I mean, you just never have an advantageous engagement with Yay. Apparently like, not. if he's got a gun in his hand. Yeah. I don't know, I wouldn't put a knife past him at this point. Anything else, it's just, it seems like he's far too good at this game with everything. And now we're going to see the knock-on effect of the money being shredded. It's been left intact. What? Sorry. Why is there still so much better? I'm back. Oh, we talked about this last time. That's Victor though. They've isolated. मैंने मिस कर दिया मैं सुट्टा भी नहीं गया नीचे बट मैंने देखा अभी क्लच शो उसका He smells something. Something हाँ in the showers, man. It ain't looking right. I think he was actually spamming on the core of the wall. Actually, look at this though. Optic re-aggressing back onto Hookah. They've doubled back into this with a little bit of presence shown and a beautiful shot towards CT. Ye's patience pays. As pass goes. And this buy that wasn't meant to be much, to be fair for Loud, did do a little bit of that initial damage on Victor, but it does seem as though, again, we're seeing that composure from Optic. This is what you want to be seeing, though. Keep control of these early moments, these early rounds, because you know that Loud have that capability to go late game, and the flash. The flash caught Sadak. And the spike's going to immediately make its way towards B. I mean, FNS already got tons of space to work with. Marv gets even deeper. The Sadak, he's reading it. He knows. Yay is somewhere. Spike planted. Lurking back over towards A site. And yeah, he's got the info now. You just don't love the idea that this man is anywhere near you, just lingering around. The killer in the shower. And Optic makes it 4. I've got to say, so far, so good, but I still feel like we haven't seen Loud on that full comfortable purchase yet. We're still waiting for all the other, I guess, essentials to fall into place. Look at that statistic as well, talking about it being a strong map for Optic. Loud, undefeated on Bind across Stage 2 and Champions, 5-0. Well, I guess time will tell, bhai. Time will tell. They have to answer back here. Maybe. You've seen I mean, Optic, ऐसी team तो है नहीं देख. We'll see with the previous catching Victor off. Well, now actually Optic going to adjust away from that. Bit of info early on here from Sadak. We'll note long presence towards Fountain. Hello. Here to be less. हाँ भाई. Just anchor. क्या चल रहा है भाई? Loud जीत रही है, so Optic जीत रही है. Now with the scoreline benefit, Optic can slip back into that more methodical approach. Nice, sir. And expect
अबे हम अपना स्टैक करते हैं और अपनी स्ट्रीमिंग करते हैं जी। हमें देखेंगे लोग, भाई हमें देखेंगे लोग, भाई ये क्या देख रहे हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, यही तो बात है भाई। Leave FNS in a position here, but it's only 25 seconds. They actually resort back towards A side. Do they clear him in time? Do they even use close utility on this? Aspas is ahead of it, and he pulls the trigger on the first. Takes out Pancada by his side. चाचा की गांड मार दो भाई। So much damage. 10 seconds now. Yeah, he's out though, unleashed. And now with 10 seconds, they got to get the pawn. Can anything deny? हाँ सही बात है। Gets popped, and they need to get the site under control. Damage achieved. 4 seconds. Yay. रेना तो मैं खेलता भाई, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है। मैं तो जेट, मतलब जेट खेलता, जेट भाई। You think OPTIC are going to be able to set up a stranglehold behind that plant? FNS looking to slip. कौन? Just take advantage of that timing. हाँ। Catch a kill with भाई मैं तो मुसला जेट खेलता था, उसके आगे का मुझे नहीं पता। अभी दिखाता हूँ तुम्हें क्लिप में अपनी जेट वाली। अबे आवाज में लैग है क्या? तेरी वीडियो में आवाज कुछ और आ रही, वीडियो में आवाज नहीं आ रही, फिर आवाज बाद में आ रही है। रियलाइज में तो देर से मैंने माइक ऑफ कर रखा है। अबे शिट, अच्छा वो याद दिलाया तूने, अच्छा वो याद दिला दिया। अबे जनता देख तो रही होगी, 7 लाइक आ रखे हैं, उसमें से 2-3 तो मेरे ही हैं। अबे ये चीज इस पे नहीं बताते। अबे अभी कौन देख रहा है भाई? अभी तो सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ भाई। अब लाउड वापस का आने लग गई है गेम में। कौन आया भाई, कौन आया? अरे स्नेहदीप पाजी कैसे हो? स्नेहदीप पाजी वेलकम भाई, वेलकम वेलकम भाई, वेलकम। देख रहा है गेम? बस अभी आया हूँ। अरे भाई अपना ऑनलाइन है। हाँ भाई स्ट्रीम कर रहा है। लिंक है भाई, लिंक चला के प्लीज साइड में खोल दे भाई स्नेहदीप, रिक्वेस्ट। तुम इसकी स्ट्रीम कैसे देख रहे हो? देख रहे हो तो इसी तेरी उससे ही देख लेना, बेटर है। नहीं इसको फिर मेरी आवाज 2 बार आती रहेगी ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कैसे देख रहे हो? मैंने तो आवाज कम कर रखी है तेरे उस पे वॉच पार्टी पे, लेकिन चल रही है वो। प्लस भाई मैंने भी डिलीट भी है। Now Pancada, Sadak and Aspas in danger, and they try and re-explore their options, and OPTIC having none of it. Just Aspas now, and for him, sadly, wrong side. Couldn't have left any time sooner. I mean फोर्स निकाल गए, काफी अच्छा है भाई, काफी अच्छा है, फोर्स निकाल गए। Credit to just the IGL here from FNS, reading that Viper's bit is up. Victor immediately gets. अबे हमारे मैच में ऐसे एरियल आते हैं। हमारे मैच में एरियल व्यू ये तो क्योंकि ऑब्जर्वर स्पेक्टेट कर रहे हैं ना, तो वो खुद से कर रहे हैं। हमारे मैच में एरियल व्यू देके सबकी पोजीशन बता दे। वो बेसिकली बोल रहे हैं हमें हैक्स चाहिए भाई। साला अगली बार आएगा ना खेलने, इसकी आईडी रिपोर्ट मारूंगा मैं। लॉट ऑफ हैक्स। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ किस बात का बॉम्ब है ये, कोई साइड फटती ही नहीं, कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता भाई, बंदे मर जाते हैं लेकिन।
I mean, since they pulled Victor away from Hookah there. भाई अभी तो मैचेस ऑफ ब्रिम्स हो रहा है भाई, लिजिट मार्व्ड पेल रहा है और उनके में भी पैन कार्डा पेल रहा है. See at least here, much earlier on, information probes being sent out. The boombot flash as well. You can just plant the seeds and potentially keep those 3 Loud members locked onto A site. A much quicker peak of the setup out showers this time around. Sassy with great reactive utility. 3 लोग ए पर हैं, ये अच्छा सही कर रहे हैं बी जाके. Noted on either side of the map, they sent out the Prowler and the Flash and got nothing on either side. So somebody going to be kept guessing, noting that Optic will be playing with that, slightly more tempered pace, sitting a little bit safer somewhere. And now with a lot of utility invested towards his B side, it feels so likely. So like posting this. Got to be careful here. Actually, a trade-off of headshots, I think. I think we've seen this lineup before. Yep. Heal हो जाएगा Victor. Well and truly we're ready for it. So clearing site pretty comprehensively, but already going to allow you to know that it's probably sit towards CT or elbow. Site itself should be clear. Now, Victor going to commit. Oh, Victor. You're absolutely right. Seekers Oh, mara. TP taken. Yeah, you're going to at least find one of them. And now 3v4 एडवांटेज तो है भाई ऑप्टिक के पास. और वो लो बहुत हैं. हाँ लो भी हैं वो. And that goes less. They're really running out of options here. हाँ सेव कर रहे हैं. Got to settle for it here. It's another one now. 3 राउंड अटैक में बहुत है भाई. काफी अच्छा है. Nothing left here. I mean, Aspas on 2300, but you see Sassy down on 100, Pancada on 50 credits, even with the light shield. Marv actually looking to apply a little bit of pressure here. We can already see Loud on the X-ray though. Navigate their way towards holding onto these rifles. You noted it. Great reactive utility from Sassy, and actually on both sides here. Perfect timing and Optic explode behind that. Like I said, they respect the showstopper. They back away all the way into elbow, but like I said, the Seekers aren't dealt with early enough. They have the perfect information. पिछले में भी यहीं से पलटना स्टार्ट हुआ था 6-2 के बाद. At the same time. Just literally gifting Victor at least 1 kill and a ton of damage onto the second. But I trust Optic to keep their pick. हाँ, but then ये पिछली बार भी यही लग रहा था कि एटलीस्ट बाइंड तो निकाल लेंगे और 13-10 हार गए थे. और तू सोच भाई, इन्होंने अभी बताया कि भाई अभी तक सोच मास्टर्स 2 और चैंपियंस में अभी तक हार ही नहीं है. लाउड अभी तक एक भी बाइंड मैच नहीं हारी. Towards the side and Pancada left in no man's land. बातें सही दे रही. Tries to find the fight and loses. Victor reigning supreme. Come in, this is just pacey. This is powerful. The other 2 players being considered quite quickly on the flank here. I think ये राउंड पे चलो ऑप्टिक का आ गया. कौन है बे? साढ़े कौन है तू? है आया भाई. आ गया भाई. हमेशा भाई मोस्ट पंक्चुअल नेगा भाई. और थोड़ी देर के लिए हाजिरी लगाने आया हूं यार. पंक्चुअलिस्ट नेगा भाई. पंक्चुअलिस्ट नेगा. थैंक्स ब्रो. मैं सोचा यार लाइक कर रहा हूं. मैं तो वॉच पार्टी कर रहा, एटलीस्ट हाजिरी तो लगा. बस हाजिरी आ जाओ बस भाई. ओए जीतर कैसे हो गया? जी ने क्या शॉट मारा. सब ठीक चल रहा? बस बढ़िया. बहुत बढ़िया. मैंने सुना है तू वैलो प्रो बन गया. प्रो है बेटे हम तो हमेशा से. There is no more like only good players. इसकी आवाज ऐसे क्यों आ रही है? मुझे लगा मेरी बहुत मफल्ड आ रही है. हमारी चल आजा मेरी क्लिप देख तू. उसको बोल. टाइम आउट हो रहा है. हाँ दिखा भाई. सारे वॉच पार्टी में देखो भाई क्रो की क्लिप. वॉच पार्टी में कैसे देखें? नहीं मैं अपनी स्ट्रीम करूंगा डिस्कॉर्ड पे. मेरा मतलब ये स्ट्रीम करेगा तो मैं इसको देख रहा हूँ तो वो मेरी स्ट्रीम पे जाएगा. अच्छा रुक मैं तेरी वॉच पार्टी खोलता हूँ. तेरे को 2 बार आवाज आएगी और 10 सेकंड बाद लेट आएगा. बट हाँ खोल के लाइक वाइक कर दो और साइड में खोल के रख दो. मेरी बात में म्यूट कर दो उसको वॉच पार्टी को. वो तो मैं कर ही चुका हूँ. ओह सॉरी लाइक वाइक तो मैं कर ही चुका हूँ. थैंक यू. ये क्या तो बोलने की बात ना ये नहीं है. ये राउंड था. हाँ हो गया था स्टार्ट सब राउंड. ये किसकी आवाज दिख रहा है?
ये अनुमान माइक अपना वो माइक चौधरी अपना ये क्या आवाज आ रही है? नाइस ओहो अबे तेरे माइक से आ रही है। हेडशॉट बॉय भाई हेडशॉट बॉय ओहो ये बाजी एस रह गया था मेरा बस एस रह गया था मोस्टली की स्ट्रीम देखें किससे देखें देख लिया भाई अनु में देखा तूने अनु में तो भाग गया अबे स्ट्रीम एंड कर दी तू देख रहा था क्या हाँ यार इसकी स्ट्रीम को तो देख मेरी आवाज नहीं आ रही क्या नहीं तो म्यूट था आ रही है खटीकर आ रही है अबे वो बीच में तेरा बहुत वो आ रहा था ओ भाई ये तो पिटा साधक भाई क्या पिटा अभी ठीक आ रही है अभी भी खराब है अब सही है सही आ रही है अच्छा हाँ सही है देखा था अच्छा था बहुत बढ़िया देखो तूने देखा जैतर नहीं यार तेरी स्ट्रीम हो रखी है चल नहीं रही है अब दिख रही है प्ले नहीं हो रही अच्छा अब देख maybe a chance to change the tone of this round across now made spikes on the and the molly as well. They have to go for this. And then वो बच गया एक भी डैमेज नहीं हुआ क्रैशिस को वो टाइम खेल रहा है ना मॉली कर देता तो राउंड वो भाई आई थिंक वो मॉली करने के लिए निकल रहा था बट भाई ये ने लेके बैठा था ऑप का अब वापस तेरे माइक की बकवास अगर पहले मॉली करता बाद में तेरे वापस माइक की आवाज आ रही है when they should rotate because there's pressure on both sides and OPTIC's ability to see how does he still सेव भी नहीं करने दिया भाई does he actually adjust and find that kill भैया तो हमारे जैसा ठुकरे कर just running around loud they're hitting the stride here and I was worried that भाई ये अगर टू कर देना 210 तो मजा आता है भाई 210 होगा तो भाई मजा ही आ जाएगा वो भी टी साइड पे भाई सीटी साइड पे निकाल लेंगे आई एम प्रीटी श्योर सीटी साइड पे निकाल लेंगे अब ठीक है वही है हां अब बेहतर है अब आवाज नहीं अब फट नहीं रही आवाज ओके ब्रदर और सारा स्टिंगर लेके आ रहा है लेकिन वेंचर पांचों स्टिंगर में है स्टिंगर गलत करने भाई अभी तो बफ्स भी आएंगे उसके बहुत बार स्टिंगर कर जाती है जो हैंडल नहीं कर पाती सारे के सारे स्टिंगर खेल रहे हैं भाई पांचों वेंचर लेट्स गो हटाओ यार इन ब्राजीलियंस को निकालो इनको बाहर लास्ट मैच भी भाई बस जीत गए किसी तरह ओटी लेके निकल गया भाई वो लाउड लिटरली ओटी लेके गए थे भाई गिर पड़ के निकल गए वो लोग वो था नहीं उनका गेम ऐसे उधर ढूंढा साला क्रैशिस क्या नूब है बे क्राउच कर रहा है अच्छा वो आज क्राउच करते तो नूब तो है ये तो बात सही करी खड़े होके मारना है यार भाई फिर तो प्रो मैं मतलब भी क्राउच करता ही नहीं हम एग्जैक्ट तू है ही प्रो तू तो है ही प्रो तो हमने तो कभी मना ही नहीं किया देख पिटेगा एफएनएस गया ओह फेक फ्लैश लेट्स गो एफएनएस भाई जो पेड़े क्या कॉल था यार है कि ले ली 10 2 भाई 10 2 होने वाला है मैं लिख के ले लो भाई 10 2 होने वाला है नाइस ये डिले है क्या भाई स्ट्रीम में हां यूट्यूब स्ट्रीम में डिले है स्विच पे लगा ले नहीं वो मेरी स्ट्रीम में कह रहा हूं वो उसकी स्ट्रीम कह रहा मेरे है 5-10 सेकंड का डिले है मेरा fair enough 2-9 now and OPTIC have just been like I said so fundamentally solid. The look at the position they're in now for round 12. Takala was waiting half a week to find that flash. Didn't even we're at know you 1.6. Didn't even know you could hit that. Paper walls. Thanks for showing that, yay. Today I learned. Yeah. भाई 10-2 हो जाए 9-3 कर्स एक्टिवेट नहीं होना चाहिए. Brilliant. Just what none of us wanted. And we go. Not as much information as they'd like on this, but now the confidence brimming with OPTIC. अच्छी बात है भाई एटलीस्ट उन्होंने अपने पिक पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं.
वही और उनके पिक पे भी इतना अच्छा खेल है आज फंडामेंटली साउंड है ऑप्टिक हाँ बट मैं जिंक्स नहीं करना चाहता मैंने पिछला मैच भी जिंक्स किया था देख हम सब जानते हैं भाई जिंक्स फिंक्स तो बकवास बोलने की बातें हैं सारी स्टिल भाई मैं जिंक्स को भी जिंक्स नहीं करना चाहता करेगा यार वो लोग 3A पर हैं अरे वो यही जा रहे हैं अरे यही जा रहे हैं वो ओहो वापस भी They show all of that length. They get, try and get all the attention towards A. Post J up into a 2. लेकिन उन्होंने रीड कर लिया उन्होंने रीड कर लिया He did not fully cross and they're holding the site right now. Seekers go in, they got to try and crunch towards elbow. They need some sort of control. You're going to have the ult come in, try and secure CT. And yeah, going for it again. Trying to find any wall he can just to get the hell through. Nightfall comes in and now Vision is इतना इरिटेटेड होगा सासी भाई विक्टर भाई लेट्स गो भाई फाइनली विक्टर रिडेम्पशन भाई विक्टर की रिडेम्पशन लास्ट गेम के बाद तो भाई बिल्कुल लास्ट गेम के बाद बिल्कुल इफ आई वाज एस्पस मैं कंधे कुछ ज्यादा मर जाता करेंगली हाँ उस पर टाइम भी नहीं अब वो कुछ कर भी नहीं पाएगा deal the killing blow. A 10-2 from OPTIC. Loud left struggling for answers here on map 2. Match low benchot. Let's go भाई 10-2 हो गया. Martin Ye just had an insane half. ये भाई ये शॉट विक्टर का ना और ये वाला भी उसने ब्लाइंड अवॉइड करके मारा उसको बेंचों ओ हो गया 10-2 हो गया हां अब बस पिस्टल जीतने की बात है एक मिनट fundamentals hitting for OPTIC and to wrap up the first half here in map 2 is the analyst desk. Thank you very much. और बेस्ट बात looking convincing with all the disadvantages in this match. कि भाई ये सब उन्होंने टी साइड पे किया वैसे तो बाइंड के तुम टी साइड पे भी अच्छा कर सकते हो बट स्टिल इतना ज्यादा डोमिनेंट टी साइड पे होना बहुत अच्छा है भाई कमी होता है हां 291 ACS भाई अभी हाफ ही हुआ सिर्फ फॉर 291 ACS डबल ACS और मतलब उसकी ये हैफ डिफरेंस कंट्रोलर्स में ब्रिम डिफ भाई ब्रिम डिफ आई डोंट नो अभी रिप्ले आएगा कि नहीं भाई बट तुमने भाई इसका पिस्टल राउंड मिस कर दिया भाई जो माव ने क्लच निकाला था पिस्टल पे सबसे याद करना है क्या Can they push it? Well, let's see if they can do it as I hand this back over to your casters, Pansy and Hypok. And at 10-2, it feels like OPTIC have done enough. I feel like that's a fair assessment. Obviously, it is possible for Loud to be able to close in the scoreline a fair amount. There is those certain key rounds. We look at Mike. But talk to me, have you seen any glimmers of hope here in this map specifically for Loud? I'm going to be honest, there were so few, and it wasn't really due to their own wrongdoings. OPTIC played such a flawless setup, and like I said, it was versatile. They were already prepared for so many different things that just never came from Loud. There was never these crunches coming through that we had seen previously that found success. And early on, Jay and Marv actually creeping all the way out. Push kar gayi bhai. Sleeping. Tuck him in, put him to bed.
Spike will come through, but a man advantage here for Optic. And the post plant's going to be interesting. Do they try and fight back for shower control? I feel like you have to. You can't leave that unaccounted for. And doing it early enough should be quite indicative of this repositioning, the timing towards it. So they've taken a fair amount of space. But बहुत लड़के फ्रेंजी लेके आए साइड देख over push towards CT. और ले भी गए kill. Gonna find FNS and Victor. Now you've got to worry about those other two that slipped the net over by Shower. They've come back around on towards short. They want to try and clear towards Labs. Nice crashes. But the response is instantaneous. Now Martin Ye not going to make it happen. Loud, get things started. More frenzies, more fun. Get the round, as Slicky wants to. हाँ चलता है फ्रेंजी बहुत बड़ी वाला सा चक्के You're not part of the Slug Club? It's crazy. I'm not part of the Frenzy Club. That's for sure. Wow. That's just to put it in context here. Optic a 63% defensive round win rate. At champions here. Now get themselves on. कोई कुछ बोलियो ज़हीर? Definitely come into. क्या? हाँ चल कुल मैं चेक कर रहा था तेरी आवाज़ आ रही है नहीं. Oh. Yeah, actually going to put a light shield in here. See how aggressive he gets with his headhunter. Caught early on here, but Loud have to respect this. Dip away already. Rotate with the spike. Actually, Sadak posted up here. Yeah, he had chance at finding a kill, but we deterred. Yeah, terrifying prospect is just re-peeking the angle. He's still looking for the opportunity here, Ye. Looking towards short now. Could have a fight towards less, maybe? Back on through. Yeah, he's been pinged out, so you can already see the less did spot. Yeah, he's going to pull away from that. Yeah, pinged him as well, so. Yeah. And it's actually a misread of information. They're going to now rotate behind it and look at the spike. They've already sent their way back. भाई पार्ट लिख रहा है हाय आई हैव सीन यू ऑन रेड लाइट किससे बात कर रहा है? Can't blame Optic for this. No, you have to almost overreact here. Yeah. Very difficult to find their way back on here. Only classics the headhunter to work with. Even opt to just brawl for hookah here. Very good read for Loud though. Not giving in. He was like, dip away, get the heal. क्या हो गया गायब हो गए सब? तू भाई अपना थोड़ा वो वॉल्यूम कम कर दे फीडबैक आ रहा है. As it stands, Loud already given them that chance at rotating. मैं वॉल्यूम कम कर दूं तू कर दे मेरी. मैं तेरी कर दूं. हाँ. तेरी आवाज़ भी आ गई ना यार. तेरी फीडबैक आ रहा है भाई मैं उसकी बात कर रहा हूँ अपनी उसकी वॉल्यूम कम. तेरे जो तेरी टीम की वॉल्यूम से फीडबैक आ रहा है. गेम देख रहा है. अच्छा वो अच्छा अब ठीक है. बेटर है हाँ अब सही है. ओ भाई. वैसे प्राइम का रैम्बेट बुरा तो नहीं है यार. भाई क्या पसंद है मुझको. पसंद है तो सही लेकिन वही अब बस पहले का रैम्बेट आ गई है. नहीं बट मुझे अभी मुझे चाहिए ये वाला. अच्छा तो दिखता है ये. अच्छा तो और मैं इसकी फाइनल एनिमेशन की बात कर रहा हूँ जब ये सब ऐसे अंगूठा मारे खोलता है ना उसको. खोलता है हाँ. वो बहुत सेक्सी वो मुझे अच्छी लगती है. वो काफी अच्छी लगती है. हाँ बट दिक्कत ये है कि मैं वो जो वाला पार्ट है ना इसमें ग्लो करता है वो आउटलाइंस में. अगर वो थोड़ा ब्लू वाला समझ रहे तो वो ब्लेड और होता तो. समझ गया. थोड़ा और ग्लो होता और सेक्सी होता. मतलब और थोड़ा ब्लेड वाले और फीचर्स होते हैं इसके क्योंकि अभी ये थोड़ा ना साला कीचेन टाइप का दिखता है. हाँ ये तो बात है ऐसा लगता नहीं कि एक्चुअल नाइफ है. हाँ देख बुरा नहीं लगता बट थोड़ा उस साइड पे ज्यादा है. अग्रीड मस्त तो है वैसे प्राइम का रैम्बेट. इसलिए तो इतने लोग यूज करते हैं. भाई वैसे ऑन द अदर एंड प्राइम फैंटम क्या चीज. क्या भाई पता ही नहीं मेरे को कौन सी है. कोई कुछ तो नहीं गन है. व्हाट ये क्या रिवील है. सुना है गन के बारे में. हाँ उससे काफी अच्छे वेरिएंट्स भी हैं. उसकी आवाज भी काफी अच्छी है. हाँ होगी यार तू कहता तो होगी मैं मान लेता तेरी बात. हाँ भाई क्या राउंड निकाल रहे हैं ये भाई लाउड बुलडॉग से. क्यों निकाल रहे हैं यार राउंड. कोई ना अभी भी भाई है काफी राउंड्स हैं. कोप कर. मेरे को थोड़ी देर में जाना होगा ब्रदर. चले जाइए भाई कोई दिक्कत नहीं. ओके जी बस बता. वो नहीं है चाचा. ना
early information crashes flashing through. क्या कह रहा है? पता नहीं, कुछ कहा ही नहीं। अबे कुछ तो रिप्लाई किया होगा? कुछ भी नहीं। Said it. Convert this bonus. अच्छा। Getting back on. This is where it gets interesting. This is where we start talking about those key rounds, right? The ones that, you know, ये राउंड ऑप्टिक का निकलना चाहिए था वैसे। ये राउंड तो निकलना चाहिए था। भाई देख रहे कितनी बढ़िया बुलडॉग्स हैं भाई ये दोनों। प्रोटोकॉल तो है ही भाई ओपी। ग्लिच शॉप भी काफी मस्त है। You scored a drop claim now or go to inventory. Claim by. कर दिया claim. सही है। ले लिया टाइम आउट कॉल करके। मिल गया कार्ड। अच्छा ये इज बेटर देन एवरीबॉडी, बात तो सही कही। ऑप्टिक तो सही कुछ है। अबे चले माँ की चुत तुम्हारी। गर्ल्स कांट प्ले भाई। भाई if they could play भाई वो कहाँ पर है? Where is girl team? Where is girl? I see 10 dicks here. Okay, that's all. C9 white तो पता नहीं कहाँ है भाई। C9 white. It's funny how C9 को भी ना एक डिवीजन बनाना पड़ा अलग से लड़कियों के लिए क्योंकि वो मेन टीम में नहीं आ पाई। Exactly भाई। अबे C9 पिंक होना चाहिए था भाई इनका नाम। White क्या होता? उन्होंने अपना वो ब्लू व्हाइट किया ना इसलिए। अरे व्हाइट फ्लैग भाई, व्हाइट फ्लैग हार मान रहे हैं। पीस भाई मैच स्टार्ट होने से पहले सरेंडर कर दिया भाई। अभी नहीं C9 वाइट करके पीस बोल के क्या कहते हैं पुश करके मार दिया और फिर एंड में इजी लिख रहे हैं। I don't think कोई वो है लिमिटेशन है ना कि औरतें खेलती हैं टीम में। और भाई ना कल लिखने की जगह किचन लिख दिया भाई। फिर सॉरी फोर्स ऑफ हैबिट। ये कितने 2018 वाले जोक्स हैं भाई ये। कोई बात नहीं भाई, हम भी 2018 में चले जाते चाहते तो। किचन तो जोक यार एवरग्रीन है भाई देख। अबे जो भी फैक्चुअल होता है ना वो हमेशा एवरग्रीन होता है। ये तो है। ये देख मस्त लग रहा है इसके हाथ में प्राइम का नंबर। मस्त तो है। इस बंदे का नाम लेस क्यों है? Because less is more, bro. Oh, damn भाई, ज़हीर, कुरैशी, जी। उसका नाम है सादक। भाई साई राम है वो तो, ओम साई राम। ओम साई राम। Literally भाई ओम साई राम है वो। भाई ये फेड को नर्फ करना चाहिए, बहुत हो चुका है भाई फेड का। ना बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया तो बात है। भाई कुछ ओए 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 अरे और ले मजे बेवकूफी कर दी भाई। एक बंदे के पास मार देता उसको। चलो आसपास अब बचा अकेला 35 HP है। अगर वैंडल से एक शॉट खाया गया ओए उसको लोकेशन भी मालूम है। नहीं पिक मत कर विक्टर। अरे विक्टर लोडू के चौदह भैंस क्या कर रहा है यार, प्लांट नहीं करना था उसको। कैसे निकाल गया आसपास ये? विक्टर ने चारों ने मिलकर थ्रो किया। विक्टर ने नहीं भाई ये ने थ्रो किया था पहले। असली थ्रो तो ये का ही है भाई। शांति से हेडशॉट मार के खत्म कर, घूर क्या रहा है? यहाँ पे भी एडीएस कर रहा और एडीएस भी काम नहीं किया। ये देख भाई आसपास भाई लिटरली तू सोच भाई 1 HP है ये आदमी। एक बुलेट नहीं मारी भाई इसको। तीन लोगों ने एक बुलेट नहीं मारी। भाई ये मैच थ्रो कर रहे हैं, हार जाएंगे बुलेट वाला साले, आउट हो जाएंगे फिर। ऑप्टिक नूब भाई, ऑप्टिक नूब। मैं तो स्टार्टिंग से ही कह रहा था। हाँ तू तो कल से ही बोल रहा है यार। ऑप्टिक भाई फालतू में पहुंच गए यहाँ पे। कल भी देख भाई 2-0 लीड पे थे, उसके बाद 2 ईच हुआ, फिर 10-13 जीते हैं ये। डीआरएक्स भाई डीआरएक्स को खेलना चाहिए था यहाँ पे। उसमें भी ये था भाई, अभी फर्स्ट मैच 8-4 का हाफ हुआ था। फर्स्ट 8-4 के हाफ
8-4 के हाफ के बाद भाई 10-2 से ऊपर आए हैं यहाँ पे। 12-8 से लेके ओटी फिर हार गए। प्लेयर्स ने बहुत थ्रो किए ना उन्होंने, से मैंने देखा है। पागल है भाई, क्या कर रहे हैं? एक गोली तो मारनी है उसको, एक गोली। अब इनके अब भाई एक्सेट ने जो कंस्पिरेसी करी थी कि भाई टेक पॉज कॉल कर देते हैं, अब टेक पॉज कॉल करके भाई विक्टर कहेगा अभी मेरा लैग कर गया था, भाई मेरा लैग कर गया था, भाई चेक करो भाई मेरा लैग कर गया था। Honestly, to give Aspas the first, potentially the second on that short challenge, it puts Victor in a really rough spot. Yeah. Because and again, you never think about these things on the fly, but he gets both kills and gets the paint shot back, which applies even more pressure. बहुत ही खराब। Like I said, he's stuck between a rock and a hard place. Well, between triple and a paint shot. That's actually mad. And I was thinking about actually previously, they come back in on this buy round, and this is where it's concerning. Because they win this. Given the 7th. अरे अर्नव सर थैंक यू। I mean after the purchase here from Crashies, they're going to have under 1,000 credits. Recon Ballet song बेस्ट लगती है। Coming away from round 17. And then you get किससे बातें कर रहा है? Should then find the 8th. I'm already seeing the scoreline being closed. I'm going to be honest. अरे अर्नव भाई है क्या यहाँ पे? The bit where I start hitting was like 8 to 10. Like, oh, that's easy to close. And they just got away with one that they by all rights shouldn't have had. I'm seeing the purchase come through for Crashies, so not sure actually if the tech issue has been solved. Definitely भाई RGX blade भी है। Crashies was the one. We were waiting on. अर्नव दोस्त हमारा स्कूल का ना, वो है उस पे है कमेंट्स में। अच्छा। यही होता है ब्रो, स्किन लेके यही होता है, गेम छोड़ के बस चाकू चलाते रहते हो और फिर पिट जाता हूं मैं और फिर पिट जाते हो। अगर नई नाइफ लिए किसी ने तो भाई इतना तो जानना ही पड़ेगा कि पहले के 2 हफ्ते तुम बस पिटोगे, बहुत ज़्यादा रैंडमली पिटोगे क्योंकि तुम नाइफ निकाल के घूमते रहोगे। इवन CS में यार बटरफ्लाई बेस्ट, तू समझता है ब्रो, तू समझता है अर्नव, बटरफ्लाई बेस्ट नाइफ। अर्नव का फुल नेम क्या है, बंगाली है क्या? अर्नव सक्सेना। अच्छा। मैं तो अभी पिटता हूं हेडशॉट में, बस माय नाइफ 3 महीने से आई थिंक वो वाला, तब भी बाहर में जा राउंड्स में तो जेड की बीट सुनूंगा। क्या पिटा भाई। बट ट्रेड हो गए। यार ऑप्टिक बस हक ना छोड़ दे यार, अब खेल ले ढंग से प्लीज प्लीज। तू तो बोलेगा ही ज़हीर फैक्ट्स, तू स्पेक्ट्रम लेके बैठा है भाई। स्पेक्ट्रम यार बढ़िया गन है भाई। भाई एस टीयर फैंटम स्किन ब्रो, मेल तो बी टीयर है मेरे लिए। खरीदने के बाद भी बी टीयर बोलेगा तो ए टीयर तो कर दे कम से कम यार। ए टीयर समझ नहीं आया, ए टीयर है नॉट बी टीयर। हां बट एस टीयर नहीं है, एस टीयर से वो नहीं है, टीयर तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे लिए। वो नहीं, और प्रोटोकॉल में भी, बट प्रोटोकॉल मैंने कभी इतनी खेली नहीं तो मुझे पता नहीं है भाई। अगर प्रोटोकॉल तो एस टीयर है, प्रोटोकॉल इंस्टेंट है भाई। तो मेरी आईडी लेके खेल लिया करना चाहिए। हां कभी रैंडम खेलता हूं तेरी आईडी से फिर मैं। कभी खेल के देख, प्रोटोकॉल है, फोर्सेकन है, सॉल है, आर्केन है, आयन ऑफ है भाई, क्या चाहिए तेरे को? ऐसा लग रहा है सेल्समैन की तरह आईडी बेच रहा अपनी। भाई मेरे पे ये है खेला करो। ये है वो बेस्ट ट्रेंडी है मेरे पास सर, ट्राई करके देखो एक बार। ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? वो सेल्समैन वो इतनी सेल्समैनशिप नहीं करते भाई, उनको मैं बैड भाई, ये वॉच स्ट्रीम पे जा रहा है, वॉच पार्टी पे जा रहा है सारा माय बैड, आई फॉरगेट।
अरे तो जान दे वॉच पार्टी हुआ है। जस्ट बाय द वे सारी बातें ज़हीर कर रहा था, ये ज़हीर कर रहा था ये वाली बातें। भाई आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। चैंपियंस भाई, हाँ मैंने लिया भाई, बहुत ही बढ़िया गाना है स्पेक्ट्रम चैंपियंस सिंगुलैरिटी एसटीआर अग्री। चैंपियंस भाई एम, भाई एम बॉट है भाई। सिंगुलैरिटी का इतना नहीं बोलूंगा, ओनी भी आनी चाहिए एसटीआर में, बट हाँ चैंपियंस तो मैंने खुद ले रखी है भाई, इतनी प्यारी है। अरे यार कहाँ है तेरी वॉच पार्टी? हाँ ये रही। हाँ आयन शेरिफ पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन जब से मेज पंक आई है रोज सब आई है ना, अब आयन शेरिफ बहुत ज्यादा लाउड लगती है। बट देन मे बी बीइंग लाउड इज अ गुड थिंग। हाँ आयन शेरिफ तो लाउड है भाई, ये तो सही बोल रहा हूँ। बट फिर मे बी बीइंग लाउड इज अ गुड थिंग भाई, जीत रही है लाउड। फक लाउड ब्रो, फक लाउड। फक लाउड भाई। वॉच पार्टी था ये। हेलो भाई, स्ट्रीम की आवाज आ रही है मेरे को अपनी। पूर्ण विराम भाई, पूर्ण विराम। हर चीज स्पीकर पे देखना जरूरी है भाई, ऐसे बात करेगा? कम कर देना है प्लीज प्लीज यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कर दी, अब कर दी, अब तो बंदी कर दी। ले भाई, बाकी वैंडल में एक ही सिंह बाप है, नाम बताने की जरूरत नहीं। यस फैक्ट्स हैं भाई। बेस्ट वैंडल मेरे हिसाब से वेस्टलैंड वैंडल। वेस्टलैंड वैंडल भाई। मैं आपको कहेगा भाई कि प्राइम फैंटम बेस्ट फैंटम है। मैं कुछ नहीं, मैं चुप। भाई प्राइम फैंटम इज द रियल वेस्टलैंड फैंटम। एक्चुअली लेट्स आस्क अर्नव भाई। अर्नव भाई तू बता भाई, व्हाट अगर तू मेरी बात समझ जाए तो। अर्नव चल, ओए अर्नव तू बता भाई, डिबेट सेटल कर। ये दोनों मानते हैं कि प्राइम फैंटम घटिया एकदम, ये और प्राइम फैंटम ये और नहीं भाई। हाँ ये ज़हीर और अनु में और अच्छा ठीक है, मेरे अलावा ये सारे लोग मानते हैं कि प्राइम फैंटम एक्चुअल ट्रैश स्किन है, और मेरे हिसाब से प्राइम फैंटम भी एसटीआर स्किन है। चल भाई बता दे, आज टेस्ट कर दे भाई फास्ट फास्ट। अब अगर अर्नव ने भी बोल दिया प्राइम फैंटम ट्रैश है, तो फिर भाई मैं आगे से कभी भी प्राइम फैंटम बोलूंगा ही नहीं। मैं नाम ही नहीं लूंगा प्राइम फैंटम का। भाई उसने यही बोल दिया कि प्राइम फैंटम लुक्स गुड। साउंड्स की बात होता है यार, फील ना ओवरऑल पता भाई। एंटायर गन की स्किन बट साउंड्स बैड। देयर यू गो भाई, ले ली कैंसिल दैट। फैक्ट्स बोल गया भाई, फैक्ट्स बोल गया। क्या यार, अभी फिर चलो ठीक है, उतनी मेन स्ट्रीम नहीं है, थोड़ी यू नो वो क्या कहते हैं ऑफ बीट टाइप है। इट्स ओके यार, तेरी यूनिक टेस्ट है मेरे थोड़े। तेरी बोट डूब चुकी है, चल मान जा भाई, मान जा। सही है, तो अर्नव नहीं बोल दिया भाई यार। ये दूसरा ऑफ शॉट क्यों नहीं मारता, बार बार हेड एंडर निकाल लेता। बेकार प्लेयर है भाई ये ऑप्टिक, ये कुछ नहीं आता इसको। हाँ भाई ये देख पिटेगा, पीक लेने दे। हाँ ये राउंड तो अभी ऑप्टिक का ही है भाई, सेव कर रहा है वो। अबे एक मिनट, मैं तेरी स्ट्रीम देख के बता रहा हूँ ब्रो। मेरा लेट है स्ट्रीम। हाँ लेट्स गो भाई, 6-12 लेट्स गो। 6-12 भाई हो गया भाई। ऑप्टिक ले गई प्लीज, ऑप्टिक ले गई प्लीज भाई, ऑप्टिक ले जा भाई प्लीज ऑप्टिक प्लीज। में भी मैंने यही बोला था। आई डोंट थिंक देयर इज अ वे टू जिंक्स दिस एनीमोर, सो भाई ओ माय गॉड यार तूने यार भाई अर्नव तूने रिवर ओडिन कैसे बोल दी तूने रिवर ओडिन अच्छी है। रिवर ओडिन अच्छी है, लेकिन भाई ओडिन का ऑप्शन और है ही क्या? ओडिन यार, ओडिन मैंने रिवर ओडिन देखी नहीं, बट मेरे भाई पे है रिवर ओडिन, वो कह रहा था बहुत बढ़िया है, मैंने ट्राई भी की थी एक बार। देख ओडिन में क्या ही है भाई, ओडिन में पता है प्राइम बहुत अच्छी है एक्चुअली। मुझे ओडिन यूज करते शर्म आती है भाई, सच बता। वैसे हाँ ओडिन गनी शेमफुल है बहनचोद। अभी सासी यूज कर रहा है भाई साला आयरन नूब भाई। ऐसी तो मादर चोद है बहनचोद वॉर बैंक कर रहा है भाई। सासी को आयरन नूब बुलाओ चैट्स में भाई। मैं तो बोल ही रहा हूँ आयरन नूब, ये सारे आयरन नूब है भाई। ओ देखो माउट। हाँ देखिए बात तो सही है भाई। वो तो रिवर की इन जनरली रीलोड एनिमेशन वेरी सैटिस्फाइंग। हाँ इवन गोस्ट की भाई, हालांकि रिवर वैंडल की एनिमेशन और रिवर फैंटम की, मतलब रिवर फैंटम की बड़ी गंदी लगती है एनिमेशन, इवन तो सेम ही है, बट रिवर वैंडल की बहुत ज्यादा स्मूथ और पॉलिश्ड फील होती है। मेरे को सही लगती है फैंटम की एनिमेशन ऐसी। जो पहली आती ना गाना उनमें हमेशा अच्छी होती है यार वो। ये तो तेरी बात सही है, तो तेरी बात परफेक्ट। अगर एफएनएस लिटरली 1 सेकंड पहले पीक किया तो वो डेड था, पर भाई माफ लिटरली कभी नहीं देखियो रिवर फैंटम जब तू रीलोड करता ना, वो बहुत ही स्कफ्ड फील होती है, कुछ पॉलिश्ड फील नहीं होती भाई। प्रोज बहुत एडीएस करते हैं फॉर सम रीजन। जीजीज भाई, जीजीज।
जीत हो गया। गो भाई, लेट्स गो भाई। ऑप्टिक अपना पिक ले गई। अब अगला ब्रीज है। ब्रीज ब्रीज भाई, ब्रीज तो भाई वी ऑल नो ब्रीज कैसा है ऑप्टिक का। Fantastic performance in map 2. Again, it's Ye and Marv to lead the charge for OPTIC Gaming. Incredibly impressive numbers coming out of them. You know, literally neck and neck, 18 apiece each with the way they play. ये वाला क्लच कह रहा था मैं। देखा ये वाला क्लच कि ये वाला क्लच? नहीं, जो ये मार्व ने अभी किया पिस्टल का। ओ फिर भाई बना हो गया ना फिलहाल। अभी गेम जाएगा आज से लंबा यार, 2 घंटे हो गए बहन चो, लेकिन सिर्फ 2 गेम हुई अब तक ना। हाँ अभी 2 घंटे में 2 गेम। मेरे को तो पता है क्या फीलिंग आ रही है, मेरे को लग रहा है कि भाई 5 मैप जाएगा। वो लग रहा है 5 मैप्स तक जाएगा। देख आई होप नॉट, क्योंकि भाई आई वांट ऑप्टिक टेक इट, लेकिन भाई यू नेवर नो, क्योंकि लाउड अच्छी टीम है। देख लाउड अच्छी टीम है, वही बात है। अब मैं भी चाहता हूँ ऑप्टिक जीत जाए, बट मेरे को फीलिंग आ रही है कि 5 मैप तक जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है आई थिंक 5 मैप तक जाएगा। बट मेरे हिसाब से ब्रीज बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगा आगे का कैसे जाएगा, क्योंकि आई थिंक ब्रीज इवन तो दोनों का ही अच्छा है, बट स्टिल आई थिंक ब्रीज। मैंने डेथ मैच क्यों किया भाई अभी, और आई एम प्लेइंग ऑन स्प्लिट भाई। नाइस स्प्लिट भाई, याद आती है स्प्लिट की भाई, फील्स बैड मैन। वाइपर साइफर वाली टीम विल टेक द डब्ल्यू। एक्चुअली यार साइफर काफ़ी अच्छा है ब्रीज पे, बहुत कुछ ही टीम्स है जो साइफर खेलती हैं ब्रीज पे। और आई थिंक नहीं, लाउड यूजुअली चेम्बर लगा लेती है अपना, बट कभी कभी साइफर भी खेलते हैं वो। और मैंने कभी भी ऑप्टिक तो नहीं खेलेगी साइफर, इतना तो मेरे को पता है, अनलेस हम कुछ नया देखने वाले हैं। स्पेस ही नहीं है वर्ल्ड ना, वो चेंबर उनका सेंट्रल चेंबर है ना भाई। उनका ये बैठा है ना, वो ये को चेंबर पे लगा देंगे और क्या, उनको जरूरत ही नहीं साइफर खेलने की। बट 100 थीव्स है, और एक 100 थीव्स है, और आई थिंक एक और टीम थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जो एलजी भी करती है। और 100 थीव्स भाई मोस्टली जो मेरे दिमाग में आती है जो साइफर खेलती है ब्रीज पे, और बहुत अच्छा साइफर खेलते हैं वो ब्रीज पे। कह रहा है स्प्लिट नहीं हटाना था, फ्रैक्चर हटा देते काश। सही बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है। एक्चुअली सही कह रहा है भाई। मतलब ठीक है, स्प्लिट में भी अनॉय होते थे यार, लेकिन फ्रैक्चर भी तो चोरी मैप है ना, वो डिप्रेसिंग भाई। मैं दुखी हो जाता हूँ जैसी फ्रैक्चर लगता है। स्प्लिट में मैं दुखी नहीं होता था, वो स्प्लिट मेक्स मी हैप्पी भाई। हाँ स्प्लिट क्योंकि याद आती है उससे कि हाँ जब तुम स्टार्टिंग में वैलोरेंट खेलते थे, और थोड़ी रिलेटेबल फील है भाई स्प्लिट की, थोड़ा नॉस्टैल्जिया रिलेटेबल फील है स्प्लिट की। मेरे को पता क्या लग रहा है, ये ना फ्यूचर में वापस स्प्लिट ले आएंगे। आई होप सो भाई। भाई डाल दो अनरैंक वापस ना भाई, क्या फर्क पड़ा तुमको, मतलब कॉम्प में अनरैंक पे रहने दो भाई, मैं खुश रहूंगा उससे ही। वैसे रैंक नहीं खेलता भाई। अनरैंक में तो डाल देना चाहिए आई थिंक। कॉम्पी से हटा दिया ठीक है, बट अनरैंक में तो डाल, ताकि एटलीस्ट उस पे वैसा टाइप की गेम तो खेल पाए। जीत गई ब्रो। हाँ भाई जीत गई, सही है। ट्रू चेंबर इज स्टिल टू बफ्ड, फेड एज वेल। थक गया हूँ उसके कुत्तों से जूते खा के। या ब्रो फेड नर्फ आने वाला है भाई, सही में फेड तो नर्फ आने वाला है, अब तो राइट में बोल दिया फेड नर्फ आने वाला है। इंडियन एजेंट आने वाला है भाई, इंडियन एजेंट। यप इंडियन एजेंट आने वाला है, वरुण बत्रा भाई। फ्रैक्चर इज ग्रेट इफ यू कैन कोऑर्डिनेट विद द टीम, लेकिन टीम बकवास हो तो 5 जगह से मरते हैं। ये तो है ब्रो, बहुत ज्यादा फ्रैक्चर में बहुत ज्यादा जरूरी है कॉम्स और एंगल्स देखने के लिए, क्योंकि सिटी साइड पे तुम्हारे 2-2 लोग से आ रहे हैं, और टीमें आसान है उनके लिए फ्लैंक करना बहुत, मतलब हाँ है तो सही। अगर तुम टी साइड से खेल रहे हो, बी जा रहे हो, वो अंडरपास से घूम के आ जाएंगे, तो कॉम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। टोनी के इंस्टाग्राम वगैरह पे डालिए क्या लिंक? नहीं वरुण डाल दे, मैं पानी वाला ये वरुण भाई। And 5
तुर्की वैसा एक्चुअली सुंदर जगह है भाई बहुत। इस्तांबुल हाँ जाना है भाई कभी सम पॉइंट पे जब पैसा होना चाहिएगा तो बिल्कुल। ये देखो अभी 5 मिनट का ब्रेक है तो इतने सारे लोग चले गए, नहीं तो मैंने देखा था ग्रैंड फाइनल्स के लिए तो एक्चुअल प्रीटी मच भरा हुआ है भाई स्टेडियम। हाँ भरा हुआ है भाई और क्राउड बहुत बहुत तगड़ा वो मतलब है, अच्छी क्राउड है, बहुत अच्छे रिएक्शंस दे रही है। हाँ क्राउड अच्छी है और क्लियरली दिख रहा है ऑप्टिक साइडेड क्राउड है भाई पूरी। लिटिल सैड एक्चुअली। अब ये तो है NAEU को ही सपोर्ट करते हैं और या फिर एपैक। ब्राजीलियंस फैन स्पेशली टर्की इस्तांबुल में क्यों होंगे ब्राजीलियन फैन ज्यादा? I feel Valorant is unlike भाई फुटबॉल एंड क्रिकेट जहाँ पे फैंस आर जस्ट फैंस बिकॉज दे लाइक सर्टेन प्लेयर। वो तो है ब्रो, यहाँ पे भी सेम है। आई मीन तू देख YZ के सेंटिनल्स के मेजॉरिटी ऑफ सेंटिनल फैंस हैं टेंस फैंस। जो तेरे मेजॉरिटी जो पूरे सेंटिनल्स का मेजॉरिटी ऑफ फेम जो आई है वो सॉरी टेंस और सिनाट्रा। हाँ सिनाट्रा और टेंस की वजह से वो सिर्फ। कौन है ये दोनों टेंस सिनाट्रा? पता नहीं यार कोई है रैंडम प्लेयर भाई, क्या बोलूं। दोनों चोदू हैं भाई। क्या किसी के नाम लेता रहता है भाई। वो तूने वो प्लेयर देखे है बेस्ड ऑफिसर के, और वो कौन है शिजी और वो क्रो, भाई क्या प्लेयर्स हैं। और वो कौन है यार अपना डीथॉर, क्या खेलता है ब्रो। एनालिस्ट चैट में एनालिस्ट है वो खुद कह रहे कि ये जो प्लेयर्स हैं बेस्ड ऑफिसर के क्रो और शिजी डीथॉर, कौन प्लेयर्स हैं भाई? इन सबको मिलके एक ई-स्पोर्ट्स टीम खोल लेनी चाहिए 2-3 साल में VCT फाइनल्स इजी। भाई बेस्ट चलो प्लेयर भाई, तो लीपर को मारा अर्नब भी बैठा ना, अर्नब को बुला लो भाई यार। भाई 2-3 साल अगले साल चल रहे हैं, अलग लेवल पे जा चुके हैं। अगले साल भाई इजी, अगले साल पेरिस में हम ही होंगे भाई। अरे वो इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज करा था, मैं बात निगज इन पेरिस भाई, निगज इन पेरिस। निगज इन पेरिस। अरे निगज मत बोलो भाई। भाई अब तो बोल दिया अब बोल दिया भाई, दोबारा बोल दिया। नहीं मैं ऐसे कह रहा हूँ भाई, निगज मत बोलो भाई। होमीज इन पेरिस भाई। थैंक यू ब्रो। ओए कोई थैंक यू। निगज नहीं बोलेगा। होमीज इन पेरिस, दोस्त इन पेरिस। दोस्त इन पेरिस, us going to Paris like big energy भाई, big energy। या ब्रो मैं तो कह रहा हूँ भाई जैसी हमने टीम बना ली ना, ये वे सब भाई सब गायब, सब गायब। अबे मैं आऊंगा भाई पार्टी में नए भाई में। फिर वो ये से ये आज पिच बन जाएगा सिर्फ। ओह नाइस वन। नहीं मेरे हिसाब से तो देखो यार, मैंने सर्वे लिया, चैट से सर्वे लिया, चैट से सर्वे लेके ही पता लग रहा है स्टैट्स में कि ऑप्टिक का 42% विन चांस है और मेरा 58% विन चांस है। तो वहीं पे पता चल जाता है ऑप्टिक कैसे टीम है, मतलब कि वहीं पे पता चल जाता है हमें बस एक ई-स्पोर्ट टीम खोलने की जरूरत है। अबे इनको बताओ भाई, ये शिजी ऑप्टिक है ना जो अपना को बेटर करने के लिए ना 1v5 प्रैक्टिस करती है शिजी के साथ, 1v5 रीटेक्स कि भाई भाई शिजी को मार रहे हैं यार, शिजी को मारते जाएंगे तो बढ़ता हो जाएंगे। और वो भी मैंने कभी कभी ले जाते हैं, कभी कभी जीत जाते हैं वो लोग। देखो क्यों लगता है भाई, रात रात को अचल के साथ स्ट्रीम्स हो रहे होते हैं भाई, 1v5 रीटेक्स हो रहा होता है, वो लोग खेल रहे होते हैं पांचों, कस्टम में होता है रात को ये। असेंडेंट 2 तो भाई मेरा वो है स्मर्फ अकाउंट। वही तो मैं कह रहा हूँ। तभी शांत होने की जरूरत नहीं है। असेंडेंट राज अभी कल रात ही हम स्नेहदीप के साथ खेल रहे थे और हम वो हो गए, क्या कहते हैं, मैं ऐसी स्नेहदीप को चाचा तू गया पहले, फिर उसके बाद चाचा इसने और मैंने लगाई, हम हल्का सा जीते और फिर चाचा गया तो मैंने उसको बोल दिया कि छोड़ अपनी आईडी से आ जा। हम दोनों अपनी आईडी से आए, 3 मैचेस खेले, एक में बहुत गंदा बटे, 2 में सही, और असेंडेंट 2 और ये इसको डायमंड 3 हो गया डीथर। और डीथर ने कैरी किया भाई लास्ट मैच में। डीथर भाई मैं तो कह रहा हूँ डीथर का रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट है भाई, एम अच्छा है भाई लॉन्डे का, मतलब रिएक्शन टाइम भी उतना ही अच्छा है।
हाँ भाई वो एम में एक्चुअली प्रीटी मच इंक्लूडेड ही है मेरे हिसाब से। नहीं है भाई इंक्लूडेड। आई मीन भाई तू किसी भी नूब को दे दे अच्छा खासा टाइम, वो इवेंचुअली सर पे ले जाके मार ही देगा। तो व्हाई डोंट माउस ही तो घुमाना है। अच्छा भाई। और भाई क्रो तेरे को प्लेट 2 करा दिया भाई एक मैच में भाई, एक मैच में प्लेट 2 बहन चोद 2 से। रुक जा, इसको ये बता, हमने टोटल में 10 मैच खेले होंगे, उसमें तेरे को गोल्ड 1 से प्लेट 2, क्योंकि पहले गोल्ड 1 से गोल्ड 3 हुआ, फिर उसके बाद गोल्ड 3 से प्लेट 1 नहीं सीधा प्लेट 2 गया। आओ कभी आयरन के नज़ारे देखने यार, बहुत देख लिए नज़ारे आयरन के, तंग आ गया हूँ भाई, अब कभी वापस नहीं देखूंगा लाइफ में भाई। कोई अच्छा प्लेयर भी। अगर मैं अभी बैठ के ये को आयरन रैंक पकड़ा दूं ना, वो बंदा भी हार्ट स्टक हो जाएगा भाई। उसको टीममेट ही वो ऐसे तो है ही हार्ट स्टक। उसको टीममेट ही ऐसे मिलेंगे भाई, ये हार्ट स्टक ब्रो, हार्ट स्टक। ये हार्ट स्टक है भाई, वैसे भी सब कुछ एक ही एजेंट खेलना आता है, वो भी हकता है साला। आई मीन अभी उसने असेंट पे क्या जेट खेला भाई, तेरे को देखना चाहिए था, क्या जेट खेला बंदे ने, ये ने। कौन है ये? अबे है यही ऑप्टिक का, पता नहीं कोई मेंबर है। ऑप्टिक ये अभी ये कौन ये? वही ये क्या? वो कौन वो? ये अरे बट ये अच्छा ये हाँ ये बस यही। अच्छा ये बस यही हाँ, ये हाँ ये हाँ ये की तो बात हो रही थी देर से। हाँ तेरे सामने ही ये। समझ गया। नहीं तू कौन से ये की बात कर रहा है? मैं दूसरे ये की बात कर रहा हूँ। मैं इस ये की बात कर रहा हूँ। अरे मैं भी तो इसी ये की बात कर रहा हूँ, तू गलत ये की बात कर रहा है। मेरे को लग रहा है तू गलत ये की बात कर रहा है। मेरे से नहीं हो रहा भाई। यार फकिट भाई, ये नहीं भाई, येड़े भाई, येड़े चाले भाई, एस्ट्रोमेन हो गया या ब्रो भाई। चालने तो वो लोग बोलते हैं, मराठी तो एस्ट्रा मराठी है। आई मीन कलर से तो लगती है। देख टेक्निकली एस्ट्रा जो वर्ड है वो संस्कृत और हिंदी वर्ड से ही तो आया है, अस्त्र। बात तो तेरी सही है वैसे काफी। और वो बोलते भी मराठी की तरह भाई, वो बोलते भी मराठी की तरह है। अब वो है ही मराठी, वैसे कलर भी तो वैसा ही है भाई। बिहाइंड द सीन है एस्ट्रा फुटेज, वो ऐसे बोल रही है भाई, तुझी काई कर तो छी ब्रो छी, क्या बातें करती तूने। राइट को बोल ब्रो, मैंने क्या किया। ऑप्टिक ये सेठ ही भाई, पॉकेट। भाई सेंटेंस भाटिया। भाई तू मेरे को जो बोला, तू मेरे को चूतिया बुला ले, सेन मत लगा मेरे नाम के आगे। हाँ ये तो बात सही बोली वैसे इसने, ये तो मैं अग्री करूंगा। सेन मत बोल, ऑप्टिक बोल ले, 100 थीव्स बोल ले भाई, फेस बोल ले, कुछ भी बोल ले भाई। कल को मेरे को सेन ने ऑफर दे दिया ना कि कंटेंट स्ट्रीमर बन जा हमारा, चल भाई, लेट्स से अचल की फेवरेट टीम भाई, अचल की फेवरेट असेंड शिजी। मेरे डिप्रेस कराओगे यार तुम मुझे। चलो भाई, मेरे पास जाने का वक्त आ चुका है। हाँ जाना होगा। गुड बाय। सैड ब्रो। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय बाय। बाय। सेन सुष्मिता, सेन के तो इतने सारे बन गए भाई। सेन टेंस, नॉट टेंस, टेंस। और सेन सोडाइन, एक मतलब बहुत दिखते हैं भाई ऑनलाइन सेन वाले ट्रोलर्स, मज़ा आ जाता देख के। बाय संगीता बोरा।
डैम भाई। ओ शीश, मेरे को लगा था चेंबर लेगा लेस, भाई साइफर खेल रहा है। डैम भाई, अर्नव कॉल्ड इट भाई। अर्नव कॉल्ड इट भाई, साइफर खेल रहा अर्नव है। कॉल्ड, अर्नव कहाँ है? अर्नव पार्टी में अभी भी? चैट में होगा। हाँ हाँ, चैट में है, चैट में है। लेस एक्चुअली साइफर खेल रहा है। भाई ये आई भाई अर्नव डोंट नो कर पाएंगे कि नहीं काउंटर साइफर प्लेस। करना पंखा मत चलाना बस। Absolutely, well, borderline flawless. चलो थर्ड मैप स्टार्ट होने वाला है। प्रेडिक्शंस डालो बॉयज, प्रेडिक्शंस डालो। आई विल से ऑप्टिक, क्योंकि मैं ऑप्टिक को बैक कर रहा हूँ। भाई देख, मैं ऑप्टिक बोलूंगा लेकिन मुझे जिंक्स नहीं करना, ठीक है ना? और मुझे ये बोल के जिंक्स नहीं करना, लेकिन विल सी आई गेस। ब्रो तू चल ठीक है, मैं तेरा ऑप्टिक ही मान रहा हूँ। हाँ भाई मैंने इतने मजे ले लिए तेरे जिंक्स कर करके कि अब तू भाई बोलता ही नहीं। भाई यार आपने सेंटी कर दिया मुझको भाई बोल के बात। मैं तो कॉल करता ही हूँ, बस वो कभी कॉल बैक नहीं करती। ओ डैम भाई, करेगी बहनचोद, करेगी भाई, करेगी भाई। एफ्स इन द चैट प्लीज, एफ्स इन द चैट। डोंट वरी भाई, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ किंग। मैन एडवांटेज है ऑप्टिक का। आई डोंट थिंक उनको पता है लर्क आ रहा है। डिलीटेड। नाइस, पिस्टल निकाल लिया। ऑप्टिक आर दी ओनली टीम इन हिस्ट्री टू बीट लाउड ऑन ब्रीज। हैं? शीश भाई, लाउड बाइंड पे भी नहीं हारी मास्टर्स और चैंपियंस में, और लाउड मतलब ब्रीज पे भी नहीं हारी थी। तो फिर हारती कौन सी थी भाई? इसका मतलब ब्रीज बैन हो जाता था। डैम। Losses here and there, how many of those are credited to OPTIC? The perpetual nemesis, it feels like, just gravitating towards each other. So hard to avoid each other, it feels, but always providing some of the best games we've seen. There's contacts made. Yay. टैग कर दिया उसने। Way sitting pretty. The other side, Aspas down to 24. No confirmation behind that though, but it being Aspas. पर मैंने आसपास को खेलते देखा है यार ब्रीज पे। बहुत पागल वाले शॉट मारता है आसपास। बहुत पागल वाले शॉट मारता है। No, but they should be able to get the spike planted. They've fought Sadak, and now with that going in, yeah, he's going to fall back a little bit more careful. Crashy's just farming. So far, no threats. And to see if they're able to find enemies, they do try and take steps towards Okay, इनको info है, इनको पूरी info है। All forced away, and only 1 to 4. It'll be back Nice. harder finding Yay. काफी अच्छा nice. Good round. All standing for OPTIC, no problems yet. अब उसकी मम्मी कॉल करती है भाई। TM jokes for the win भाई। ले ली भाई। 2 on the board for OPTIC, 4 left standing. Actually, even if Yay wants to ride this through with potentially just a headhunter, now he's going to throw a rifle in the mix and the light shield.
Crashy's great early progress towards that Hunter's Fury as well. 3 light shields here for Loud. Aspas, Sassy, less. Stacked up here outside B once again. That dart going to be sent towards backside. It should imply that this is a fairly pacey hit if that dart is sent immediately. Oh, he peek karega to. Oh, chalo ek kill to ली इसने. Now Marvel alone. He's now in danger actually. Kind of left by front pillar. Swings it off the flash. Still going to post one back, but couldn't get back quick enough. Less is already Sad there, हुआ taking the side control. Spike can go down somewhat uncontested unless Crashies just goes क्या arrow था यार? through this. Not the case. Placing the Owl drone, spoiling the players. And should be able to start stepping towards the site. No one's watching the cross until then. Sassy going to swing back out, leaving just Victor and Crashies here. To work with, but Crashy's got so close here. Aspas. Oh my God, Crashies! 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 Crashies, bhai! Crashies! What were Loud doing on site? What was being held? Apparently nothing. Beast है यार ये Crashies. Beast आदमी है सच्ची में. For some reason ये बंदा breeze पे 3K 4K clutches निकालता है हर वक्त. मस्ती में भाई, मस्ती में. मस्ती में है ये आदमी. Give me the replay. Whose job was it? Yeah, we're all surprised. Cool, calm, and collected in comms as well. Yeah. Almost the expected outcome. इसलिए लिया bro उसने Vandal second round इसलिए लिया. Loud will be furious. ताकि third round में bonus ना खेलना पड़े. वही. और ऐसे clutch निकाले ये. That's the issue in Marv. Trying to get in their faces, but that's a recoverable rifle. अगर ये आसपास को निकाल लें तो फिर ये राउंड ऑप्टिक का होना मतलब गारंटी हो जाएगा मेरे हिसाब से. ओ एफिनिश की टाइमिंग एफिनिश अरे नहीं एफिनिश One slips through, but that's fine. Sadak tries to backfill it. The tag. That's अरे यार इतना पागलों की तरह क्यों भाग रहे हैं? Still chaotic enough that it could go down either way, but no progress to the site itself. And Crashes, you kidding me, dude? You can't walk main dry. This guy is just filthy with it. Infuriating. Crashes just adding insult to injury. क्या क्लच कर लेगा सादक? Nice try, but 5 HP. I don't think so. Okay भाई, never mind. I mean 5 HP तो वो भी था. एसपस भी बहुत लो था. इसको नहीं पता ये बैक साइड है. आप पता लग. Now he knows. It's not enough, surely. Flash to work with. Still got the fragment. Yeah, he does have the operator, so he'll try and creep onto a close angle. The flash, I think, just landing. See Ye's reposition here, but the knife could change this if Ruru's the headhunter, but Sadak posted up. Ooh, nice. Let's go. Nice try सादक. काफी उसने एकदम सही जगह उसको एकदम सही प्रेडिक्ट किया था सादक ने कि पीक करेगा. बट हाँ. ये वो लो HP है भाई. हाँ भाई. अब मेरे को 2 मिनट के लिए लग भी रहा था कि भाई सीधा हेडशॉट खाएगा ये, बट नहीं निकाल गया. Previously, OPTIC have looked very good in anti-ecos. Oh yeah. Crashes though, making this doable. Again, key damage done onto Sadak. Needed the ace to close things out, but already drawing out a timeout on the side of Loud. Timeout. Poon Viram time. Ultimate progress as well on this first. Let's go, bhai. Hunter's Fury obviously available for Crashes. He's at 9-2 right now. Jeez. An amazing start to Breeze. 4 unanswered rounds. ब्रीज तो मेरे को डिसेंटली बैलेंस मैप भी लगता, तो इसमें मैं ये भी नहीं कह सकता कि अगर इस साइड पे इतना निकाल दिया उस साइड पे इतना निकाल दिया तो कुछ हो जाएगा. It's a little off pace, indecisive, hesitant in some scenarios, and that's so uncharacteristic. That's things you can sort of attribute to maybe map 1 being extremely taxing on Sadak in particular. Oh, I can only imagine. They need some confidence boosts, especially after then getting blown out of the water in map 2. Yeah, you're right. So probably the right time to be hitting that first timeout here.
स्नेदीप कहाँ है यार? स्नेदीप कितना टाइम से आवाज नहीं आई। अच्छा म्यूट बैठा हुआ कुछ कर रहा होगा फिर। चाची को टैग करियो भाई, कहाँ पर है ये? ऑनलाइन दिख रहा है? OPTIC will come in with. Is it the over-aggression, the disrespect, or more patient? आजा भोसड़ी वाले। 3 on the knife there. The knife above the shop actually. अरे नीचे हूँ नीचे हूँ। Eyes on the minimap. Look at Yang. देख रहा था। He's already looking to चाचा को भी बोल रहे हैं। मैंने टैग तो मार दिया उसको। क्या कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है। FNS not challenging just yet. Yeah, but he's got to be careful here. Jumping at the bit on the other side. You can already see the close down Aspas. वो क्यों लग रहा है आसपास ऑन हो जाएगा? ओह थैंक गॉड ये ने निकाल दिया। नाइस अल्ट। उसको नहीं मिला, सासी को नहीं मिली लेकिन किल। ओह विक्टर। बट ये भी बैक स्टैब है। बट साउंड आ गई इनको फुल साउंड आ गई और ये निकल चुका राउंड। कोई चांस नहीं है। is made. Final blow given by Ye, but मैं पहले भी यही कह रहा था कि पिछले जो मास्टर ऑप्टिक जीती थी उसमें भी ये हुआ था। अपर ब्रैकेट फाइनल में हार गई लाउड से और फिर ग्रैंड फाइनल में आके खत्म कर दिया। Starting very early on this, no challenge on mid from OPTIC, giving less that space, but it counts for nothing. It's a very pacey retake. OPTIC reading into actually the tendencies very early on that it's maximum 4. The backstab's coming eventually, but they equalize numbers on site. I want to see if they try and re-explore middle now. They've had a little bit of success with that, and 0 challenge for less. And obviously they were really hard committing towards the side by then, but speaking of hard commit, OPTIC are back challenging in cave. They are just getting under their skin at this point. Well, Des talked about it. Now, looking as if they're spread a little thin across the map. Trying to find some point of weakness here to exploit. Yeah, he actually has the benefit of that spy cam being behind the wall. Oh, he can just get posted on this too if he wants to be. See, the spy cam's not going to catch him. If Ye can post up here. वो पुश ही नहीं करेगा कैम। ओह नेवर माइंड कर दिया। Quick as lightning this guy. Less is gone. And with the reads already on Less, you should see this rotation coming through. There's already 3 members towards A site. You can see now Ye looking to explore towards mid. This is perfect. He's nice shot. Nice shot by Pancada. Hands it out. Yay. Kept in check. That means Spike can get put back in hand, but no free cross here. Marv wanted to maybe police that. Sassy's got his back. Spike now can be ferried across towards the site, but is there a little pocket on the A side that I'm seeing here? 30 seconds okay, it's just left. Victor chilling by the wall for now. Now we're going to have the kind of opposing numbers. The rotation isn't safe either. The Al drone is great. Victor doesn't get away. बच गया Victor. never. ओ भाई रह गया। I thought बच जाएगा। Out of position here. I thought maybe that player who was sitting a little deeper, I think it was Aspas, might have checked on them, but he's towards the site. Oh, इतना close आ गया Aspas. Good choice by Aspas, and Crashy's opting to save. Like I said, we were going to चलो लाउड का एक राउंड आया मैप पे। Even after conceding आज्ञा चाचे। एक सेकंड चुप रहना। With the spy cam just looking to garner some map control, prevent OPTIC from actually doing what happened in the previous round. ये तो बड़ा नाइस है जी। लाउड जीतेगी भाई। भाई 5-0 हो रहा है। तू देख रहा है क्या? हमें चुप करके भोजड़ी के बोल रहा लाउड जीतेगी साले। इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा साले, सब भूल जाएगा तू। पिटेगा कभी ना कभी तो पिटेगा चाचा, मैं बता रहा हूँ। अरे पिछले 5 साल में तूने अपने लड़के के अलावा किसी को नहीं मारा। हमें झाटू साले। लाउड जीतेगी भाई, लाउड जीतेगी। अभी जो हिसाब चल रहा है उससे तो नहीं कह सकता मैं। अरे अभी तो वर्मा नहीं चल रहा। वार्म अप क्या वार्म अप? नहीं मेरे को लगा तूने बोला अभी वार्म अप चल रहा है। नहीं 1-1 चल रहा। 1-1 चल रहा है बट इस मैप में 5-1 चल रहा है बेटे। अरे वो तो कोई नहीं कमबैक करेगा, अभी रुक जाओ देख। ना भाई ऑप्टिक ब्रीज पे अलग बीस्ट है भाई। अबे ये अब ये आ गया ना, पिछली बार हमें लग रहा था DRX जीती बट ऑप्टिक जीत गई।
तो अब ये आ गया ऑप्टिक ही जीतेगी। इसको पता नहीं है ऑप्टिक पे हिट करता है फिर सीक्रेटली ऑप्टिक का लकी चार्म है। What? I don't hate optic भाई। I just hate NA भाई। You hate NA but you भाई but Sentinel's best team। Yes, it has icons like Shroud। कह रहा मैं किसमें जाऊँ, कनाडा जाऊँगा मैं। मैं वेट कर रहा था कब बोलोगे तुम। भाई वैसे सेंटेंस का बस्ट है वो स्टूडियो को भी उठा लेंगे भाई एक्चुअली। अभी शिट एक्चुअली उठा लेंगे वो स्टूडियो को, मजाक की बात भी नहीं है। अब तूने बोल दिया चाचा ना, उनको आइडिया आ जाएगा अभी ये। क्या I'm sure वो टीम देख रहे होंगे वो सिग्नल की बैठ के। अभी स्टूडियो 2 के ने बोला यही था कि अभी रीफ्रेंचाइजिंग होगी, इस चैंपियंस के बाद रीफ्रेंचाइजिंग होगी, टीम्स बनेंगी नई, बहुत सारी टीम्स बनेंगी और वैसे ही सेंटिनल्स का जो हालत है 100% उनको नई टीम बनानी है। और वो हो सकता है भाई वो उनको अपना फेम का होते श्राउड को ले लिया तो स्टूडियो डायरेक्ट को ले लिया, स्टूडियो को क्यों नहीं लेंगे। और स्टूडियो तो बल्कि मेरे हिसाब से बेटर भी होगा, अच्छा होगा काफी, नो डाउट भाई। इन सब से अगर if they get 2v2 on फिर I'll be like you know what I can get behind Sentinels भाई। सेम बस डैपर को हटा दो, आई कैन गेट बिहाइंड सेंटिनल्स। डैपर को हाँ एक्चुअली डैपर हटा दो, आई विल गेट बिहाइंड सेंटिनल्स। कि मुझे रेली की कंप्लीट नहीं है और किसी टीममेट्स और किसी मेंबर 4 के भाई। सही कह रहा है भाई, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है शॉट। ऑप्टिक विटर ले गया भाई, इसलिए तो जैसी लोडू सैसी लोडू हां सैसी लोडू साला ऑडियंस स्पैमर भैंचोद। Ultimately, you push it onto yes, it's a solo hold from Victor, but you slow creep into a site here versus an operator. Yay, even there to pick up a second kill from Archers. ये पानी खाता रहता क्रैशेस। हाँ भाई बहुत पान खाए क्रश कर देंगे भाई वो, मस्त पान चबा रहा है वो, मस्त पान चबा रहा है भाई, फिर वो क्रश कर देगा चांस। सोच वही क्रैशेस के कॉम्स। अरे पीछे देखना, अरे पीछे क्यों नहीं देख रहा भाई। एग्जैक्टली क्या टीपी था भाई, नाइस टीपी। कार्ड बचा के भागा, लाइक बाय बाय। रिफ्लेक्स सही थे, उसने जैसे ही देखा उसने कहा भाई अब ये नाउ आई नो चाचा प्ले चेंबर भाई। सायनारा कि चाचा भी गांड जाके भगता है ऐसे ही। वैसे मेरे को चेंबर में खाली टीपी करना ही मतलब एक आदत डालनी है, क्योंकि ये टीपी नहीं करता। सोच चेंबर की मेन एबिलिटी नहीं करता ये। दोबारा बोल, तेरी आवाज कटी जाती है यहाँ पे, पूछिए दोबारा बोल। मैं कह रहा था चेंबर में मेरे को यही आदत डालनी है, सीखना है टीपी का, क्योंकि मैं टीपी नहीं करता, बहुत कम नहीं करता तू भाई। मैं तो भाई एक हेडशॉट मारा नहीं लगा तो सीधा टीपी पे, मेरा उंगली हमेशा रहती है उस पे बटन पे, एमबीएम पे रहती है उंगली पूरी हेड वाला है ना, तो मैं अटका रहता हूं। कि चेंबर में मैं चेंबर क्योंकि मैं जेट में हूं ना भाई, तो मैं चेंबर खेलता हूं जेट की तरह, लगा तो नहीं लगा बट लेकिन भागना है भाई, एस्केप करना है। सही है भाई, ऐसे ही खेलना चाहिए। टीपी में खाली बाइंड पे यूज करता हूं, वो भी साइड स्विच करने के लिए। हां व्हिच इज अ गुड यूज, बट स्टिल काफी डिफरेंट तरीका है हमारे खेलने का फिर, क्योंकि मेरा चेंबर प्ले बहुत डिपेंडेंट है टीपी पे, बहुत ज्यादा। चाचा मैंने देखे वो ऑलमोस्ट मतलब 80% एम पे खेलता है। मेरे को कभी टाइम ही नहीं मिला गेम के उसमें जाने के लिए। ये भी है। Not initially rewarded, but gets way ahead of the expectation of FNS. Moving in tandem with that Al drone. Second on the board for Loud, but already this half heavily in favor of OPTIC. एक चीज बोलूं, बहुत ही वाइल्ड चीज बोल रहा हूं, बट पता है अगर ऑप्टिक 10-2 कर गई ना तो मोस्ट प्रॉब्ली जीत जाएगी। तूने पहले क्यों नहीं बताया यार, कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दे रहा है तू भाई। मेरे एनालिसिस भाई मैं बता रहा हूं, मेरी एनालिसिस हर जगह चलेगी भाई। अगर ऑप्टिक को इतना मारूंगा ना मैं, तेरे को इतना मारूंगा ना भाई मैं, तू सब भूल जाएगा साले। बस रैंडमली मारने की बात करते शुरू भाई। लाउटी गेंद खुलने वाली है आज। भाई फर्स्ट मैप भी कहता रहा हूं, वो बस किसी तरह निकाल गए थे फर्स्ट मैप। हाँ वरना ऑप्टिक डोमिनेट कर रही थी यहाँ पे भी, डोमिनेट कर रही थी भाई फर्स्ट हाफ में।
Crashies showing restraint here. We haven't seen him lean door yet, have we? There's been barely any challenge towards mid. Yeah. One door pop. It's going to call Marv to attention. Oh, but पकड़ लिया doesn't इसको. know anyone just yet. Flash Surprisingly, होगा. even though there are two players there. And Dry Crashies is peek? posted on this as well. No one really to deal with the main Nice pressure apart from optic. Victor, but apparently he's good for it. But the trade does Trade come हो through. गया. Sassy going to punish as he tried to readjust away. Just a glimpse caught towards Stu, but patience being shown by Loud. They're not quite heading towards the site yet. पुश ही नहीं किया इन्होंने. इन्होंने अल्ट मारा but उसके आगे इन्होंने पुश ही नहीं किया. Actually, the flash might come through this smoke, but Crashies turns it. Les has actually found a kill here. Crashies has to find something in response. Oh my god, Crashies! तब भी headshot दिया उसने. Quite enough damage done yet. Yeah, in FNS, the last two standing. Spike is down, so Loud has the time in their favor. Left's on the swing, and he's been so instrumental in Loud succeeding in some of these rounds. And the Viper utility not really going to slow down the roll here, but this pop flash could be it. Let's see if they feel the timing right. There it is, goes in, and the swing. It's gorgeously done. Sadak leading in that round to perfection. Loud starting to get back in this game. Chipped away at that round score and chipped away at the economy as well. 3 players going to be struggling here for OPTIC. Victor and FNS, the only ones probably to invest here, but remove those ultimates from OPTIC and Loud, like I said, in a position to really string a few together. That's 2. Still got the Blade Storm, still got the Viper's Fit. Sassy actually back on the brink of the Hunter's Fury as well. Nothing on the table for OPTIC. Apart from Victor just being sent to the blender. Aspas was waiting this time around. Oh, यार लेस हमेशा बहुत clean shots मारता है, मैंने देखा है. बहुत clean मारता है लेस. Les looks so ready. Yeah, extremely diligent read from Les. And only Ye to find him. और ये भाई. This default we've been seeing held has actually succeeded pretty nicely. Now, there are still 2 players who can cause a problem. That's a rifle recovered, so maybe a chance at more danger, but the HP's already low for Crashies. And with the spike going down, they've got everything working in their favor. No way that actually lands and kills Crashies. But it does. It does. Even here, you look at what's taken away from this. Pancardo's fallen, but a big cushion. ये तुम्हारा. Well, he didn't hear anything here. Yeah, does he actually check through cannon? But उसने check नहीं किया आगे. Would he have noted that the rifle spike doesn't know when that was dropped, or at least actually collected? So. क्या बे ये भी chamber नुबड़ा bot नहीं लगाता अपना. Play his life and keep that rifle into the next couple of rounds, because we do now have Loud building a little back into this game. This is enough. This is a buffer coming through. So barely costing them anything as well. Hold on to the operator. 4 left standing. Sadak back 2 away from the null command. Still got the Viper's bit. Loud are achieving this with minimal investment. It's just disgusting. Sure. Player standing. Spike planted. OPTIC will pump the brakes here. Call a timeout. So initially it looked like the perfect read, right? They were looking to challenge Les, really get him out of that position, remove that kind of late round piece. Good night, bro. They didn't have to worry about it, and then actually in the rounds they couldn't. They were so aware, hyper aware of having numbers. So the good night, bye. कौन जा रहा है? Knowing where Arnav. expect less Oh, to show his hand. good night, bye. Yeah, and him finding a little bit more activation in this game is certainly paying off now. At 7-7, as we all noted, a very quiet start. Didn't particularly get the ball rolling that early, but already starting to find their footing here. We're being rewarded where OPTIC want to challenge it, honestly. Actually, this is things where, you know, ultimately if OPTIC had maintained that economy, the double operator setup actually does reward this sort of playstyle from Loud. Oh, it very much does, so I don't think they're going to be really looking towards that, though, financially. Just doesn't seem in the cards at all now. Like I said, it was weird to look at it, 5-1, where OPTIC was still actually struggling to buy back into one of those rounds. Yeah, it would have been potentially a different outcome if they'd been able to stabilize the money a little sooner, but... I mean, it's going to be awkward as well. The next round, potentially Blade Storm, but look at what's left after this purchase. And this is round 11, bear in mind. Yeah. So round 12 could be really uncomfortable, especially if Loud don't have to invest anything again. I mean, Loud are laughing. They've carved themselves the perfect start to this round. बच गया भाई Crashies बस. Ripping through 2 of them.
And OPTIC getting a stark reminder that this is not over yet. This series is only getting started. Pancada in the meantime going to collect on Ye. And here's the As quick as lightning, Aspas! बहुत ही इवनली मैच्ड है भाई टाइम पे इजी शॉट्स हग रहा है लेकिन इतने वो तगड़े शॉट्स कैसे फेल रहा है भाई Trying to stay alive. He's just on the run. There's a player to his right. It's just nowhere to get out of here now. That's already got back behind this 39 HP for Crashies, and we already talked about the finances. ना where है Crashies के होगा यहाँ पे कोई with this round, actually Crashies will find one, but Loud have already stacked the deck, have every ultimate available for the next. And Sassy seals the deal. Shit यार ये तो Loud gap cover कर रही है. Just one round separating them, 4 unanswered here. This grit and determination coming out from Loud. I mean, look at this. This is just ridiculous. Oh, it's dreamy. The flick on the second. Oh, show me that one. I could watch it for days. I could watch it for days. They heard you call. They heard you call. बहुत तगड़ा shot था ये. What are you meant to do against that? Oh. Let's say, I mean, the benefit of that round ending like that is there's barely any utility use, right? So this lesser purchase actually doesn't have as many gaps as a long, drawn-out round, right? Yeah, you're right. Just how much Loud to the one saving grace, right? Yeah, brilliant. How's that silver lining? Real thin. But at this point, look at all of where? That's big, though. Where the hell did he just get a that was in cave. Free kill? Fair enough. From stairs to cave. Okay. All right, well, Aspas gone. After having probably the most impactful round thus far. वो main से उसके element देख रहा और मार main. Ooh, nice. Ye is there. Left in the corner, delivers the bullet. And it's Sassy, Les and Pancada, but Les is still such a problem. Wow, now he knows. Hello, there's someone else here. It's Crashies. Oh, the timing! Oh, the adjustment bhai. better. Utility not quite what he wanted to at least facilitate a safe cross, but the spikes on the way. Crashies ने अपना काम कर दिया उसके बाद. I mean, at least skill ले लेता. Damage देगा ठीक ठाक. शीश भाई शीश. ये भाई ये पागल. Come on bro, clutch कर दे. इतनी bullets क्यों उड़ा रहा है? Oh auntie. अरे यार. 6-6 हो गया है तो. We're at 6-6. I mean, how Loud have pulled that off? 5 unanswered to claw back in, and they just looked absolutely lost in the first quarter of this map here on Breeze. Great restraint from Pancada, doubling down on that position. Again, Les and Sassy play it perfectly. Don't give Ye an opportunity with that operator in hand. Tied up, it could not be closer here. The resilience shown from Loud is why they are in the grand finals. 6 rounds, 5 unanswered at the end. The desk, what are your thoughts on that one? Thank you very much, Pansy and Hyper. We know the operator players tend to pop off on Breeze, but there were some nuts shots here, Josh. Yeah, in the first quarter, it was all about Victor. And I felt like, again, we set up this story about pushing on defense for OPTIC. And I think that this head-to-head has ended up defining the majority of this first half. Yeah, it absolutely has. I mean, Aspas making some massive plays to try and get them back into this, especially with his attack side operator. I mean, you just see it in the head-to-head. I think Victor, the early start that he got was a huge defining factor, but credit to Lau for being able to bring it back. Take a look at how Victor was flanking as well. He makes his way around this trap wire so that he's able to get the flank. And this is how I expected the half to play around, with Victor trying to outplay Les and get the better end over the Cypher player, and Loud was still individually popping off. And then in the second half, they just found the rhythm. Yeah, they really did. It was such a step up from every player on Loud, but in particular, Les had a big resurgence, finding those late lurks, punishing OPTIC on the extremities, and giving his team those opportunities to pivot. But as we look towards the second half, he's again the guy that we have to talk about, particularly in the way that he plays as the anchor. He's almost always locking down towards me, very much just defined by how he holds space with the same setup on that site. In
And in their last game, he really got shut down. You see so many of his deaths just in that back corner of B with a Jet diving on him deep, his utility already gone, and him getting taken down. So my focus is on Les to keep his performance up if Loud do want to convert this. Yeah, I mean, I couldn't agree more. I think Les is such a playmaker for them. The guy is really heating up, and he's doing it at such a young age on the global stage right now. He has been the real difference maker in so many of their rounds with clean trades and also multi-kills and opportunities just found with the lurks. I think you can see, as Pansy said, that Loud are getting back into this game. Their belief is showing, the tenacity and grit is all there, and the players are heating up. I think this next half, it should be electric. Yeah, OPTIC, they have to find a way to stop this momentum, or otherwise Pansy and Hypok, it's going to get a little bit dicey for them. I'm still working out my feelings after the Viper cosplay, I'm not gonna lie, Mike. But anyway, 6-6, the game actually could not get closer, and it feels like Loud are starting to believe this is now doable. Because it felt like a shutout at the start, the aggression was right, everything was starting to hit, and then it just, you know, the switch flipped. Now, what do we look at? Where are our key components we look at in the second half of both sides? What are you looking out for that could maybe be the swing factor of OPTIC picking up this map or Loud? I mean, potentially for Marv to come online, he was punished a number of times looking for those kind of pop flash plays early on in the round. So really here, looking for him to ride that. And yes, you can talk about just looking at the numbers there, 2 and 9, but it's the manner in which he was dying. Is there anything Number of to stop times. Ye? No, there isn't. Right. Loud's all the way, literally all the way posted deep on B is 3. Pancada. Now maybe as the wall goes up, they might consider the possibility. Another rotation coming through nice and early. It's Aspas here with the Sheriff. I think CT side में Loud थोड़ा अच्छा खेल लेगी. Could be wrong, but मेरे को लग रहा है तो CT sided ये मैप देखो. Slightly हाँ मैं बोलूँगा CT sided है. Said 4 players have made their way to this side of the map already. Won't see the commit. There's really one out on the Oh, side. दिख गया. अबे नहीं. Danger instantly thrown by Pancada, who gets to TP लगाते हुए पकड़ा गया. around, trying to do some chip damage, but it's Aspas finding Victor. It's all going their way. It's all looking good. The shot to the back of the brain. Oh भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा पिस्टल राउंड निकल गया इनका. He followed up with F&S. Loud strike first in the second half. Great awareness shown as well. Ye actually crosses into that corner closer to the double doors in Tube. Means he's out of range. He can't put his second TP down. There's no fail safe there. Beautiful crunch there between Aspas and Pancada actually. And these Sheriffs paying dividends here in the pistol. Starting to get fired up as well as they take the lead here. Just the light shield here for OPTIC. Yay. 6 headhunter shots to make something work with. Like it might be a fast mid piece on the back of this poison orb, or maybe just to try and post Yay up a little deeper. They've achieved that very early on. Problem being with how deep Loud will play on B, they're just playing off the back of the spy cam, so Yay not going to be given much freedom once he crests this corner. Yes, he noted that. वो टैग करने वाला तो उसने पहले ही उड़ा दिया. ओए क्रैश इस पे क्या लर्क है? भाई प्लीज मार दे. Finds less and noted one towards CT2. Sassy is going to be called to attention. He'd love to get that upgrade if he can. Yes, he does. Even better. And look how Plant भी मिल गया, गन भी मिल गई. Look Loud. They're a million miles away. Just about coming back through this now. Sassy's here, but Spectre in hand. That Bulldog could go to work. Oh, detect कर लिया. अच्छा knife था काफी. Couldn't run him better. Sassy going to try and be brave, be the first man forward. Trade me if you must. We got to get a move on here. There's 4 players watching this cross. That flash forced them all away. Crashies need some help. They've got to be standing here like a shooting squad. Look at them all. Lined up. Dropped. Down. Loud. Oh भाई. काफी अच्छा खेला Loud ने. I mean, how Crashes has got into that position. Yay removes the spy cam and on the back of that draws. But at least plant मिल गया ना. I think Sassy, he's only jump spotting. अच्छे पैसे आएंगे इन पे. Finds the god timing to slip into main. And there's a point there where you see Spectres and dribs and drabs on the retake, and you think actually Crashes can go to work.
बहुत लोग बुलडॉग खेलने लग गए हैं सेकंड राउंड में ना, कि सेकंड राउंड में बुलडॉग ले लेते हैं ताकि थर्ड राउंड में उन्हें बोनस ना करना, मतलब बोनस में एटलीस्ट अच्छा तो वो होगा। हाँ अर्नब ने बोला मैं जो 5-0 से 6-6 व्हाट द फक, अब तो देखना पड़ेगा। उड़ गया दोबारा। हाँ Loud's got Cypher plus Viper in the defense. Won't be easy getting through sites, especially if the Cypher is in form. Massive potential for Ratty Cypher plays on Breeze. क्या timing है बोलने की? Actually. No, he's absolutely not. He's gone down. Sassy's the one to actually get him, but damage done across the board. Both players now swarming the body to get the rifle. Aspas going to get that upgrade. But on the other side of the map, the victory is coming in. Already going to clear out the site from the two players defending it. So you have to look at how much damage Aspas and Sassy can actually achieve. And, well, Aspas is quite quick to it, but this is a difficult plant to try and work your way back in on. भाई मैं 2 मिनट के लिए कमेंट करने गया, वापस आया तो देखा ऑप्टिक भाई राउंड ले गई। तो फक प्रीटी मच ले गई। बट अभी एस्पस अभी एस्पस जिंदा है, मैं वही बोलने वाला था, एस्पस जिंदा है लेकिन उससे फटती यार मेरी भाई। सेम भाई बहुत। ओ ये तो सोवर डिफ था भाई, ये एक्चुअल सोवर डिफ था। ऑलमोस्ट मेरे को लगा था कि अब चलो अब तो निकाल गई क्योंकि टाइम नहीं बचा। देख रहे हैं इसका, देख रहे क्या बंदा है ये पागल भाई। वही ना यंग लोग का ये है, वो है तुम्हारा वो क्या नाम है उसका जो फैनाटिक का प्लेयर है, एल्फायर। हाँ लाइक ये यंग प्लेयर्स इतने ज्यादा डोमिनेटिंग है ना, मतलब एम वाइज और स्किल वाइज। ये नए प्लेयर है ना यार, तो इनको लाइक अग्रेसिव खेलने का मन करता है इन लोग को ना। और लाइक ये भी है थिंग इज कि इनके जो आईजीएल्स होते हैं या जो मोर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर टीम पे होते हैं, कोच होते हैं, वो काइंड ऑफ करते हैं पुश इनको कि तुम खेलो ऐसे। वो स्पेस इनसे स्पेस क्रिएट कराते हैं, इनको एग्रेसिव एंगल्स पे खिलवाते हैं क्योंकि ये ओपन अप कर देते हैं राउंड्स भाई, क्योंकि है ही इनका वो क्या कहते हैं रॉ स्किल्स ही इनके इतने क्योंकि इतने तगड़े होते हैं। हां साडिक ने कुछ ज्यादा ऊपर रखा क्या क्रॉसर। क्यों लग रहा है आसपास को एक किल तो मिलेगी। और नेवर माइंड ड्रोन कर रहे हैं। Oh, nice mob. I don't know how he got both, but he did. Unless he's forced to CT, he can no longer really have any say in the matter. That spike's going down. Now, maybe on the retake, we know that these guys have a ridiculous high standard of capability on these playback ins, but a 3v5 is a really tall task, and Victor is the first challenge you have to get past. If you want in, ping down. Oh no, Victor. Sends it right back to him. अरे finesse. क्या कर रहे हैं लोग? Suddenly not as impossible as it was before. Gonna force the hand that feeds. Sassy gonna try and send this one forward. Does he catch a tag? No, it's Ye in the meantime to find less. The flash slowed down Pancada. It's looking like they might have just run out of time on this. Yeah, that Hunter's Fury does even just one tag onto Marved. Looked like two were lined up there in main. Would have made it doable, but OPTIC respond well. Yay, finding a kill here. Looks like they will equalize here. Pancada can find an exit, but expect him to wait this one out. Vested carry through 2300 here. That's it. Advantage is kind of swinging back towards OPTIC in terms of this ultimate cycle. Well, his ears must have been burning. Look at that entry from Marv. Knowing full well actually with the null command going, he can be traded fairly comfortably with. सासी को एक भी टैग नहीं मिला उस अल्ट से, टैग तक नहीं किया उसने किसी को। हाँ वही सही चूतिया है भाई। क्रैश इज बेटर इन डुएलिस्ट सॉरी इनिशिएटर। क्रैशिस तो भाई गोटेड सोवा खेलता है। Shields as well. Big info once again from Sadak. And a mid challenge coming down as well for Aspas. Gonna spot, I think that was FNS. Yeah, he's already potentially gone outside of the angle. Expected, he's still उसने हेडशॉट दिया उसे। Headshot on the way out. Aspas down to 3, but less gonna help him out.
Oh fuck, but वो ये ना एस्पर्स काफी लो है अब। रह गया वो तो I think वॉल बैंग हो गया ना इसलिए। और विक्टर ले गया। और अब विक्टर भी टैग्ड है। They can maybe work out from this one. We got to look towards Zadak potentially to cost them the cross. मैं भी आया। Has to at least give that one up. The flanks on the way. Aspas coming around on 3 HP. It ain't much, but it could do some damage here. Victor playing up close towards yellow as well. Spike now down. Time in a tick side, but this post-spawn is not comfortable. क्यों मेरे को लग रहा है आसपास किल लेगा भाई, आसपास की वजह से नहीं माफ देख रहा है। वो भी हेडशॉट मारा। Actually going to send that recon bolt through. Sadak still struggling to get anything done through the door, and actually let's switch back to the yellow. He's found the first. Yeah, let's fight some more. Loud right back. अरे FNS taking the lead away. निकाल गई Loud. Tearing it out of OPTIC's hands to defuse the formality to it. I mean, you look at some of these setups, you think Loud that there's no way. Sadak has so much to deal with, so much pressure coming towards him. Unless just slips the net. Gets ahead of that. Sassy with the perfect timing on that backstab. That's even after OPTIC just shows it's literal perfection sometimes. The timing there from Victor to get on the back of that tag onto Pancada, create that opening. But then it counts for nothing. And that was with a Guardian in there, a Bulldog in there. Yeah. Loud made it look easy. Just the timing, the synergy starting to really hit for me when I'm watching how Loud are playing inside these retakes. And it's one of the stats I think the desk brought up at the very start of the day is how statistically strong they are at those retakes. And I mean, you see it so tangibly so often with them, being an outlier on it. So again, wonderful to see that in motion here, but I'm just happy to get a close game. 8-9 now, Loud picking up where they left off. OPTIC financially in a curious spot here, able to fashion a purchase, but it will be missing certain areas. The bells and whistles will not be there, but a couple of ults coming in, so some moments to look towards. The interesting thing to know, OPTIC chat is prime giving flawless. I think actually they're worse in terms of retake success, but it's on defense their ability to find first bloods and convert 5v4s. Yeah. That's the fascinating thing here, because Loud are actually winning out in the side of their game on defense that actually you wouldn't expect them to. That's to say as well that OPTIC actually are close to 70% post-plant conversion rate, which is mad. Yeah. But a bit off the rip here for Pancada. Try and slow down any progress towards B. Does still have less here. See, actually OPTIC were trying to get ahead of this potentially. मेरे हिसाब से अगर OPTIC ये निकाल गई ना, ये वाला मैप निकाल गई, तो अगला मैप भी उन्हीं का है। हेलो सर, हेलो। हाँ, सॉरी, पेरेंट्स से फोन आ गया था यार। Once again down tube. So if they do double back, probably going to be the early warning signal at the very least. The worst, the downfall of them falling away, but not the first time we've seen them explore this, so hopefully it's on the priority list if you are OPTIC to stay diligent. अरे FNS का क्रॉसहेयर इतना बड़ा है भाई, ये ब्रीज पे खेलता कैसे है? हेडशॉट ही नहीं लगते होंगे इसके। बच गया। ये भी बच गया और ये भी अल्ट हो गया, नहीं तो उस पे नाइफ होते। कोई नहीं, अब भी मैन एडवांटेज तो है, देखें इन पे। मैन एडवांटेज और अल्टा मार दिया अब तो देख। बट ये पता नहीं। हाँ, ये देख रहे हैं फ्लैंक, नेवर माइंड, फ्लैंक देख रहे हैं। ओह, एक और फ्लैंक। ओ, फ्लैंक का फ्लैंक दिख रहा था। फ्लैंक का ही फ्लैंक चला गया वो। भोसड़ी वाला है भाई, क्रैशिस भाई। चलो, उनको एक की दोनों की पोजीशन पता, बढ़िया। नाइस। फक यू एस्पर्स। नाइस भाई, उसकी भी फ्लैंक चला गया क्रैशिस। कमाल है, मतलब फ्लैंक ऑलरेडी बंदा फ्लैंक कर रहा है, क्रैश देगा नहीं भाई, मैं तेरे को फ्लैंक करता हूं। ये किल अच्छा था उसका, लेकिन वो रह गया फिर उसके बाद। बड़ा चलो, अच्छा है, एवरी किल काउंट्स और निकाल लिया उन्होंने एंड में।
Now, actually, if OPTIC feel as if they have a bit of freedom in mid, whether or not they actually resort back towards splitting a site. Loud back down on 2 Sheriffs, a Stinger, a Bulldog. Blade Storm available for Aspas though. Zanax immediately through Cave. Huge information. Vital so early on. And it really reassures Aspas he is in the right place for this. Now, eventually we'll have to pay attention towards main. Eyes trained Oh my god. towards mid and he's इसने knife हक दी अपने. Nightmare scene does get at least the stinger, but it's really not much to be writing home about here. Could have done with a kill off that. But the fast flank is in. Now Crashy's very diligent, but I think just missed. Oh नहीं ये क्या? And saying all of this, Sadak, how much more can he do though? It is a 4v3, but the weapon 2 को तो ले जाएगा, उसे प्रेस कर देगा. चलो उसके नाइफ गए आसपास के और स्टिंगर से पता नहीं कितना ही कर लेगा स्टिंगर से. अरे यार क्रैशिस फक. अरे ये गेम तो क्लोज जा रहा है भाई. आई कांट टेल एनीथिंग इसमें. सच्ची में. बट भाई ये मेरे हिसाब से अगर ऑप्टिक ने ब्रीज निकाल लिया तो जीत जाएगी, क्योंकि मेरे को लग रहा है ऑप्टिक हेवन निकाल लेगी. ऑप्टिक यार हेवन आई कांट टेल यार. ऑप्टिक अच्छी हेवन पे. लाउड का डीआरएक्स ने थका दिया था उनको हेवन पे, पर उन्होंने तब भी निकाल लिया था हेवन. हाँ. In the thrifty and back and forth again we go. 9 to 10 now. लाउड को मैं इतना जानता नहीं कि भाई हेवन पे कितना ही अच्छा खेलती है. हाँ मैंने देखा इनके हेवन पे. बात ये है. I just want to see भाई Phoenix भाई. Phoenix Victor Phoenix भाई. Victor Phoenix भाई. Not particularly exploring many other options, which will lead to their own problems. And Loud happy to give it up. Neither Sadak or Pankar. ग्लो कर रहा है इसका. अरे भाई. नाइस. ये ने ट्रेड ले लिया. एक और ले लिया. एक और ले लेगा ये. मैं बता रहा हूँ इसको 3K मिलेगा. लिख के ले लो. एटलीस्ट 3K तो है भाई ये का. Oh, very बहुत ही smart. विक्टर ने बहुत smart था भाई. उन्होंने लिटरली उन्होंने बेट किया उसका पुश. उन्होंने उनकी टीम को बेट किया पुश करने के लिए और फिर एंड और वापस आ गए. लेट्स गो भाई, लेट्स गो भाई यार. बहुत ही स्मार्ट था. बहुत ही स्मार्ट था. बहुत ही स्मार्ट था ये. वो पीछे आया और ये देख रहा था. ये उसका वो देख रहा था कि वो वहां से कोई 100% पुश करेगा. Show me the Victor kill. Like, that was ridiculous to close that out. कितना क्लोज जा रहा है भाई ये. No financial comfort. It's 10 apiece now. And it's scrappy buys in here. We've got an operator with a line. Sassy push कर रहा है. They're both ulted. They're both here. Let's just hold the window, Sassy. माफ बोलेगा साले क्या देख रहा था बी पे. 2 picks back to back. Perfect start for Loud. Even here with FNS in position for this very reason. Sassy isolates Marv. चाचा कुछ नहीं बोल रहा क्या? क्या कहाँ है ये? Already less left to handle B site, at least on the back of the spot. चाचे. Not sure if it was noted there, but मैं तो I will myself come. बहुत बड़ी वाला है ये. वो तो है भाई. Sassy slipped to archway. Planning on playing off contact here, but Victor's come through. Nice kill Victor. Okay. Doable है क्योंकि now just 2, so it should be fine, right? You got Crashies and Yay with an operator though, and a little bit of room to work here. Straight towards the side they go. They want to shut this man down. They want him dead to right. They want him gone. They want him buried. Who dares step forward first? Crashes by pillar. Nice. Trade comes in. It's all on Yay. Now the problem starts to really इसमें नहीं कर पाता ज़्यादा कुछ. आपके साथ यही है ना, आपके साथ you can't take close fights भाई. और प्लेयर्स को हमेशा बैक लाइन में रहना पड़ता है. और वो चाहिए हमेशा साथ में एक प्लेयर. और ये शायद सप्रेस था इसलिए अपना हेड एंटर नहीं निकाल पाया. हाँ. वरना ये क्विकली स्विच करके टैप कर देता था सर पे. Finds that first blood. And then even less there, the contingency plan on it. Such a ballsy play to make here.
Optic will now feel the pinch again. It's actually crazy to just look at the money every single round. They're going blow for blow, Lauren. ये बड़ा कंसर्निंग राउंड है क्योंकि अगर ये उनका बाय अच्छा नहीं है और अगर ये हार गई तो फिर वो उस मैच पॉइंट पे चले जाएंगे लाउड. Between these two sides, both elevating in kind every single time. Another bailout on a Thrifty or an individual pop-up for a really creative play. This is the grand finals you truly love seeing. This rematch fabled now. Let's see if it does hold true to a back and forth. This would be Optics if that's the case. This could be the one to double down on though if you are loud. Make it to 12. Life going in good timing. Should note, I thought maybe 2 there, but actually only catching 1. Well, actually Sadak posts up a little deeper on this. You can see him creeping that way, but crashes in with a spike. Marved has to stand his ground. अरे भाई मार्व्ड मेरे को 2 मिनट के लगा था क्या मार्व्ड. Building off the back of it. With Victor Post, he's got good information on this rotation. At least he's within earshot. That could be the green light though with FNS being nice one Victor भाई गार्डियन से खेल रहा है. It would be looking such an opportunity in the mouth and turning it down. So now already Pong going to come in, but on the other side, अरे वो गया. Hold on, FNS, can he do the dance well enough? Ooh, keeps his life. Good work for him, and now the plant can come through. 10 seconds, none of these shots चलो plant down. any purchase in time. So now it's the post plant. Life भी नहीं lose करी. 5v3 very doable. ये flank पे भी आ रहा है. He's got 3 potential targets in front of him. Headhunter to hand spots. One goes a little astray. चलो भाई कोई ना kill तो आई और अभी भी 4 bullets हैं इस पे. But Aspas has gotten to the site. Jump spot confirms. Aspas भी दिख गया उन्हें. He's got plenty of problems to try and work through if he wants this. No, they're giving him nothing. No, you've been giving him an opportunity. Yeah. Gets around Sassy somehow. Slips past this tube hold. And Optic will tie things up. बहुत अच्छा राउंड निकाला भाई ये Optic ने actually. Hold on to this rifle. Find another one to Ye, but I don't think they can close the distance. It crashes. Mike actually catch him. No. Oh भाई मादर चोद. Back and forth. Look at the timeline. What is that? From the round 17, it's been back and forth the whole way, and you'd think the economy would have had an impact or something, but it seems to go beyond that. It seems to not care if they're on a Thrifty or if they're on a full buy, if they have ults or not. It is back and forth. If it keeps going through this way, though, it should be loud to convert it. Timeout. उनका पहला timeout है ये nice. भाई लाउड का पहला टाइमआउट है ये. अगर इन्हें पहले लिया होता मे बी तो बेटर स्कोर होता इनका. मे बी हाँ मे बी जीत होता तब तक. मे बी. कितना क्लोज हो रखा है भाई. ये तो ओटी भी जा सकता है भाई. बड़े आराम से ओटी जा सकता है ये. The psychological warfare in these early rounds. Loud looking to continue that trend as well. Optic haven't really won out from one of these wide defaults, and Loud are the ones to continuously punish that. It's actually then on the lesser purchases, not necessarily the Thrifty rounds, but the lesser purchases where Optic then look to stack up and hit a side together. It seems to work pretty well. Yeah, it does. I mean, I feel like the retakes have come on their buy rounds, which is like. Huh. Okay, 11-11. Make a wish. This is so ridiculous that we are here. So this should be a loud round. Now, of course, they have a stinger, so fantastic. They seem great with it. Les and Aspas walking mid early on. But the site's completely free. Optic are in for free. There's no challenge. क्या शॉट था. ओ नाइस ट्रेड्स भाई. नाइस ट्रेड्स. बहुत ही प्यारा खेला. शॉट देखा विक्टर का भाई. And now the plants in, and they read it perfectly. They could not made a better guess of this one. Aspas, Sadak, Pancada, anything in the tank here. There's no ways in. They don't have that springboard yet. Where's that first pick going to come from? Look how deep FNS is playing off this as well. I don't know if he's actually playing for a lineup here, but Loud have to find value on site now. Marv's going to close things off with the frag and actually set up for a flash here. Ye will find a kill. No.
चलो GG ये वाला राउंड मतलब एटलीस्ट GR भाई ग्रेट राउंड ओहो मिस कर दिया मिस कर दिया ये भी मिस कर जा रहा भाई ओ बच गए दोनों बच गए इन पे बाय भी नहीं अच्छा ये उन पे बाय भी नहीं अच्छा लाउड पे हाँ लाउड पे बाय अच्छा नहीं है बस फिर क्या है इधर से खेल रहे हैं ना अपने अगर तो ये राउंड फिर की मैच इनका है और मैं जिंक्स कर रहा हूँ बट भाई फक इट भाई ना 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 भाई मैं खुद मान रहा निकालो भाई मैं निकालो खुद सेम चीज कह रहा हूँ मैं खुद एग्जैक्टली सेम चीज कह रहा हूँ I mean मतलब बायर्न का बुरा नहीं है बुलडॉग से काफी बैलेंस कुछ कर लेते हैं ये लोग हाँ ये तो बात सही करी बुलडॉग से भी काफी अच्छा खेल लेते हैं ऐसी बात नहीं है ओ भाई ये प्लीज भाई हटियो मत आसपास पीक कर ले अगर आसपास पीक कर लेगा और ये हटा नहीं weaken the other side, but he doesn't want to overdo it, overextend. This is all guesswork. This is all just consideration. अरे यार टाइमिंग अरे यार नहीं यार टाइमिंग यार नहीं रिवील हो गया भाई रिवील हो गया ऑप्टिक भी तो है भाई वो ऑब्वियसली मेथोडिकली खेलेगी ऐसे थोड़ी ना ड्राइव बिना किसी इन्फॉर्मेशन ऑप्टिक वीक है प्रोज है यार अरे भाई आसपास आसपास को निकाल दो आसपास को निकाल दो आसपास को निकाल दो बस ओ बहन की चूत यार निकाल रहे हैं राउंड यार ओटी ले गए यार ये लोग ओटी ले गए And off towards B we go. Victor and FNS, can he close it or is it OT again? ये किल मिल जाएगी इसको Gorgeous. The kill towards Victor. फ्लॉलेस राउंड यार बताओ यार बट वेल प्लेड भाई वेल प्लेड भाई आसपास में भाई अच्छा खेला भाई बहुत तगड़े शॉट्स मारे आसपास में एकदम सही हर वक्त क्रॉसहेयर प्लेसमेंट एकदम सही There is nothing separating these teams. Far 800-900 credits in some of these purchases. Absolutely ridiculous. मैं तो टू बी ऑनेस्ट चाहता था बस खत्म करो भाई बहुत ही स्लो जा रही है गेम How does he do it? And Les as well, playing his life so effectively. FNS actually gets spotted on the spy cam. Les slips away. And I was hoping कि राउंड जीत जाएगी तो नीचे सुट्टा भी क्या होगा भैंस चोटा बैठना पड़ेगा यार फक अब पता नहीं कितना आगे ओटी तक चलेगा ये वही एक्चुअली फक इट पता है मैं नीचे जा रहा हूँ एंड आई विल वॉच ऑन माय फोन भाई ठीक है तेरे को ज्यादा अगर वो मची है चल तो तू जा सकता है फिर मच रही है यार पेड जगह पे नहीं ना अभी तो अभी टाइम अभी कन्वीनियंट रहेगा बाद में नहीं हो पाएगा फिर बिल्कुल बिल्कुल actively working at that point towards taking space or actively holding the angle, seeing a little bit deeper towards bottom mid. So I wonder if Victor gets any reward for this. I mean, Pancala and Sassy literally just have a crossfire set up right now. They're expecting OPTIC to walk mid. थोड़ा देख के आता हूँ यार फक इट Because out of double doors, but with an operator, how does he actually push through here? He's committing on it. The owl drone just saw it. Does he get to be able to tuck in? I don't think it. नहीं उसने नहीं देखा अच्छा नहीं नहीं देखा उसने नहीं देखा उसने बहुत ही प्यारा स्नीक इन किया विक्टर भाई ना पेनकार्डा ले ओ नहीं वेट नहीं ले लेगा आई थिंक ले लेगा पेनकार्डा नेवर माइंड बट उनको पता नहीं है मिड पे लर्क अप कर गया है आई डोंट नो एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं क्रैशेस देख तो रहा है बट ओ एस्पस को नोट कर लेकिन उसका बॉट चल गया ना चेंबर का Surely he backstabs archers here. Surely. But now though, under so much scrutiny here, feeling all of that pressure coming his way. Lower, nice. Oh, Pancada का वही बहुत अभी Pancada. Nice. Nice trade OPTIC. नाइस बहुत ही प्यारा अब बस मेन पे खेल लो बस प्लीज भाई आप बहुत ही बढ़िया जंपिंग दी एकदम सही किया लेट्स गो भाई क्रैश प्लीज रियल फैन भाई किस तरीके से किया उसने भाई वो बंदा रेडी बैठा था लिटरली
Pancada wins such an important duel with Victor just ahead of this, then doubles down, but Arnav gaya? FNS and I Crashes, think maybe, पता नहीं. हाँ, I think गया हाँ. if Aspas has any other बहुत देर से gun, उठाया नहीं stay उसका. on हाँ. site. He can actually take a fight. Yes, he's got no armor, he's glass cannon coming into that, but he has to reset away with the operator. What a round. Oh, the signs go up as the timeout comes in. OPTIC want some composure, want a moment to walk it through, regain that focus, not let it slip out, you know, find any sort of mistakes. You see Chet is just on that mic. He is talking through every single thing to keep in the forefront of their minds here. Looking like good moves those starting hits. They do have that advantage now after Loud drew this back. See what the approach is here for OPTIC as well. Whether or not Loud on the defense, you know, whether or not Sassy's going to get aggressive anywhere, whether or not Sadak's going to take some space away from OPTIC. Yeah, total pace shift coming back into overtime here, at least early on. Aspas back on that glass cannon. As if he's going to be tasked with holding down Tube, but not going to find anything on the other end of that. Not even Ye. OPTIC is stacked as 5 outside and already poising for a set piece here with the pings coming through, but there's 3 members of Loud right place to try and hold this down, Lauren. 2 मिनट रुक जाओ, बस अभी चला दो. 2 मिनट रुक. This is so much. OPTIC, that knife. Oh, it's one, and it's Ye. That's the worst person. People, but now they're going to see utility committed. But as I said, they started to pull away from sight. Victor trying to get towards the pillar, but he gets caught. क्या शॉट मारा भाई उसने? And now it ain't done yet. उसको ये भी पता लग गया. ओ भाई, सेटअप साइफर सेटअप ओपी. Five still stand for Loud. They've sent them away. हाँ भाई, लेस ले जाएगा क्या ये राउंड? Loud finding the answers in the right moment. Now Ye and Crashies. साला खत्म ही नहीं होता भाई. ओटी पे ओटी, ओटी पे ओटी. और ये फ्लॉलेस निकालते हैं हर वक्त. Destined for another go. Crashies, he's got problems left, right, center. Challenger in front, but probably a bullet to the side of the brain feels inevitable, but he actually gets away. He's got 50 seconds to work. Imagine भाई, Crashies का clutch of a lifetime. What if this happens? Tons of time to play with as well. Leaving B with less down on 11 HP as well. No. Sure. He can't get He's got to go. Okay. So he's dealt with that early. एक बारी में 2. Pull the players back, but he's going to go for a mad rotation now. 20 seconds. Does he have time for this? And actually being spotted with the Aldra to pull Pancada off this. He's got the time to make it to site. I mean, it's going to take a hell of a lot for anyone on the side of Loud to get ahead of this, but he could have Hunt's Fury potentially if he's able to get the plant and then one more. Look at him. Look at this. You know he's got a couple of seconds on this one. Away we go. Plant मिल जाएगा इसे. Nothing to stop it. He's doing everything. Now what do they have? Oh my word, Crash getting a little touch of damage. Sussy got there so fast. 13-13. All even. A beautiful hold by Loud as well. Even though that's essentially a 5v3, the knife comes through, it marks Ye. Like I said, possibly the worst indicator, right? The one you'd almost expect to be posted up on flank control. OPTIC pop on the back of it. Actually, at that point, the fight comes through with the choke point being their demise. Well, that number advantage counts for nothing. El Clasico is delivering. Yeah. It really is, yo. I wasn't... And it's such a unique kind of rivalry that is purely forged from just the amount of times they faced each other. Nothing outside of the game. None of that. It's purely all about the game itself. What a brilliant concept. And what a fantastic start. Aspas again rolling it back, finding Victor and opening up. बहुत aggressive खेलेंगे इस round. They ain't gonna back away from this. One towards the stairs, one towards the top side, over by CT. Aldrone doing its thing, but he's got support there. No one to close down the gap, but this is feverish. The pace! 338, the back of the brain's gonna hurt. FNS is gonna have a headache. And Crashies, Marved and Ye left in tatters here. What do they do with it? अरे OPTIC ये क्या कर रहा है? Flawless. To seal the deal. Damn, bhai. Prime Gaming flawless in round 27. For Loud to go ahead. Animator voice activated. It's Ye on the other side of it this time. Another opener here from Tube. He gets here so quickly with that updraft.
was just getting ahead of the timing. FNS as well. Then you get pinged by the recon bolt or the Aldron, I'm not even sure, but punished on the back of that. How Sadak and Aspas can find any sort of comfort in that position is beyond me. Pure chaos. One map apiece. So many opportunities now in a tag towards Sassy, but Sassy ate that, yeah. Surprised he got to keep his life down to 49. Who takes the advantage in this overall series so far? Yet to be determined. Still chances here for Optic to close it back in, but a patient defense being Dwight. Adjustment here on the utility as well. Les has actually put a trap down towards double doors, I believe. The number of times that Optic led back into kind of that mid-round split onto A side. The other adjustment being Aspas tucked into that corner on the right side of main. Take a glance at the minimap, you're almost feeling as if Optic are leaning this way, especially with the trap set here. And they're going back towards this split potentially. Aspas Victor terrifies me though. Yeah. This guy's an absolute demon, 25 to 60, he's having a highlight game. Victor comes away. There's going to be no secondary layer of pressure here. How'd you get him off this angle? How'd you force him away? Gets suppressed, so he will stand and he'll fight, but that doesn't seem to really fuss him much. इसका dash on हो गया, लेकिन उसके just पहले. They're not even out main. There's been one flash and go, and Aspas is ahead of this. Oh, Victor. Victor. There's still problems ahead. There's still players on the side. It's not the safe plant. There's still someone towards the backside itself. That Carter. Nice flash. Oh, भाई. एक और OT. एक और OT. Pressure moments to potentially take us to 14-14. It's on Sadak and Les to dissuade that narrative. Just one, and it looks like we're going to be going again. This game is not over yet. 14-14. What a fated matchup to go so far. The patience on display. But then the concern comes to जो लोग टिकट्स खरीद के आए हैं उनको तो legit उनके मनी का वर्थ मिल रहा है भाई. हाँ भाई और क्या? Honestly. इतना क्लोज मैच देखना वहाँ पे बैठ के. उसने स्मोक के थ्रू लिया था विक्टर ने. हाँ. That was so impressive. So impressive to clear backside. Even just keeping that your mentality about you in such a high pressure situation. And Mike, I got to ask you about this. Are you seeing this too? The double op coming out here in OT. It's both Ye and Victor this time opting for it. This is super dangerous. Now, do they get to... Oh, the timing on this. Not making the players. Victor's actually anchoring this pressure again. This true pressure has been so good for Loud. So dangerous to depend on, but once again, it's found some validity. But Carter and Sadak. अरे इस बार वो देख रहे थे. Towards middle. And we didn't even see the operators. They didn't even have a say. अरे यार बहन चोद यार. So outrageous, but so good. And now Victor. Victor भी मरेगा mid से. Still has to get past Les in middle. Who's just going to play for time. And Loud once again take advantage. Absolutely backhanding Optic to find another lead here in overtime as we enter round 30. That was a curveball there, but either of those operators had found early value. Could have completely changed this. I think actually Sadak lucky to escape there because I think he's spotted initially. Yay post one blind into that poison orb and he's just out of sight. Yeah. I found glowing glasses for you. Nice. Here. 14. Just donated them, I guess. That's nice. He's off. That's nice. Excuse me. Has he got? He's going to hear the jump spot though from FNS. Optic back on this mid split once again. But again, this also means Please आसपास को निकाल लो. Sadak has to play. I don't think he heard him. Nice on FNS. Oh, let's go. Sadak now all alone. Sadak ले गया लेकिन भाई. I think peak नहीं किया thank God. He can't really play out of here. तब भी ले गया. But he holds on. Back to the wall. He still holds on. And now it's all Crashies का 1v3 clutch. हो सकता है क्या for the game? And only 50 seconds to do something about it. Spikes down. Needs a kill and he'd get Hunter's Fury. Maybe that could be something. He's composed himself here. Reload कर. Full health. अभी भी काफी health है इस पे. He needs one kill. That's what he's desperate for. Another attack. Nah. अरे GG's nice try. GG भाई. GG's. Finally get across the line here. But this is a marathon of a game, Mike. कितना कोई नहीं. निकाला Loud ने भाई. हेवन आया ना हेवन मैच हो गई. हाँ हेवन में मैच हो गई. जाएगा आज से 5 गेम. यही होना था इन लोग के साथ.
round. For what? 6 rounds, 7 rounds? It was back and forth. Absolute madness. Both teams demonstrating just such insane mental fortitude. Talking about Ascent being exhausting. The series is already exhausting. That's the end of map. भाई ये तो legit exhausting map है भाई, मतलब exhausting match है। मैं खुद थक रहा हूँ, मैं देख के थक रहा हूँ। मैं थक गया हूँ, मैं लेट गया हूँ चेयर पे चढ़ के अपनी। वैसे मैं भी लेट ही जाता हूँ यार, सही बात करी तूने, मैं भी क्यों इतनी देर से सीधा बैठा हूँ। 15 मिनट चाहे तो लेट जाकर लेटेगी, अंदर जाकर लेट जा। अगर सो जाएगा मैं उठा दूंगा अंदर को। नहीं भाई, नींद की दिक्कत नहीं है, बस ये है कि वो पीठ भाई बैठे बैठे वो हो गया। हाँ पीठ दर्द हो गई मेरी बैठे बैठे भाई। ओह गॉड फक। जा भाई तू सुट्टा मारा। हाँ मैं आके आता हूँ भाई। मैं भी अभी स्टार्ट होता है अगला मैप तो आता हूँ।
team. Maybe get some up and comers. If it's tier 1, I mean, of course, I want to see how well I can do in like a full scale 3 to 6 month, like really go hard. Yeah. I only played for like 3 weeks. Yeah. You know, I want to see how I do in 3 months. Yeah, man, you want to get a little bit more time in the field. You know what I'm saying? Hey, dude, Shroud, doesn't matter the game, don't matter the event. It's always a pleasure to talk with you, my man. But let's send it back over to Inter and the rest of the desk to break it all down. You heard it here first. He wants to come back. OPTIC Shroud, anyone? I mean, even Shroud is not really believing in OPTIC right now. It's all about Loud now. You guys said it. One more map. And I think the crucial thing that Shroud brings up is that it doesn't have to be this next map. It literally doesn't have to be Haven. They can lose this and head to Icebox. The point is that they are on tournament map right now, and Loud only need one more, and they will have cemented their place in history. And I think it rewinds back to the map pool. You come in with that huge advantage, get to start with the maps that you're confident on, and now you're in a position, you're in a mindset where we only need one map, we only need one opportunity. I think it alleviates a lot of the pressure from the shoulders of this Loud squad, now just being that millimeter away from the trophy. And that trophy, honestly, just moments away, an opportunity for Brazil as a region to carve out history right here in Valorant as well. Before we head into the whole, 2023, where it's going to be much more structured, this is the time to shine now in the open circuit and to make a name for yourself as Loud as, the team that could actually go toe-to-toe with North America and EMEA. The crazy thing as well is that we would be heading to Sao Paulo with Loud with a title as the defending champions, which would just be bonkers. I mean, the crowd would be losing it, but it's not wrapped up yet. And Sassy had quotes before where he was talking about the fact that when you're in positions like this, nothing is guaranteed. And it is still possible that OPTIC win on Haven and Icebox. Things always get crazy in Map 5. And when it comes to Map 4, these two teams have faced each other 5 times in the past. And Mimi, we have never seen a 4th map before. This is the first time. Yeah, it's always this one-sided series between the two. But now we get to head to Haven. And Haven's going to be a really interesting one because for OPTIC, they've been playing this composition with the Phoenix that pretty much no one else has been running. It's off the goop. I know. But it's been working somehow, Josh. I've been a massive Phoenix hater this whole event. They have some really cool game plans that have made this work against some really good teams. They've beaten DRX here, they've beaten Nexet here, but the issue is they've shown it twice already. And I think, honestly, the big takeaway for this upcoming map, and honestly Shroud was kind of hinting at it, is the IGLing, I think, for FNS. The way that they approach this map of Haven, OPTIC have a really great idea of how they want to play the macro game, how they weave in and out of the defensive setups, and find those openings to really exploit. When you look at how he was performing individually on Breeze, and I'm talking about FNS here, I think the amount of bandwidth he has to put towards the IGLing is reducing his ability to frag out here. But it doesn't matter as much on Haven, in my opinion, because he's got the Killjoy utility that he really plays around. He doesn't need to be that big fragger and the guy that pulls up the hero plays. But I agree with you. It feels taxing out there right now for Sadak and for FNS in terms of, I mean, these games are going so deep. There are overtimes, adaptations between the two. It's just so much to try and keep track of the deeper you go. And Auspice, the man that you see just big chilling with his dogs right now, he's the guy who on this map is going to continue to be enabled as a star. Last time it was the Jet on Breeze. Now he heads towards the Raze with the composition that has the Fade, the Breach in there, all this utility to set him up for success, to find value from his utility in the early round. And OPTIC, their composition is not as good in shutting that down, so I think he has a great opportunity to thrive on Haven. Yeah, it's really interesting actually looking at, I mean, OPTIC's comp is just wild to start with, but what's really intriguing in the last couple of times they've done it is that, you know, Victor is playing, they're playing a defense-sided comp in theory with the Chamber and the Killjoy, but Victor seems to get way more value playing the Phoenix on attack. And that's not always going to be the case with Phoenix on defense. There's a lot of good places to play it, but it just seems like he gets more value out of going aggressive on those site hits. He had something like 10 kills in 3 rounds against DRX. We're heading to the Prime Gaming Agent Select here. No one so far in this tournament has been able to get more than 6 rounds on this map against Loud. It's going to be a tough task for OPTIC, Mimi, especially if they decide to bring out that Phoenix again. Yeah, do they go back to it? It's the big question. They haven't had a lot of time, so I don't expect a change, and there will not be one. They head back to that same composition. Yeah, and I think this is going to be a really exciting map to potentially decide the series, but to potentially bring us to the map number 5, because it does come down, again, just to reiterate it, the IGL head-to-head, the way these teams are adapting to each other, FNS and Sadhak, one against another. We've also seen, if you think back to Copenhagen,
the final map was a bit of a punty composition out there from Paper Rex, and the regret that was potentially felt there as they picked an unconventional comp and lost with it. We might see a similar thing again, where all of the narrative coming out of this is, why did they go for this crazy comp on Haven? But it's worked in the past. Can it work here when everything matters? The last elimination game they played, the final map, they pull out this composition, they pull it over the line, they qualify to this grand final. They're punting on it again, and if it works, it could be something legendary. Well, this is match point, series point, potentially tournament point here for Loud. They're on the edge of making history. Over to you, Pansy and Hypok, for map 4. But if this series is anything to go by so far, it should be far from a clear-cut case. We've had OTs, we've had crazy turnarounds, we've had some clear-cut map results in there too. But Mike, we stand on the verge of potentially Loud now taking this, right? This could be their इतना बड़ा opportunity now coincidence है to कि मैं truly just claim अभी their गया title था और and मैं move जैसे ही it मैंने forward. headphones put on किए भैंचो तेरे हंसने की Tell आवाज़ me some hope you Literally, get for Optic. Tell me what they got that they can change this. Because game as it all stands, it's Loud winning this thing. I mean, call it hopium. We're relying on Loud still not getting Oh, a sorry, solid मैं वो grasp मेरे on भाई how को मैं game Optic खेल want to apply this composition. And Victor's been great. तूने देखा भी I mean, the मतलब pressure he's able to चाचे create कैसा from गया Ultimate पिछला Team मैच just on some of the हाँ देख रहा था मैं सारा देख utility रहा alone. They have some really, really काफी cool क्लोज little बट लाउड sectors काफी अच्छा खेल behind रही But बट फिर ये है कि हेवन like I ऑप्टिक said, का they've had अच्छा the है बहुत opportunity to sit back and watch this वैसे now तो and ब्रीज भी defend. था ऑप्टिक का अच्छा And बट well, मैं कहने वाला था happy to बट लाउड का play बेटर है unorthodox ब्रीज and उस सेंस में क्योंकि लाउड upset the सिर्फ rhythm ऑप्टिक से हारी है ब्रीज पे some of किसी भी these टीम से नहीं rounds. हारी That's ब्रीज पे what's going to be tested here on Haven. Looking fairly all in. Initially तो here ये for बात Optic, है it's only one बट member. हेवन Loud Sassy. मैं ऐसा स्पेशली नहीं जानता कि हेवन बहुत अच्छा है लाउड का बट ऑप्टिक का अच्छा है Close enough, तो but लेट्स सी no early burst from Optic. इनके पास रेज है मेरे को ये देखना है रेज कैसे खेलेंगे आजकल लोग रेस भी लेते हैं हेवन पे Quite concise. EU स्पेशली EU और क्या नाम है इसका Clearing out APAC those corners on towards sewer, but no one really paying much mind to it because we see it. Louder playing a little bit deeper. One towards CT, one towards Heaven. Victor going to take the space, force him away, and actually take that space himself. Doubling down on that, it's also Crash. क्रैश इस टैग होके आ गया बट टैग करके भी आ गया आई थिंक बट ज्यादा नहीं Victor and FNS all a little chipped up. तो 500 बच्चे हैं Chacha is back. What? Yes. वह पूरा मैच देखा मैं जिता के अरे भोसड़ी के तू तो भाग गया था यहाँ छोड़ के भाई लाउड को जिता के गया हूँ मैं चले गांडू चल गांडू बोल तू चल चल कर वो जीत थोड़ी जाएगी ऑप्टिक उससे पर लाउड जीत जाएगी ये मैच जीतेगी भाई जीतेगी भाई शिट चाचे तेरी गांड खोलूंगा ना ऐसी मैं चाचे अगर लाउड जीता ना तो तेरी गांड फाड़ूंगा और अगर आपने जीती तेरी गांड खोलूंगा फिर मैं इधर तेरी मरेगी भाई यस करना चाहिए मैं आई एग्री विद भाई आई एग्री विद नहीं जीतेगी भाई हाई स्टेक्स भाई अरे शिट रीजन बोला था ना ब्राजील को ऑप्टिक हैव नेवर लॉस्ट अ टीम ऑप्टिक नहीं वो उसने बोला था सेंटिनल्स डैपर ने बोला था नहीं ज़ॉम्स ने क्या बोला था जब वो क्रू के अगेंस्ट फाइट था उनका तो उसने बोला था लैटिन अमेरिका शिट रीजन और फिर क्रू से पिट के एलिमिनेट हो गए थे भाई अबे ज़ॉम्स चूतिया है भाई लोड को अच्छा है वो And what a reply would that be? Revenge truly served best when it's cold. At this point, already. मुझे ये बता कि अनुमे की आईडी क्या है बेल्ट ऑफिसर के वाले की मेरे को भी नहीं याद प्रोटेक्शन रखी मेरा क्या हुआ आई नहीं कुछ भाई ले ली से सीने नहीं मैं इसको कह रहा था क्या करेगा आईडी का इसको वो खेलनी है मुझे डेथ मैच खेलना है मुझे इसकी गन ट्राई करनी है फैंटम उसके पास कौन सी फैंटम है अच्छा वो प्रोटोकॉल अच्छे है फैंटम ट्राई करनी मैंने अभी तक खेली नहीं उससे यार यहाँ पे किसी के पास नहीं है नहीं मैं कोई नहीं खेलता है प्रोटोकॉल तेरे उसमें ये स्टोर में नहीं मैं ऐसी ट्राई करनी थी वो कह रहा था एच टीयर है मैं कहा ठीक है सर्वर में पिंड हो गया देखना पड़ेगा नहीं ऑफिसर के नहीं है शायद हाँ उसने उसकी पेंट नहीं ऑफिसर के का यहाँ नहीं है बट उसने मैं उसके अकाउंट से लॉगिन कर चुका हूँ मैं भी भूल गया उसका क्या था कोई नहीं सर्च कर ले कहाँ लिखा था उसमें डिटेल्स नाइस शॉट भाई
Rewarded for the early setup. Nice shot or nice And that's TP. just all on the back of that smoke. That smoke draws crashes in FNS, puts them on high alert, and less punishes. Theory's fantastic. Watching it pay off in real time, just perfect. मैं protocol लूँगा तो इसकी So they are लूँगा. reconvening over towards the A side. हाँ मैं भी लूँगा तो. Space taken by FNS. मुझे चेंबर मेरे को यहाँ पे एक गोली चलाने दे. Side two. Yeah, gonna kind of linger around middle. गेम खेल जाएगा ये भाई. Not necessarily a bad call. Correct call as it stands, noting that we do have this less on the other side, sat deep towards kind of the stairs, almost CT, back up. गोली मार दे भाई गांड में उसके. I do wonder if they try and get someone potentially early towards CT or get a little ahead of it. What? And it looks like they're trying that, absolutely. Feel they've been given a little bit of freedom here. How much space do they try and take? Finesse trying to maybe set up Victor a little here, but see how diligent they are on the way back in. Once again, Loud are notoriously good at this. FNS caught on that one, and actually the Armstrong Oh bhai, Loud. Sadak and Lester found kills. Aspas over the top. Loud. He's found Yay. He's found Mark. Bonus निकाल लिया भाई. भाई एक भी बंदा नहीं मरा. खाली मतलब एक have बंदा. a talent, and you are watching it in droves. Look at the HP bars. Barely breaking a sweat. They create that early advantage. Sassy as Never well, mind भाई, and take that's back it. के भाई. A tag Most onto of the Les. OPTIC जीतेगी. It's all peaches and cream for them when they're working back in like that. I've never एक सेकंड ये मैच जीतेंगे तो खत्म नहीं हो जाएगा. हाँ खत्म हो जाएगा. ये मैच अगर Loud जीतेगी तो हाँ खत्म. And it's all on the back of this early setup, removing crashes. Prize money कितना है? $1,00,000. $250,000. Once again. Ooh, nice. It's 2 लाख मतलब. 2 lakh. कम है. That's the plan from the get-go. You see, as soon as that first one's drawn, compared to they know they have CS. the 5v4, they have numbers भाई compared to भी तो इतना होता. they reset back CS into में the भी retake setup. 250 होता है, but कुछ major events में $500,000 होता है. Guardian, 2 stingers to work with here for OPTIC. I think मैं अब तक पहुंची नहीं Valorant in terms of monetary को. I mean काफी close आ गई है तब भी, क्योंकि बहुत मेजर मतलब CS को अब उसके इवेंट्स होते हैं जो मेजर लाइक ही होते हैं, बट एक्चुअल मेजर नहीं होते क्योंकि वैल्व उनको मेजर का टैग नहीं देती. तो ऐसे मान लो जैसे बाकी मास्टर्स हैं और एक चैंपियंस है, हो सकता है. तो उस सेंस में शायद चैंपियंस जो उनका मेजर होता है उसमें शायद उसके ज्यादा होता They're है. going to force less off, and as Could the be spam wrong. comes through, Victor, he's found the kill. But Sadak's here. Sadak is here and they have no idea. They have absolutely no idea. ओ भाई हक दिया. ओ नेवर माइंड सैडक भाई. FNS falls quickly to the frenzy, but he doesn't get it. Where's the spike and all that's being planted? That's going down. चलो OPTIC ने निकाल लिया. Made तुम something आगे हो out of क्या? nothing in this one, OPTIC. Didn't have the नहीं best थोड़ा buy, बहुत but रहता है आगे पीछे. made it work. अभी मैंने में निकाला OPTIC का. So much room to try and clear through and so little क्या round? concept as to where they are. हाँ मतलब 2 किल हुए ना OPTIC के, तुमने बोला कि निकाल ली. Close contact, still got 2 flashes to work with भी हुआ actually. मेरे में. मैंने 2x कर Close लिया. range here, the Stinger going to cause real problems on the way back through onto B site. वो जो 13-3 हुआ था कौन सा? Sassy going to try and find something here at least. We'll catch one in the seas and going to pull the trigger now. Finds Aspas. Sassy trying to get away with this. अबे क्या कर रहा है? Potentially Save a कर little लो. bit of damage, but 4 on the round वो for पैसे Victor. उन पे बहुत हैं. उसको ये था कि उनकी इकोनॉमी डैमेज करो प्लस गेट अल्ट किल लेके. Stingers and a little bit of aggression. That's even with Sadak getting into potentially a deadly position behind this. So See the amount again, of pressure Les is under. Lovely work with the paranoia and the catch and the commitment behind it. Chasing that down, but you're right. It was Sadak that I started to get nervous about his presence being there. He could have potentially read किया crash maybe इसने. more. Wasn't the case. Victor outdid him. He's got the running back on nice and उसको quick भागना as नहीं well. चाहिए So this था. is exactly what Les you'd को. want if it was the OPTIC. Utilize this Phoenix मैंने to its देखा नहीं best क्या हुआ था वहाँ पे. potential. जब उन्होंने पुश किया तो वो राइट में लेफ्ट भागने लगा था ना. अच्छा वो हाँ भाई इतना खुले में, ये हर वक्त खुले में करता है. ये शायद मैं जानता हूँ क्यों कर रहा है इतना खुले में, क्योंकि उनका पीक बेट कर रहा है बेसिकली कि वो पीक करेंगे और अपने उसके टीममेट्स बैठे होंगे ट्रेड करने के लिए. There was nowhere to run for him and nowhere to hide. The spike now going to be delivered and the plant going to come through. What? What भाई? Come on. Sadak found that kill? How? ये क्या The था? Rolling Thunder gets ये close क्या to it था as well. भाई? Aspas looking to close the distance, but आसपास घुस भी गया अंदर. Just catching his shins on the way through. What? The fight's still और ये भाई Of course he does. निकाल गया ये. निकाल गया It भाई doesn't माउंट. matter. OPTIC regain composure in this सही round. है भाई Only ये, losing 2 और for माउंट निकाल themselves, गए. but finding form अबे here. डैमेज to भी close खाली the कितना gap. 13 running हुआ back था. creates so much pressure. The C site completely abandoned. There's so much pressure coming on to B. ये भी बहुत क्लोज It's मैच Les होगा. to be the one to feel that लग heat. रहा.
ये तो 5 मैप तक जाए भाई हो सकता है 5 मैप तक जाए See sight and also it's just one kill that defines this round. Actually, even with the funds here, it's just the rifle for Aspas. A couple of stingers here for Loud. OPTIC revert back towards A lobby here, and yeah, he posts up with the operator. Aspas and Sassy, you can see him on the X-ray. Here. Just holding on to the angle though. Aspas conscious of that rifle. This time he's sharp for it. Nice shot, bhai. It's taken away more than just the tip of the spear. That's Ye now. Moved. Again, making so much damage on rounds like this. Like, look at the buy. It is stingers. You know, the headhunter for less sure, and the rifle for Aspas, but being able to activate him of all people is essential to outcome. They're standing and fighting on this one, but they have to respect the paranoia committed. And now you can see half that by run का ताकि अगले में अगले के लिए हो पैसे. Players kind of peeling away from the A side. They're ready for the speed fight. Oh my god. Aspas, he is making himself oh my such god. a problem. The paint shell on the way out, but he's done the damage. FNS has 3 to 5. Oh my koote हुए class. Sadak just throws himself at him. Another thrifty to flip this back, and Sassy's utility completely shutting down this audible towards B site. And the rifle paying dividends in that regard. Decay just absolutely blindsiding OPTIC. Catch it. Precision kill. He up now as well. The fact he was so present in this round, Fnatic? he's the only one with the rifle, was brilliant. Really good to see him take that space. देखा नहीं. Taking the A at the start, quick rotation onto B. Really, really good, and maybe rinse and repeat. Let's see it. Yay. What's the challenge? Posted on that angle. Yeah, he was waiting. Oh no. Nah, बच गया I'm out. Careful, he's going to eat a ton of damage there. Down to 63. Oh, they're exploring sewer though. Sewer push कर रहे हैं लोग. I think going to set them up for this, but doesn't catch. And neither did the Prowler. Yeah. They don't push through, but at least denial of information there. Oh भाई, eventually दो लोग इतना spam करने का किसी को तो kill मिली है. Finds the headshot. Victor now trying to get behind this. उसको मिली, पैन कार्ड को मिली. Slip into a more passive angle with less to complement that. With that पैन कार्ड ने crash इसको मारा. He's still exploring towards A. Loud been happy to give this up. Because they can take it back so easily. Exactly, yeah. Never team looks so comfortable in these retakes. Victor doesn't win out either. That's a problem. They're down pretty substantial numbers. Marved noted super early, down so low, and this retake again still looking as refined as ever. FNS at least going to be back looking a little healthier, but yeah, only good for one. Now it's on FNS. He's got so many problems, he can't get away from any of them. Loud once again proving retakes are just one of the skills that they truly have honed. Yeah, they've really got their finger on the pulse here. They know exactly when to re-hit A site. Like I said, on the back of creating these early advantages, they know that they can come back through and play the trades. It doesn't even come to that. It's the second time where there's 4 people left standing to retake A site. OPTIC, they have to answer back here. There has to be some form of adjustment. Because Loud are playing into, they're giving them the tools to play into their hands. The benefit of nearly a full house of ultimates here. Victor just missing 2 for the run it back. क्या म्यूजिक डालते हैं भाई? ये कौन है जो इनका म्यूजिक डालता है? मुझे चाहिए कि म्यूजिक है कौन सा, कहाँ से सुनूं मैं ला गई लूप पे बार-बार पूरा दिन. आ नहीं रहा है क्या मतलब? वो तो मिल जाता है. टाइम आउट. वो तो शज़ैम कर लो. बट ये आई थिंक टाइप करके भी पता चल जाता है. क्या कमांड है वो? क्या कमांड से पता लग जाता है? वैसे ट्विच पे क्या? हाँ कि मैंने कहीं देखा था कोई था कोई वो चैट में कोई कमांड लिख. वो डिपेंड करता है कि कैसे स्ट्रीम है. पता नहीं इसमें काम करता नहीं करता. सर्च कर ले मिल जाएगा. Effectively 4 people on site with free roam of where to set up utility. And they still can't convert. So they need to nip this in the butt early on. I mean, we're already in round 8. I say early on. This one's already spiraling out of control if you look at the nature of some of these round victories. Actually, now to take into account, yes, the ultimates are there, but
the funds starting to dwindle for Optic. Well, the tournament to offset that here, but it's Victor at 2,700 and Crassy's at 1,700. For me, I like the pace when we saw those B hits, you know, that C split that came through as well. That seemed to work well enough. You need to have a brawl in this, because if you leave Loud alive, they will absolutely destroy you. And again, they're getting creative, they're getting more aggressive and assertive, pushing down along. Aspas gonna add insult to injury. As soon as, of course, the reasonable answer would be to adjust and look towards C, look towards B, where they found success. There's already a stack there, and you've already lost the back line. Victor trying to slip up behind this. He's posted up. Les will punish. Marv actually finds Aspas elsewhere. Would they back away though? Now Les to be against the ropes here. Spotted out by Marv as well. Actually, Aftershock misses. देख लिया कहाँ पर है. What more can you do? Phoenix है ना मेटा में ये लोग. Deleted crashes is क्या there. There's still a player on Phoenix मेटा में है ना तब इस मैप पे बफ के बाद. हाँ मतलब अब तो हो गया और ये लोग नया ट्राई कर रहे हैं. भाई. And they scatter away from him. But a 1v2. I mean पहले भी क्या था कि जब फिनिक्स का नर्फ नहीं हुआ था, प्लस जब इतने सारे अच्छे डुएलिस्ट और नया मेटा बना नहीं था, तब तक बहुत क्या कहते हैं, तब क्या थे, इनिशिएटर्स नहीं थे इनफ, तो फिर लोग डुएलिस्ट से ही यूटिलिटी निकालते थे, तो फिर तो तब बहुत यूज करते थे फिनिक्स इस पे क्या कहते हैं हेवन पे. मतलब हेवन पे तो होता ही था फिनिक्स मोस्ट प्रॉब्ली पिक. तो मैं समझ सकता हूँ ऑप्टिक अगर फिनिक्स को वापस ला रही है तो हेवन पे ही ला रही है. मेक सेंस. Just missing on the lockdown. At least gives Optic a little more confidence. There's going to be no secondary angle being held from CT, and they can really pressure less. I mean, it's not often you say it, but Pancada's just a little bit cleaner with that. That can completely change the outcome because Marv is so disconnected. Yeah, you're right. 5-3 now. You need to see it strong together, though. See if Optic do have variety to this. Because once again, you're going to see a quick rotation though. Now, last time we saw them get punished through B connector when they went for that B hit off the back. These two players who are on that A site. But already, a lot of presence noted, but have they got a plan in mind? I want to see if they've read these rotations now. Well, look at this now. On the back of the success on A site and giving it up, they can stack 3 towards Garrison C. And actually with less on the operator. I mean, they also have a 2-man hold on B. I think they've read this. I think considering how quickly that Prowler became committed, they've got to have noted they pulled the players away this early. It's actually a lot of information being found just by seeing this utility already committed. They could, I guess they could go back towards A, but again, it's once again retake time. It's terrifying. The concern being is now you look at it and actually Rolling Thunder, Showstopper to come back through on the retake. And that makes it even more comfortable. Correct. Or at least on the side of Loud, even more confident for them in the retake. Oh, yeah. And they still, obviously, if you're Optic, you still have to clear up here. So it becomes really apparent that you've not felt pressure anywhere else on the map by this point. Now, you can't blame them. They have to be diligent. It'd be, you know, we'd be blaming them for not clearing their corners if they didn't. So in they go, similar scenes. And now we have to see if they can withhold. Can they withstand Loud in these retakes? Open plant, so I think Optic are going to give up sight here. This could कोई be भी नहीं मरा और साइट ले ली उन्होंने. वो immediately पीछे आ गए भाई. So far, there's that showstopper coming in. Both of the key components you were talking about. That's only one on the side, so it's only going to note 1, maybe 2 up towards heaven. Aspas एक kill ले गया लेकिन. Finds a recipient. That's going to be Crash. He's gone, and they're going to know this now. If you're Loud, you know they are sitting deep on this. I think Loud का निकल गया round. Oh, never mind, इसका मॉल लिया. Someone's going to stop this. Finally, they deny the defuse. The flash is great. Victor's still alive. मेरे को लगा इतना पैसिव खेल रहा है. I mean, half हो रखा है, but नहीं. Nicely played by Optic. They've dealt with Loud. And now actually swings. उन्होंने बहुत अच्छा वो किया counter. उन्हें पता था कि retake उनका कैसा आएगा. Come online, particularly actually if Victor can put his running back to use and clear out that A site, allowing a free plant, allowing that. भाई finesse कि अभी तक kill नहीं हुई है कोई बेचारा. Could become concerned. हाँ 0 पे बैठा है 0-9. Fair enough. Oh, not looking good for India भाई. पूजन में तो lacking भाई. How will we say भाई the first round? मैं यार looking like Indians lacking भाई. Committed in the end. क्या यार भाई अब लोग YouTube VCT जो लोग देख रहे होंगे वहाँ पे लोग कमेंट्स में लिख रहे होंगे भाई इंडिया का नाम बड़ा है फिनेस क्या कर रहा है NHK भाई NHK फिनेस not lose players obviously easier said than done as Pancada
He's posted on this. पैनकार्डा मरना चाहिए इस पॉइंट पे. Yeah, look at the flash and the Prowler combo. Great to take space. We actually really like the combination ult between करेगा I Fade think. and Phoenix here. Yep. But Les is posted with the operator. That's going to be a shot. Not landing that he would have wanted. Slowed down, but certainly not stopped. And now the pressure starts to mount. He's got one. kill ले ली उसने. Nice. Isolating the fight towards Pancada. अरे वाह. कोई इसकी बॉडी नहीं देख रहा था. Greets him with a smile and says goodbye. छोड़ के चलेगा But इसको. it is Aspas and Big Les brain. against 3. Look where that spike's going and look where Ye is. But फिर ये ऑप्टिक This is ने for वो ये ने काफी वो कर लिया. You can see on a deeper angle. Aggressive and Les angle. considered it, but was not ready for it. Spike planted. Able to create some pressure. 6-6 half हो गए बता रहा हूँ. They're rewarded for it here. Aspas still has the rifle. I mean, 1200 in the bank. Oh, he's going to make a concerted effort for this, but with Ye slipping deeper into spawn, he's got to dig him out first. That has to be the first scalp to claim, and already time slipping away from him. Well, teleport's ready. Ain't clean, ain't pretty, but you're going to take those. Your job done. Okay, OPTIC have the answer. Now, I guess this is when we look at the scoreline, and if we want to discuss kind of bigger picture. कम से कम ये मैप तो निकाल ले भाई ऑप्टिक. क्या चीज? ये मैप तो निकाल ऑप्टिक भाई. निकाल लेना चाहिए उन्हीं का पिक है. हाँ वही. शावर बैठा है. वैंडल है उस पे. Sorry, Phantom. This is, even though the scoreline is sitting all even, nice. trending a little towards Shar कौन सा है भाई इवेंट पे? the vast majority of the rounds मैं खेल रहा हूँ ना. Okay, okay. Let's see if that holds true. As once again we're seeing this kind of इतना मैच देख के मन कर खेलने का भाई. मैंने कहा मैं भी खेलता हूँ मैच. Understandable. This is noted. Temptation to follow that up. Marked. Ooh, gets himself the angle, but is Victor to find success towards middle as Sadak tried to explore a little. Also, it's the walk out. OPTIC now. महंगा दिखाना भी बंद कर दिया है FNS. करे कुछ कर तो रहा नहीं. Gaining an advantage on the back of भाई observer FNS पर कर ही नहीं रहा. अबे छोड़ यार उसकी किल नहीं आएगी फायदा नहीं. Space elsewhere behind this early presence shown. इसको जो वो दिखा दिया बोलते. एक किल आ गया भाई. Stacked up outside B. Smokes go up. Now let's warm on the other side. Not full coverage here though. Actually, the paranoia and the paint. बेचारा भाई FNS कह रहे कि प्लांट भी नहीं कर सकता. शादी से डेड हो जा रहा हूँ. Marv now with the back door. All the kills though. 3 of them. And now it's looking like ये an देखो भाई. absolute इसमें भी FNS सबसे पहले travesty. मारा. It's only A, 41 HP and 48 seconds. Oh, he pulled the trigger. I thought the discipline might have kicked in. Not the case. Loud. Stabilize. And they absolutely needed this. They would have been broke for round 12 if OPTIC had closed this out. 3 survive. Carry these weapons across. The operator maintained as well. Yeah, actually, Sadak and... I was going to say, Sassy, whether or not they can spread the funds effectively here. So with Sassy to play it out with a light shield. The important thing being the operator available here. Yeah. FNS on that lockdown. So last time used reactively in garage, whether or not they set up for a site hit here. Actually, the ping towards sewer may be implying. मुझे देगा भाई. कुछ करनी है मैं RGX है. सही है. Catches Marved ahead of getting into position. Thank you. So where they go now. Rocking a hard plays Pancada. Holds it down. Sadak gonna fill the void. Quick flash to buy some time, but the pressure's still mounting. Never mind. 6-6. Les is everywhere at once. Paranoia's coming through. Everything's starting to look good for Loud in this round. Probably leading into the half on this. Oh, FNS को kill मिल गई. Crashes, turns on a dime and does that. तो मैं देख रहा हूँ ऐसे ही मर रहा है यार. बेचारा. होता है. Still got a minute, yeah. He's got a long Phoenix भाई Phoenix life. He got close in that last match. He found some room for himself, but two of the opposing players are playing right next to each other. Imagine ये सही टाइमिंग पे गराज पुश करके दोनों को मार दे. बट ये नहीं करेगा. Does he see anything? No. वो छोड़ो. कल एक बंदा था ना जिसने 1 HP क्लच किया था कल वाले मैच में या पिछले के पिछले वाले में. इसी इसी मैच में था. pretty much 1 HP क्लच था वो बंदा आसपास ने जो किया था अभी. हाँ कल था ना जो उसने स्प्रे ट्रांसफर मारा था. नहीं वो कोई और होगा फिर. वो मैं तो भी इसी डायरेक्ट में से उस पे था वो. अच्छा हाँ था कोई था सही कह रहे तू. सही था. कैसे ही कह रहे हैं. गराज पुश करके वो डबल किल मारा था. वो किया था प्लांट कहीं और किया था. हाँ ए पे प्लांट किया था. याद नहीं मेरे को कौन था. कौन सी टीम का था इवन. बट हाँ कुछ ऐसा था. नहीं पता अब. हाँ एंटी भाई 7-5 हो गया तो.
But once again, the एक retake चांस था वहाँ पे कि strong. दोनों लाइनअप Loud हो जाएं, but नहीं. carving themselves a lead here, Mike. It's only 7-5, but it's given I them an know. advantage. Absolutely has, yeah. Twitch पे आगे So to चलते come हैं out क्या? of that with a 2-round हाँ, Twitch पे आगे advantage, चलते हैं. considering the disadvantage at the start they started with, brilliant stuff from OPTIC. It certainly is, but it's not over yet. This is only the first half. भाई मैंने अभी नियॉन अल्ट करके घुस के अंदर बी लॉन्ग पे बाइंड मैंने अपना अल्ट मार दिया कहीं कहीं गांड खुल गई हेडशॉट से ब्लाइंड किया पॉप फ्लैश उसको मारा हेडशॉट और रेस को नियॉन बोला था कि मां के चूत रखे हो. Well, I think Victor did a great job at actually recovering the half. Nice. Because it was looking dire there to start with. You know, Loud were really able to get a snowball going off the back of Aspas. He's क्या having खेल रहा a हूँ इंडियन fantastic पे? map. इंडियन पे खेल And रहा now हूँ. the questions become, you know, when we are looking forwards इंडियन about पे Victor खेल and रहा whether or not he's going to be able to keep this up because Crow पे this खेल रहा was हूँ. Victor's best half. फ्लैट आईडी बड़े फ्लैट आईडी वैसे पेल रहा है. Yeah, but for Aspas, it's been good for him as well. And I think for Loud, they've been defined by how they were हुआ playing. कैसे? in तू पहले this फ्लैट retake, so often completely even up कैसे the safe सकता है? set and trusting their ability to fight back in. This is one of those rounds. क्या मतलब भाई essentially the फ्लैट ही है bonus वो round that क्या they ये get. अचल नहीं पता चले गोल्ड था पहले प्लेट नहीं हुआ आज तक शायद. Double initiator comp and कैसे Aspas दिया feeling यार? enabled on that raise. But as the half कुछ आइडिया नहीं भाई बस हो गया. found their way back into अच्छा लगा एक्चुअली खेलता है तो और जो ज्यादा नहीं प्लेट. और वही तो जो मैच भी था जिसकी वजह जहाँ पे गोल्ड 3 से इमीडिएटली प्लेट हो गया था वहाँ पे तो मैं बॉटम फ्राई करता. On their attack side, that is where they've been collecting all the rounds to take away that map so far over the course of this tournament. And so I'm wondering now, as the sides are going to swap around, Nice, they're right. going to be playing on the defensive side. It sounds odd, Goated. like a double sentinel comp, but they have looked weaker on that side. And I think 7 rounds for Loud. Listen, they take the pistol round. I think they may have just carved out a spot in history. They may have one step away. You win this map, you close out Haven, and you're the first Brazilian team to ever take a trophy home. What an achievement it could be. Loud just 6 rounds away from वो that कितने हैं? trophy. Pansy and Hypod, नहीं, let's see if they can तीन ही close तो है ना this one शायद. out. 2 मतलब अगर तू चैंपियंस की बात कर रहा है तो 2. खरीद दो यार प्लीज. मास्टर्स चैंपियंस में मेजर होता है. थैंक यू भाई थैंक यू. टेक्निकली मास्टर भी होते ही हैं क्योंकि आई थिंक प्राइस सेम ही है मास्टर और मेजर का. वो मास्टर और उसके बाद चैंपियन. नहीं इंटरनेशनल का होगा ना. इंटरनेशनल भी मास्टर भी इंटरनेशनल है. इट्स जस्ट दैट चैंपियंस वो है कि उसके लिए कोई वो नहीं होता प्ले ऑफ. चैंपियंस इज एसेंशियली कि तुम मास्टर 1 करो फिर मास्टर 2 करो फिर जो टीम्स उसमें बेस्ट थी वो चैंपियंस में आएंगे. चैंपियंस लीग की तरह है बेसिकली. वो नहीं पता मेरे को. टॉप 3 टीम होती है. टॉप 5 लीग्स. तू कब बैठा भाई? वही सॉर्ट ऑफ सेम. हाँ एफएनएस भाई. नाइस शॉट भाई. आई थिंक निकाल लेगी. हाँ लाउड निकाल लेगी. ओ भाई लाउड. यार तू वो ट्रिगर्ड लग रही है कोई. क्या लग रहा है? ट्रिगर्ड लग रहा है मतलब देखा एक के मरा एक ने. हाँ हो सकता है. पता नहीं निकाल लेना चाहिए. 8-5 ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं बट पिस्टल इम्पोर्टेंट. ये 8-5 लाउड ही है ना. आई मीन इको करेंगे तो 9-5 हो जाएगा. इको ही है. On the board. Actually, 3 rifles to come through here. 2 bulldogs on the board. फुल भाई. OPTIC. नहीं इनका OPTIC. And the stun actually goes to the orb to try and punish this. Trying to feed Victor. Well, the ult orb and some utility invested here. Ooh. Wait, what? Finds one here on the trip. ओ इसने भी हागा. Damn. ओ इसको पता है इसके पीछे पड़े. भागा सीधा. वैसे सही किया भाग के. एक्चुअली उसने काफी स्मार्ट खेला भाग के. ऐसी बड़ा तगड़ा बेल करता है हमेशा. अरे फट्टू है ऐसी भाई. ओडिन भाई ओडिन लेके बैठ जाता है. ओडिन चलाता है. इसने अभी एसेंट पे चलाया था ओडिन. फिर ही पिटना शुरू हो गई थी वो क्या कहते हैं ऑप्टिक. ऑप्टिक भी तो चलाती है शायद. चलाते तो कोई भी टीम है वो तो क्या है. चलाती तो सारी टीम्स. आई मीन 100 थीव्स भी चलाती है. ओह नाइस शॉट. अलर्ट रे भाई ये तो ये भाई ड्रैगन वर्सेस एनिमी टीम. ये भाई ये एक्सपेक्ट करेंगे भाई यहाँ पे भी एडीएस कर रहा था. ना करता है एडीएस बट चलो एक किल तो निकाल दी.
And now with 18 seconds they turn and turn attention. ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई इको निकल रहा है क्या? इको निकाल लिया भाई. इको निकाल लिया. Still find this out, they hear the plant. Unless sitting pretty though, he's got the rifle, he's still got the light armor beside him. मार्व लो है और विक्टर दो बुलेट्स पर डाउन है. I mean इसको लिटरली 3 बुलेट्स मारनी है उनको. क्लच कर सकता है, हाँ निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है. बैक साइड भी खेल रहे हैं. नहीं इसने देख लिया. हो गया. स्टिक कर देगा, स्टिक कर रहा है. नहीं इसको स्टिक करना चाहिए था. स्टिक करना था. I mean, any other round. Bang, shot 40 chamber भाई. Shot बैठा है. क्या किया? ऐसा स्टिक क्यों नहीं किया? उसको ये था कि 1 HP है, पुश कर रहा है वो, तब तक आ जाएगा. मगर तू अबे यार, एक पहली बात उसे प्लांट की पोजीशन में से पता है और ऊपर से तू स्मोक में है तो क्यों छोड़ रहा है? उसको पता था ना स्पैम तो करेगा ही, और वो 1 HP है तो उसको लिटरली बस एक गोली लगनी है. Look at the repurchase back into. तो माइट एज वेल भाई कर ही लेता, पूरा ही हो जाता. वो तो है. अब भाई है ना हाइंडसाइट, नर्व्स बहुत ज्यादा होते हैं भाई ब्रोस में. लोग ऐसे ऐसी मिस्टेक आसानी से करते हैं. अब हम स्पेक्टेटर पॉइंट ऑफ व्यू से देख के कह रहे हैं कि शिट यार इसको कर देना चाहिए था. बट वही ना कि उस केस में तो भाई जो नर्व्स कहते हैं वही होता है. किससे बात कर रहा है? जो नर्व कहते हैं वही होता है. मतलब तुम उस मोमेंट में जो नर्व्स अच्छा नर्व्स, हाँ नर्व्स, उस मोमेंट में जो होता है वही मतलब वही. तगड़ा लाइनअप है भाई. And at least if he can confirm that this is a fake and nobody follows up on potentially the fault line or a prowler or anything. अब ये राउंड जीते हैं तब भी इनकी इकोनॉमी डाउन है भाई लाउड की, और ये बहुत लो है 60. ये भी पकड़ा गया. बट वो उनको सी साइड मिल गई. Adjusting right back across, mirroring the movement, but by now Loud have planted. That's great. Nice. Oh, क्या फ्लैश और क्या भाई टाइमिंग पे. Standing tall, pushes into the smoke. Zero respect, zero fear. He's waiting for them to appear on the other side. They have no idea about this. दो स्मोक हो रखे हैं यहाँ पे. ये लेस पागल. ओ भाई लेस पागल आदमी है. आई थिंक लाउड का जीजी होने वाला. क्या बोनस भी निकाल दिया. बोनस निकाल दिया भाई. बोनस भी नहीं मतलब फोर्स. उसी बंदे ने निकाला जो ही जिसने हीरो वैंडल ली थी. पिकली नियॉन पे. नाइस भाई. इतना स्पैम करने के बाद भाई हिल गया. अब तो जीजी हो गया ऑप्टिक का. आई थिंक अब जीजी हो चुका है. लाउड भाई लाउड न्यू चैंपियन था ना. एस था यहाँ पर, वो एस था. ये लेस बहुत तगड़ा प्लेयर है भाई. बहुत भाई मांगेगा वैंडल वुमेन. एक टाइम आउट मिलता ना. 2 टाइम आउट ईच पर हाफ एक. पूरे गेम 2. अच्छा तो तुम एक हाफ में भी दोनों ले सकते हो. हाँ. फिर आई थिंक जब ओटी होता है ओटी के बाद एक एक्स्ट्रा मिलता है. पर फिर ये कि वो ओटी होते हैं कि तुम कभी भी मतलब ऐसे नहीं है कि ईच ओटी में एक टाइम आउट. वो होता है कि पूरे जितना भी ओटी चलेगा उसमें एक इनके कुछ रूल्स होते होंगे. एवरी 2 OTs एवरी 3 OT करके कुछ. मेरा सबसे तो ये आना चाहिए. इन्होंने बोला था निकालेंगे वैलो में इवेंचुअली टूर्नामेंट मोड कि बेसिकली 5 स्टैक वर्सेस 5 स्टैक. तुमने चूज कर लिया, आप 5 स्टैक के अगेंस्ट करोगे. तुमने अपनी टीम बना ली और फिर उस टीम की रैंक होगी कोई. और उस टूर्नामेंट मोड में आई थिंक ऐसे फीचर्स भी होंगे जैसे अगर बेस्ट ऑफ 3 खेलना है, बेस्ट ऑफ 5, टाइम आउट, और कितने वो क्या कहते हैं मैप पिक्स. मैंने ये बैन किया, मैंने ये पिक किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. होना तो चाहिए बट फिर वही है कि लोग इतना डिटरमिनेट खेलते नहीं है लोग. आई मीन खेलने वाले खेलते हैं क्योंकि फेस इट में भी होता था ये.
हेलो ये बट फिर फेस इट तो एक अलग ही हो गया ना। पर फिर वही तो प्लेयर्स हैं लगी इसमें, ना हो तो वही तो प्लेयर्स हैं, लेकिन इसी में प्लेयर्स तो वही हैं। और CSGO पे तो हायर लेवल पे तो लोग फेस इट ही खेलते थे। मैच मेकिंग कौन खेलता है CSGO का? 64 टिक कौन खेला है? और भाई कौन जीती? अभी भाई मुंबई इंडियंस जीतने वाली, मुंबई इंडियंस जीतने वाली भाई। भाई वेरी नाइस। लाड छक्के पे छक्का मार रहा है। भाई जैतर कहेगा एज लॉन्ग एज छक्के मार रहा है भाई, फक दिस ट्रांस ओवर्स। ये तो वेरी ट्रू है। निकल गया ये भी राउंड। आई थिंक सो। आई मीन वो फ्रेंजी घोस्ट चेंबर के उससे क्या करेंगे रीटेक? इस नीगल पे जाते हैं भाई स्ट्रीम। अब तो डेड हो गई मेरी स्ट्रीम। डेड हो गई मतलब कोई नहीं, कोई है ही नहीं वगैरह, मतलब चल तो रही है ना, स्ट्रीम कर रहा है ना स्ट्रीम बस। हाँ मैं वो मतलब था भाई मेरा, बीच में एक्टिव हुई थी भाई। 2-3 रैंडम्स का भी आ रखा है मैसेज, मतलब चैट। वाह कितनी चली गई थी वो? कॉन्करेंट कितने गए थे मैक्स? पता नहीं, 5-6 गए थे मैक्स एक पॉइंट पे। स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ, जब से स्टार्ट हुआ। बोला तो था वॉच पार्टी करूंगा मैं इसकी। किस पे? ट्विच पे ना, यूट्यूब पे ही कर रहा हूँ। अच्छा इसको पता नहीं है? मैंने बताया था, भूल गया होगा। ये तो लेट ही आया ना, जिसको पता नहीं होगा। But it's going to take a miracle here. 6-round deficit. सब्सक्राइबर भी बढ़ गए तेरे तो 2-3। हाँ बट वो आई थिंक वो उससे बढ़े हैं मेरी उस वाली वीडियो से। हो सकता है इससे भी बढ़े, बट वो उस वाली वीडियो से बढ़े हैं मोस्ट ऑफली। हाँ प्रोबेबली उससे होंगे वैसे। उसी से आ रहे हैं भाई सारे सब्सक्राइबर और सारे व्यूज। सही है भाई, एज लॉन्ग एज कहीं से भी आए भाई। बस 1 लाख पहुंच जाए सून। मौज कर दी। Bit of a gamble on the spam and hoping it finds something and he gets sent away. Not Saraka, like it, but you're absolutely right. Information. You have to be Mallu. ये कौन सा मैच है? तीसरा? चौथा मैप है ये। चौथा मैप है। चौथा मैप है। 3 से तो होता ही नहीं ना। बेस्ट ऑफ 5 होता। अच्छा वो प्लेऑफ्स में। एंड देन निगेस भी लाइक यार मैं CS देखता था। तो CS में इतना ऐसे थोड़ी होता था। क्या बात? हाँ नहीं होता था भाई, उसके ग्रैंड फाइनल्स में बेस्ट ऑफ 3 होता था। सही कह रहा है ये। कहाँ सिर्फ ब्लास्ट प्रीमियर ब्लास्ट? अरे मैं सार्कास्टिक हो रहा हूँ उसके साथ। अच्छा ठीक है भाई। बिग ब्रेन पीपल इन द लॉग भाई, वो डिस्कॉर्ड से। मेरा स्कोर, मेरा KD है 9-11 भाई। लेट्स गो। Silences Aspas. Pancada soon to follow. Finally traded out though. Sadak could have built in through garage. Yay with a great position, but Blind can't do much more. And it's still marked at the back of the side. The Iceman himself. अरे it's cool. And he's done well with one, but it's not. इमेजिन सासी क्लच कर दे भाई। अगर सासी ने क्लच कर दिया ना, मैं ऑप्टिक की जगह होता तो मैं वहीं पे बोल चुका होता कि भाई छोड़ दो भाई, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। बंदे से भाई खाओगे। एलो 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 एलो। ओ भाई वेल डन ऑप्टिक, वेल डन ऑप्टिक। The most defensive players भाई। Well done optic। हाँ यार हेवन तो निकाल ही लेगी ब्रो, ऑप्टिक का पिक है। मैंने बोला था। ये मैं ही कह रहा था एक्चुअली कि हेवन तो निकाल लेगी। नहीं मुझे भी लगा था निकाल लेगी, बट भाई चलो क्या ही कर सकते हैं भाई, जो है वो है। अब जो है आई मीन जीजी भाई, लाउड एक्चुअली बहुत तगड़ा खेल रही है भाई, बहुत तगड़ा खेल रही है लाउड। इस पॉइंट पे आई थिंक इनको पता चल चुका है। उनकी क्रैशेस भी ऐसा था, कहता चलो चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, ये बताना चाहिए आदमी को। कब ओ भाई like eat that। भाई उनके फेवर में कुछ काम ही नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा भाई। लिटरली वो फ्लैश होके भी मार गया लिटरली। और ये बफ्ड फीनिक्स है, इसका ज्यादा जल्दी पॉप होता है फ्लैश। क्या करें?
जी भाई, जी लाउड। लास्ट में प्ले और वो भी चैंपियंस जीती है भाई, फाइनली लाउड जीत गए भाई। जी तो भाई कन्फेटी कहाँ है भाई? और मेरे पोल पे लोगों ने वोट कर रखा था 38% ऑप्टिक, 10% लाउड और 52% मैं हूँ, 10% मैं हूँ। अब वाह भाई, ये इस बंदे ने स्पेशली डिफरेंट अकाउंट से आया कि भाई मैं लाउड को जिताऊंगा। रो रहे हैं भाई, आई मीन वेल डिजर्व्ड भाई, वेल डिजर्व्ड। फिनाले ही जीत गई, वाह भाई वाह। कह रहे फिनाले जीत गई? फिनाले भाई, फिनाले जीत गई भाई। भाई टूट गई, ग्रीन वॉल नीचे आ गई भाई आज। हाँ ग्रीन वॉल आज नीचे आ गई। और आज वैलोरेंट के ज्यादा व्यूअर्स हैं देन टैरेक के, और काफी व्यूअर्स हैं भाई, काफी व्यूअर्स हैं, 270 के ऑलमोस्ट। लीग लेवल है ये भाई, लीग लेवल, लीग के थे इतने। ना मेरे को अभी याद है, वो रिसेंटली ही अभी लीग का एक हुआ था, उसके 260 के व्यूअर्स थे। हो सकता है फाइनल ना हो सकता है फाइनल हो, पता नहीं। आज कुछ अनाउंसमेंट भी है क्या? अनाउंसमेंट नेक्स्ट ईयर में कैसा फॉर्मेट होगा? फॉर्मेट आई थिंक सेम ही होगा। फॉर्मेट का उन्होंने निकाला, उन्होंने बस ये निकाला कि अगला चैंपियंस पेरिस में होगा। नहीं एक वीडियो भी तो निकाली है इन्होंने ऐसे। हो सकता है। हाँ बाय द वे, जब ये टूर्नामेंट मोड निकालेंगे जो इन्होंने बोल रखा है, टूर्नामेंट मोड से वो क्या करेंगे, एक टीम हर रीजन से, आई डोंट नो हर रीजन से, बट एक टीम जो टूर्नामेंट मोड में हाईएस्ट, मतलब जो भी जीतेगी, व्हाटएवर उनका जो भी सिस्टम होगा, दे विल गेट टू कम्पीट इन VCT। तो एक्चुअल तुम घर बैठे बैठे VCT के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। रीजनल VCT ना, मतलब हाँ आई थिंक, वही मेरे को क्लियर नहीं, बट मोस्ट प्रॉब्ली हाँ रीजनल VCT। ऐसे सीधा तो भेजेंगे नहीं, तो हाँ रीजनल, बेसिकली VCT चैलेंजर्स। आसपास भाई The skinniest girl cosplaying Sage भाई। भाई you didn't see भाई, तूने खाली ऊपर से देखा है। ऊपर से ही सब पता चल गया ब्रो, ज़्यादा जरूरत ही नहीं थी। भाई एक बंदे ने लिख रखा है FNS एम लैब्स इज फ्री। भाई बेचारे की ले ली। FNS ही है जो सबसे ज्यादा टिल्ट कर रहा था वैसे भी, उसके लिए नहीं जा रहा था भाई। आज उसका दिन, आज क्या मतलब भाई, वो बहुत पिटा है FNS भाई, हर मैप में पिटा है FNS। अब तो ट्विटर पे होगी लड़ाई ब्राजील वाली। हाँ ये तो आदत है भाई, वो तो होता ही रहता है। मजा आता है उसमें, चाइल्डिश लगता है। An honor being part of that journey, part of that experience, because for some reason we always seem to come to and they've always been so good. And again, for you guys at home to get your thoughts down below. चलो भाई, GG's loud. Where would you call this one? Sadly ऑप्टिक नहीं जीती। चाचा ने बोल दिया था, चाचा कॉल्ड इट भाई, चाचा कॉल्ड इट। अब चाचा की गांड मारूंगा मैं, फाड़ूंगा नहीं, आज गांड मारूंगा अब मैं। चाचा की गांड मरेगी। एंड ने कहा था ना कि या तो फाड़ूंगा मारूंगा, इधर वे देख फटेगी इसकी। इसी बात पे भाई स्ट्रीम एंड करते हैं। 124 फिनिक्स।